you know I'm the plot, right? Fucking got a feeling that it's gonna be a long night. Whoa, everything I touch turn cold. Need no introduction cause they know Brit and Mo. I hit the lotto, my motto. Roll up gelato and throttle a couple models staccato who fucking brought up the bottles. I'm gone ham. This ain't even luck, all planned. Y'all know who the fucks I am. Burning bucks, smoke bands. Always been the MO since the start of this. And now I'm on a mission like I'm Artemis. Hey, we gon' turn the crib into a club like Hennessy and Buddha screaming thug life. Get it, baby, you know I'm the plug, right? Fucking got a feeling that it's gonna be a long night. Scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. Oh, you break your back to make me feel again. Suffocate to make me breathe again. Lose your mind from endless pain. Some things never change, never change. Oh, redemption never came. I stopped asking for forgiveness, cause you should know only fools tread with the angels. Fear to go, but you keep trying to get too close. Save myself by turning into stone. So save your judgment cause you just don't know. But some things never change, never change. Oh, they say I should feel guilty and change my ways, leaving crumpled bodies in my wake. Swear I didn't mean to make them break. Swear I didn't mean to make them break. But they're so delicate and so mundane, and they keep coming like a moth to a flame. Oh, some things never change, never change. You break your back to make me feel again. Suffocate to make me breathe again. Lose your mind from endless pain. Some things never change, never change. Oh, redemption.
more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. You and I break our hearts open enough just to see if we'll put them back. No matter what they try, I'll stay by your side. It's you and It's you and Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Find me in the corner of the room, not ready to resume. 'Cause like I'm taking, don't wanna be alone, but I'm not super strong. I'm looking for somebody. I'm looking for somebody.
when I feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. So alive, make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. I've been getting out of bed these past few days. Think it's fair to be proud about it. I've quit ordering from all those fast food chains. I'm feeling better, there's no doubt about it. And my days are brighter, my shoulders are so much lighter. Just for a moment there, I thought that there was nothing more to life. I thought about it, wrote a couple songs about it. Just for a moment there, I lost myself. Mind if I be real for a minute? It's almost like everything I feel had a limit. It now gone past. Finding reasons to smile and to laugh, and whenever it's a bad day, music is my band-aid.
I was colorblind, but mentally, yeah. Now my days are brighter, just no longer feeling tighter. Don't wear my PJs every day, cause I would rather be outside. I thought about it, wrote a couple songs about it. Just for a moment there, I lost myself. Music is my band. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through. Well, that was a sick intro, by the way. Well, ladies and gentlemen and gamers of all age, welcome back to the Asus ROG Showdown Valorant. And we are currently battling out for 75,000 rupees of prize pool with the last 4 teams remaining in the semi finale. By the way, I'm your caster for today, that is LKFTW. And with me joining on the desk is the very sweet Tanya. Hi, Tanya. Yep. Tanya, just check if you are muted right now. Yes, I think Tanya is having a little bit of technical issue over there with the mic, but don't worry, guys. Welcome you all, and we are back in the action. Well, it was a good series of a lot of games coming down in Asus ROG Showdown. Currently, we are in Valorant, and by the way, this live stream is simultaneously happening on Facebook as well. So if you are watching in Facebook, make sure you drop that follow button, and don't forget to, of course, subscribe to Asus ROG on their YouTube channel and follow us on our Instagram, that is Asus ROG, and on Facebook as well. And Tanya, seems like you're back. Yeah, I am absolutely back.
एंड बड़े-बड़े टूर्नामेंट में ऐसी छोटी-छोटी ग्लिचेस होती रहती है एज़ सेड बाय द मेजर शाहरुख खान, बट एनीवे लेट अस कीप हिम असाइड एंड ऑल द बेस्ट टू द टीम्स पार्टिसिपेटिंग। एंड ये आज के दिन का क्वालिफायर्स, इट इज़ सेमीफाइनल्स, क्वालिफाई होकर आए हैं। एक रिगरस परफॉर्मेंस आज तक का चला है। 4 टीम्स, देयर आर ओनली 4 टीम्स हु हैव रीच्ड द डेस्टिनेशन ऑफ टुडे। लेट्स होप कि आज एक अच्छा-सा शो देखने के लिए मिले, क्योंकि बेस्ट ऑफ 3 है एंड ऑफ कोर्स एक बेस्ट प्ले की भी एक्सपेक्टेशंस रहती है। प्राइस पूल 75,000 का है। द टीम दैट कम्स फर्स्ट इज गोइंग टू टेक अवे 50k INR एंड द टीम दैट इज गोइंग टू बी रनर अप टेक्स अवे 25k INR। प्राइस पूल भी अच्छे हैं, स्टेक्स भी हाई हैं, प्ले भी हाई होने वाला है। सो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस, तन्वी? सबसे हाई ज़्यादा क्या है? कॉम्पिटिशन की। हम पूरे क्वालिफायर्स को फिनिश करने के बाद अभी आखिरी 4 टीम पे आ चुके हैं, तो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहेगा एंड आज सेमीफिनाल है, 2 BO3 देखने को मिलेगा एंड ये जो 4 भी टीम है ना, दे आर गोना गिव देयर बेस्ट प्ले टुडे टू क्वालिफाई टू द फिनाले व्हिच विल बी हैपनिंग टुमारो। एंड आई थिंक ये प्राइस पूल के लिए I'm pretty sure the stakes are gonna be really high for all these 4 teams, especially मुझे स्केड्यूल की इंतजार है बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ यूनिक टीम्स, अ लॉट ऑफ न्यू टीम्स कमिंग इनटू द वैलोरेंट क्लेम एंड इनमें से काफी ज्यादा जान चुके टीम्स भी काफी ऑलरेडी है, लाइक नशाई स्पोर्ट्स। बट या, आई डोंट वांट टू रिवील ऑल द टीम नेम्स सो फास्ट. Let's go to the brackets and look at. We have Nasha Esports versus Weird Esports today as the first match of the day. And the second, we have TJ's Axe versus F5 Esports. Well, looks interesting. फर्स्ट ब्रैकेट में जो भी है वो क्वालिफाई होगा। जो जीतेगा बेस्ट ऑफ 3 वो जाएगा टू बी द फर्स्ट फाइनलिस्ट फॉर द चैंपियनशिप। और नेक्स्ट ब्लैक ब्रैकेट में फिर से रिपीट होगा। जो भी टीम जीतेगी F5 स्पोर्ट्स और TG5 AXE से, वो आगे जाएगी। एंड दैट इज हाउ 2 ब्रैकेट्स ऑफ ग्रैंड फाइनल्स आर गोइंग टू फिल अप एंड द ग्रैंड फाइनल्स इज गोइंग टू बी टुमारो। लेकिन आज के लिए सबसे फर्स्ट मैच होने वाला है नशा स्पोर्ट्स वर्सेस वियर्ड स्पोर्ट्स। वेल, थोड़े नेम न्यू है, थोड़े नेम मे बी दिस इज एंटायर कंसेप्ट फॉर दिस टूर्नामेंट इज to get the new name, to get the new people who get the fame. And I think ये जो concept था काफी successfully आगे बढ़ते हुए भी नजर आ रहा है, because when we see new names, new players, that is what we were waiting for the introduction of new talent. And आज coming back to Nasha Esports and Weird Esports, who do you think has got a better chance, Tanvi? मतलब फिलहाल के लिए अगर कम्युनिटी के गेम प्ले के हिसाब से देख लो तो वियर्ड स्पोर्ट्स को काफ़ी अच्छा चांस है। मैंने बहुत बार उनको बहुत सारे टूर्नामेंट्स में खेलते देखा है एंड आई थिंक दे हैव अ गुड शॉट, बट दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट एज़ वेल। नशा स्पोर्ट्स आर क्वाइट एक्टिव इन द कम्युनिटी एज़ वेल. They've been participating in every chance they get, and I guess it's time for them to prove themselves. And जब बात आती है एक्स की और एफआई की, I feel like both of them are really new teams for me. Well, until we don't look down at the roster, I'm not sure if I can judge them. But yeah, I'm looking forward for today's first match. That is Nasha Esports versus Weird. And Nasha Esports ने I think उनकी नाम में थोड़ा चेंज किया है, नशा ऑफ esports. मतलब देख रहे हो, कॉन्फिडेंस देख रहे हो बंदों की. दे आर गोइंग क्रेजी फॉर ई स्पोर्ट्स एंड देखेंगे उनका पागलपन कहाँ तक उन्हें लेकर जाता है। आज क्या क्वालिफाई होकर ग्रैंड फाइनल्स पर जाएंगे, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी टेम्पटिंग। प्राइस पूल है, नेम है, फेम है। हु वुडंट वांट टू गो विथ 200% के अब आज तक यहाँ तक क्वालिफाई होकर आ गए, आज आखिरी मौका है। एंड आई डोंट थिंक कोई भी टीम जो चारों के चारों क्वालिफायर्स में से है वो भी चाहेगी कि दे गेट बैक, गो बैक फुट। अनफॉर्चुनेटली कोई एक ही टीम आगे जाएगी, कोई एक ही टीम टाइटल जीतेगी, लेकिन मौका चारों टीम के पास है। सो लेट्स सी वो टीम कौन सी होगी। बट फॉर नाउ कमिंग बैक टू वियर्ड स्पोर्ट्स एंड नशा स्पोर्ट्स, लोगो भी क्वाइट प्लेजेंट है, पर्पलिश एंड मैचिंग विथ योर कलर कॉम्बो व्हाट यू आर वेयरिंग। तो थोड़ा सा मैचिंग मैचिंग सा भी नजर आ रहा है, देखकर भी अच्छा लग रहा है। तो प्ले पर भी फोकस रहेगा कि प्ले किस तरीके से अच्छा बनाया जाएगा, क्योंकि हमेशा मैं कहती हूँ मैप चाहे जो भी हो, टीम डिसाइड करना कब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एंड हियर वी Yes. गो अहेड, हमारे सामने रोस्टर आ गया है नशा ई स्पोर्ट्स का। हमारे साथ आज खेलेंगे Ooh. अमेया साया जिन, एम्बरवाल, F1 LS शिवी और होक्सस एंड वंडर। वेल, you can also read the captions above, which is their actual name. Yes, Nasha Esports. We provide quality gameplay. Wow, that's a sick introduction to their logo, by the way. But yeah, this roster gives me a lot of memories, by the way. And Shivi, I'm pretty sure he's going to be one of the strongest foundation and, right now, a pillar for Nasha Esports.
He's been playing all the way from CS:GO, and now he came down to Valorant, and he has joined the roster of Nasha of Esports, which is gonna give him a lot of opportunities. By the way, Wonder is also a very experienced player. So Amaya Sayan, Shivi, Wonder, they're pretty much going to make a very very thrifty combo right now. And Embrewell and Hawks, both of them play a great support role. And this lineup is going against Weird Esports lineup. Now I'm even more interested to have a look at Weird Esports lineup, because having Shivi and as Amaya and Wonder, these experienced players, they can do quite a lot of damage in the game. Absolutely, or जो aggressive players हैं, they are a little more damaging, and let's see, even if more damaging if they go ahead with the duelist for the team, and that is what you want. All you want to do is just get the entry and do get your work done in a snap. Very good team combination, as you've already mentioned कि दो जो deadly combo है वो है, and support भी अच्छा मिलता है. तो नशा esports के पास कहीं पे भी I don't think they are deficit in terms of roster for sure. So let's hope that they are able to put up what they are bringing into, and indeed they have put up a very good efforts by far. And let's hope they continue to do the same. And all the best to Nasha Esports for the day. Yes, all the best to Nasha Esports. Well, I'm quite looking forward for Weird Esports. Weird Esports had very frequent roster changes, by the way. I'm looking for this one very importantly, because after a really long time, they are putting their foot out into a community tournament. Well, who do we have? We have Bad Love, we have MF God, Storm, Rio, and Sasmi. Trust me, Sasmi, Bad Love, and Rio. Once again, these three are, if Amay Sayin, Wonder, and Shivi are thrifty players, these three are the thirsty players. Because these three, they just go for entire kills. They are the mad headhunters, Tanya. So kill hungry teams are always having lots of kills, but let's see, are the kills going to give them the victory towards the cup or no, towards the winning championship or no? Because yes, kills do matter a lot. The team to get the first pick is always on the advantage in terms of getting the early rotation or blocking the rotation. So अगर ये advantage create कर लेती है weird esports, so they can get the advantage of dominating the entire tournament, dominating the entire match. But having said that, Nasha esports को भी हम underestimate नहीं कर सकते. It is fight of the equals, and जब equals fight करते हैं तब intensity goes to the level which we cannot imagine, and it goes beyond imagination. तो देखेंगे कि आज ये trio क्या कमाल करेगा. How are they going to go ahead with the battles? How are they going to go ahead picking up the first kills for the team and getting the advantage of men to men? If they are able to get that, I'm very sure of the skill hungry team, because always, Tanvi, I would always give the preference if you are on the defender side. Kill picks is the priority, and if they are able to get that, they can achieve what they are here for. Yes, and speaking about both of the teams, so moving forward into the match, before we go down to the match, I really am looking forward for the map veto. And map veto की जब बात आती है, मुझे लगता है कि Weird Esports का strong maps are Bind and Haven. मैंने उनको खेलते हुए काफी बार देख चुकी हूँ, एंड मुझे लगता है कि सैसमी और रियो और बैड लव का काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हेवन, एंड आई प्रीटी श्योर वो उसको पिक करने जाएंगे. एंड हियर वी गो, द मैप बैन कम्स, एंड आइसबॉक्स को बैन कर चुके हैं, नशा ई स्पोर्ट्स स्प्लिट को बैन कर चुके हैं. एंड यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि नशा ई स्पोर्ट्स हेवन पे अटैकर्स में स्टार्ट होने वाली है. एंड वियर्ड ई स्पोर्ट्स हैव चोजन एसेंट इन फर्स्ट प्लेस, एंड द बैंड ब्रीज. They'll be also starting off with the attackers, and this is going to be the deciders map bind, where Nasha Esports will be beginning with defenders. Well, काफी काफी मुश्किल है ये जीतना नशा Esports के लिए, बिकॉज हम की पहली मैप, हमारा पहला मैप होने वाला है एसेंट, जिसमें वियर्ड स्पोर्ट्स अटैकर्स में स्टार्ट हो रहे हैं, जिसका मतलब होता है कि जितना मौका है उतने राउंड ले लेंगे वियर्ड स्पोर्ट्स अटैकर्स साइड में. एंड किल हंग्री टीम के पास हमेशा ज्यादा एडवांटेज होता है, अपर हैंड होता है जब आप अटैकर्स साइड पर हो. एंड वी कैन सी वियर्ड ई स्पोर्ट्स असेंट मैप में अटैकर्स रहेंगे. बट कमिंग बैक टू हेवन, हेवन एक डिफेंडर्स को ज्यादा हेल्प आउट करने वाला मैप होता है. एंड ऑन दैट वी कैन सी नशा ई स्पोर्ट्स इनिशिएटिंग, क्योंकि यहाँ पर रोटेशन लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है. अंटिल एंड अनलेस यू गो फॉर बी विच इज ओपन फ्रॉम ऑल थ्री डिफरेंट एंगल्स, तो रिस्क फिर से एक बार बढ़ जाएगा. सो हेवन एज अटैकर्स मुझे लग रहा है नशा के लिए थोड़ा सा
चैलेंजिंग हो सकता है, बट कमिंग बैक टू बाइंड, यहाँ पर रीटेक लेना डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है, इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। सो अकॉर्डिंग टू मी, इन टर्म्स ऑफ अटैकिंग साइड, बहुत अच्छा गेम प्ले पुट अप हो सकता है बाइंड में, लेकिन कमिंग बैक टू द मैप ऑफ हेवन, थोड़ी सी डिफिकल्टीज हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर चैलेंज है, आपको थोड़ा सा स्प्लिट भी खेलना पड़ेगा, बिकॉज इफ यू ऑल गो ऑल इन, you might be taken down. We very well know how are weird esports going to go ahead with the kill picks. यस, एंड वियर esports आई थिंक वो सब तैयार बैठे हुए हैं, अभी अटैकर्स है, ये तो और अच्छा मौका है किल्स लेने का। डिफेंडर्स में तो फिर भी हमको थोड़ा पैसिव खेलना पड़ेगा, एंड अटैकर्स में फुल ऑन बर्स्ट बीस्ट मोड में जाने वाले हैं। सो आई एम एक्साइटेड फॉर द फर्स्ट मैप। वी आर गोना जंप इनटू द मैप ऑफ असेंट, एंड इट्स वन ऑफ माय फेवरेट एंड वेरी बेसिक मैप्स ऑफ वैलोरेंट। आई थिंक जो भी पर्सन वैलोरेंट खेलना चाहता है या सीखना चाहता है, दे मस्ट हैव वेंट थ्रू द मैप ऑफ असेंट। I think it's 4:4, and it has mid, upper mid, lower mid, which pretty much takes down all the possibilities, like all the higher grounds and lower grounds as well. मेरे को बहुत अच्छा लगता है पर्सनली तो एसएन मैप में, एंड अकॉर्डिंग टू नॉर्मली जब मैंने इतना मैचेस कास्ट कर चुका हूँ, मुझे लगता है कि एसेंट इज अ डिफेंडर साइडेड मैप if you have a very good defense, and it can control like a, you don't even need a double duelist setup in defenders, to be honest. You can take down one controller, one initiator, and double sentinel can quite work like a charm. Like Sage and Killjoy, they make the best deadly duo combo in defender side for Ascent. वेल अभी तो काफी ज्यादा मेटा चेंज हो चुका है तानिया। लेट्स सी अगर ये मेटा वापस लाना चाहते हैं कि नहीं, तो कुछ और नया मेटा सेट करने वाले हैं। इसके लिए तो मैं काफी अच्छे से इंतजार कर रही हूँ फिलहाल। एब्सोल्युटली, नया मेटा आएगा तो नए सब्जेक्ट्स देखने के लिए मिलेंगे, बट फॉर राइट नाउ व्हाट यू मेंशन के सेंटिनल्स अच्छी तरीके से साइड्स पे कंट्रोल कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ डिफेंडर्स साइड, एंड यस, एसेंट हमेशा डिफेंडर्स को थोड़ा सा ज़्यादा हेल्पफुल रहता है अभी के लिए। वी कैन सी डिफेंडर्स साइड पर ड्यूअलिस्ट बन चुके हैं, F1LS शिवी और रेज बन रहे हैं, एंड यहाँ पर एस्ट्रा को पिक किया गया एज अ कंट्रोलर, एंड फॉर नाउ वी यस। कैन ऑल्सो सी किल जॉय एज अ सेंटिनल, एंड दो ड्यूअल, वैसे एक बात करते हैं, एक इनिशिएटर, दो ड्यूलिस्ट, एक कंट्रोलर और एक सेंटिनल, एक अच्छी टीम बन चुकी है फॉर द डिफेंडर्स साइड। दैट इज डेफिनेटली ट्रू, एंड काफी टाइम के बाद मुझे ओमन और एस्ट्रा दोनों एक को एक वन ऑन वन करते हुए दिख रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स एज एक्सपेक्टेड, जेट और रेस द बेस्ट डेडली कॉम्बो फॉर ड्यूलिस्ट एंड मैप ऑफ एसेंट हैव बीन पिक्ड, एंड इनिशिएटर सोवा एज वी एक्सपेक्टेड, एंड किलजॉय एज इसलिए दोनों टीम्स एक ही तरीके के लाइनअप ले चुके हैं, बट यहाँ पे कंट्रोलर और ड्यूअलिस्ट पे काफी चेंजेस किए हुए हैं। सैस्मी ने फिनिक्स उठाया और एमएफ कॉर्ड ने ओमन। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास 2 फ्लैश एजेंट्स है अटैकर्स के पास, एंड स्पीकिंग अबाउट डिफेंडर्स, उनके पास एक भी फ्लैश का एजेंट नहीं है, जो काफी ट्रबल हो सकता है। उनको डिफेंड करने में एक ना एक जगह एडवांटेज आ जाएगा, बिकॉज अटैकर्स के पास 2 ड्यूअलिस्ट एजेंट है तानिया, एंड दैट आई मीन एक ड्यूअलिस्ट का या फ्लैशर है और एक ओमन है, दैट कैन completely destroy and create a very good entry into the bomb site if you have flashes. एज अटैकर्स अगर आपके पास फ्लैश है तो येस, डेफिनेटली साइट एंट्री काफ़ी ज़्यादा इजी रहने वाली है, एंड ऑन द डिफेंडर साइड अगर स्मोक कैंप, नेब्यूला कैंप का अगर इरादा किया गया है तो एस्ट्रा कैन हेल्प टू ब्लॉक इट। करंटली दोनों ही साइड पे सोआ देखने के लिए मिल रहा है, दैट मीन्स इनिशिएटर्स सेम है, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर अर्ली इंटेल मिल जाता है, रीटेक की एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। फॉर नाउ ऑल दी अटैकर्स आर स्टैक्ड अप एट साइट बी, एंड साइट बी पर 2 ऑलरेडी प्लेयर्स वेट कर रहे हैं। वी कैन सी एक रेज हैं और उन्हीं के साथ हमें एस्ट्रा नजर आ रही है, तो फॉर नाउ एक अच्छा स्प्लिट देखने के लिए मिल रहा है, और बैकआउट किया गया है, एक पुश दिया गया है ओमन की ओर से, पैरानोया का इमीडिएट यूज, और यहाँ पर पेंट शेल से थोड़ी देर के लिए डिले करने की कोशिश, लेकिन आई डोंट थिंक ये कोशिश ज्यादा देर तक काम करेगी। साइड एंट्री आ चुकी है, और यहाँ पर होप पीछे से आकर थर्ड कॉन्सेक्यूटिव पिक ले लेते हैं। इज इट गोइंग टू बी एस इन वेरी फर्स्ट राउंड? नो, और फाइनली वी कैन सी के यहाँ पर वियर्ड रोक देंगे। Last player standing. Yes, that is definitely true, Thania. And Hawks ने क्या जबरदस्त 3 किल निकाला है वहाँ, which leaves unfortunately Wonder into a 1v2 situation. But वो recon गलत टाइम पे गलत जगह चले जा चुका है, जिसने किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया है। बट वियर्ड रियो का एचपी काफी कम है यहाँ पर, 22 HP, and the recon is gonna reveal the position of Wonder. Is gonna get some damage through the walls, but does he have the energy to peek out, go for a wide pick? I don't think so.
होक्स ने 3 किल निकाले बट चीजें काफी जल्दी बदल चुके हैं एंड देयर यू गो स्टॉर्म इज गोना पुट एन एंड टू वंडर अ 1v2 सिचुएशन गोइंग विद द फेवर ऑफ अटैकर्स ऑफ कोर्स वियर्ड ई-स्पोर्ट्स पहला राउंड उनके हाथ पे लेते हुए एंड एज मैंने बोला था तानिया कि जब फ्लैशेस अच्छे होते हैं अटैकर्स में तो एडवांटेज ज्यादा होता है जैसे कि हमने देखा पहला ओमन का फ्लैश आया था बी मेन में फिर बाद में फीनिक्स फर्स्ट लेन फ्लैश किए थे एंड देन पुश आया था एंड आपने एक चीज नोटिस किया तो किसी ने फर्स्ट लेन पुश नहीं किया था काफी धीरे धीरे से वो एंट्री का कंट्रोल ले रहे थे सेकंड लेन का कंट्रोल मिल गया था तब जाके वो लोग फर्स्ट लेन में घुसे थे आई रियली लव द वे हाउ दे आर प्रिडिक्टिंग आउट नशा स्पोर्ट्स राइट नाउ दे आर एबल टू प्री प्रेडिक्ट एंड एंटिसिपेट। अब इस बार एक प्लेयर ब्लॉक करने के लिए पीछे जा चुका है एंड देखेंगे स्टैक द प्ले थ्रू द मिड क्या है कि इजियर अफेयर रहने वाला है एंड सारे के सारे प्लेयर्स रियूनाइट हो चुके हैं मिड पर फोकस दिया जा रहा है आमना सामना होते हुए एंड वी कैन सी द जेट जो अभी थोड़ी देर पहले 3 पिक्स ले चुके थे क्या इस बार अर्ली नॉक होगा नहीं शेरिफ हाथों में होने वाली है फिर से एक बार अपनी टीम के लिए होक्स 2 किल्स निकाल चुके हैं और यहाँ पर मैन टू मैन डिसएडवांटेज में डालकर देखेंगे कि ये डिसएडवांटेज से क्या साइड पे एंट्री ब्लॉक होगी ऑलरेडी साइड में एंट्री हो चुकी है ऑन द वर्ज ऑफ प्लांटिंग डिलेड रहेंगे होक्स काफी लो हैं एचपी में और उन्हें रियो एलिमिनेट कर देंगे लुक्स लाइक गेम अभी इंटरेस्टिंग होता बैठेगा बिकॉज पहला राउंड तो चले गया है बीआरडी स्पोर्ट्स के हाथ में अभी दूसरा होने वाला है नशा स्पोर्ट्स क्लोज द बॉट इट डाउन टू 2v3 बट आई गेस दैट्स नॉट गोना हैपन एज अगेन वंडर आखिरी पर्सन बचे थे एंड वो फ्लेम्स के नीचे जाते हुए दूसरा राउंड वीआरडी स्पोर्ट्स के हाथ में एंड इंटरेस्टिंगली वी हैव द बोनस राउंड कमिंग अप फॉर वीआरडी स्पोर्ट्स व्हिच मींस नशा स्पोर्ट्स एक फुल बाय पे इन्वेस्ट कर सकती है अभी एंड अगर नशा स्पोर्ट्स ये राउंड हार जाती है ना तो उनका इकोनॉमी बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है तानिया एंड आई एम वेरी श्योर ऑफ फुल बाई के राउंड में लॉस बेयर करने की कैपेसिटी अभी नशा स्पोर्ट्स के हाथों में नहीं है लेट्स होप कि दे आर अगर फुल बाई का राउंड आप जीत जाते हो तो यू आर ऑल्सो गोइंग टू स्ट्रेंथन एक इस बार 2:3 की स्प्लिट नजर आ रही है एंड स्टिल देयर इज अ कंफ्यूजन बी साइड पर ज्यादा पुश रहेगा क्योंकि स्पाइक यहाँ पर है एंड यहाँ पर ग्रेविटी बेल का यूज किया गया है आई डोंट थिंक इट डिड गिव अ बेटर इफेक्ट और एनी साइड इफेक्ट और लेट्स सी नानो स्वॉर्म से डीले करने की कोशिश जरूर की गई है एंड अनफॉर्चुनेटली इसका कोई रिजल्ट नहीं है ग्रेजुअली मिड टू ए का पुश शुरू हो चुका है बट यहाँ पर होप्स फिर से एक बार मिड मार्केट में वेट कर रहे थे एक पिक ले रहे हैं आगे जा रहे हैं बट तन्वी आई विल से वन थिंग हर बार लेस इन नंबर्स होते हुए भी राउंड निकालने में वीआरडी स्पोर्ट्स कहीं पर भी कमी नहीं छोड़ रही हाँ कभी तो वैसे छोड़ेंगे नहीं बिकॉज वीआरडी स्पोर्ट्स अपने दम पे लगे हुए हैं और नशा स्पोर्ट्स अपने इकोनॉमी पे राइट नाउ एंड इतना आई मीन इतना अच्छा अपग्रेडेड वेपन्स के साथ ऑफ कोर्स राइफल्स के साथ चांस बढ़ती जाती है बैड लव ने यहाँ पे अपग्रेड किया है वैंडल पे अगर ये राउंड वीआरडी स्पोर्ट्स हार जाती है तो मे बी दे हैव टू गो फॉर एन इको बिकॉज बैड लव ऑलरेडी इको पे बैठ चुके हैं एंड दैट वाज द परफेक्ट नीड द परफेक्ट टाइमिंग शिवी गेटिंग अनदर किल फॉर नशा स्पोर्ट्स तो आई गेस अभी इनको प्लांट की जरूरत है तानिया राउंड से ज्यादा प्लांट की जरूरत है बिकॉज जो भी उनको 300 क्रेडिट्स आने वाला है वो उनको इकोनॉमी बिल्ड करने में काफी हेल्प करने वाली है और जब तक मुझे लगता है कि एक 3v5 सिचुएशन को टर्न करके अपने हाथ में लेना इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट एंड जस्ट लाइक दैट बैड लव स्नीक्ड आउट काफी आराम से एंट्री हो चुकी है होप 7 पे वेट कर रहे हैं डैमेज भी दिया गया है एंड राउंड खत्म हो जाता है वंडर के हाथों फर्स्ट राउंड गोज इनटू द हैंड्स ऑफ नशा स्पोर्ट्स एंड फुल बाय वाला राउंड फुल प्लस लेकर चला गया है सो नाउ द स्कोर इज नॉट इक्वल फॉर श्योर एक पॉइंट की लीड अभी भी वीआरडी स्पोर्ट्स के पास है देखेंगे इस बार वीआरडी स्पोर्ट्स की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी एग्जैक्टली बिकॉज ये स्प्लिट स्ट्रैटेजी में द प्लेयर्स आर गेटिंग पिक्ड अर्ली ऑन एंड फिर रश करना पुश करना यू गेट इनटू द डिसएडवांटेज एंड देन देयर इज नथिंग दैट यू कैन गो अहेड एंड प्लांट द स्पाइक एक सेटअप केजे का सेटअप फिर से एक बार ए साइड पर नजर आ रहा है एंड ही इज सक्सेसफुल इनफ स्टॉर्म अच्छी तरीके से हैंडल करना भी चाह रहे हैं तो उन्हें डिले दिया जा रहा है स्प्लिट फिर से 3:1 बी पर फोकस नहीं दिया जाएगा स्पाइक कैरी कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में और वहां पर ऑलरेडी 3 प्लेयर्स हैं फिनिक्स ब्लेज आ चुका है और यहाँ पर आउट जोन से स्पॉट आउट कर चुके हैं वंडर वेल वंडर्स काफी अच्छे कर रहे हैं मुझे तो 8वां वंडर दिखने लगा है पिछले राउंड में जब नशा ने काफी अच्छे से एक फ्लॉलेस विक्ट्री लिया है अभी देखते हैं कि वो कंटिन्यू करेंगे कि नहीं वीआरडी स्पोर्ट्स की किल जो ने काफी डैमेज ले लिया है स्टॉर्म इज बैरली सर्वाइविंग राइट नाउ एंड ही इज ऑन एन इको and there you go, he goes down as TV takes him down and we have only 2 players left from VALORANT Esports at 2v5 situation and that was a very crispy shot coming in from Sasmi.
Sexy as hell gets another one. Wow. क्या ये क्लच कर सकते हैं ये 1v4 सिचुएशन? आई मीन 2 किल्स तो ऑलरेडी ये ले चुके हैं, अभी 1v2 है एंड उनको ऑलरेडी पोजीशन पता है, शिविका ठहरे हुए हैं एंड ग्रेनेड आते हुए ये आगे जाने वाले, कुछ डरना ही नहीं है। सैस्मी एक और पर्सन को लेके जाते हुए ऑलमोस्ट क्लोज टू बी क्लचिंग दैट राउंड। Amaya Sayan versus Sasmi. If Sasmi gets this round, now this is going to be a huge turnover for Killjoy and Nasha Esports. Sasmi looking to your right. He does, but Amaya is going to take him down. That means it's the second round for Nasha of Esports and Weird Esports. That was such a close one, Tanya. Such a close one. Very close one. Almost felt like that, yes, this is the time. Clutch is coming very close, but unfortunately run it back का use कर लिया गया, flash का use कर लिया गया, but अमेया रुकने वालों में से नहीं थे. Was very sure of he's going to get ahead and get that required pick for the team. And ultimately, even if we compare, अब economy और अच्छी strong हो चुकी है, but sure we are not going to see snipers so early on. यहाँ पर एक rotation दिया जा रहा है, full force एक ही और सारे players stack up होकर entry लेने की कोशिश कर रहे हैं. Recon डाला गया है, यहाँ पर spot भी हो चुके हैं प्लेयर्स. रेकॉन ऑन द अदर एंड भी क्या किया गया है, डिले है एंट्री के अंदर एंड लेट्स सी क्या वो ईजियर रहेगा. अच्छी तरीके से नेबुला का यूज किया गया जिसके अंदर अपने आप को होल्ड करते हुए नजर आए थे. स्मोक्स का यूज किया जा रहा है एंड जो फ्लैशर की कमी थी जो हमने डिस्कस किया था शुरू में, वो अभी फिर से फील होते हुए नजर आ रहा है. शिवी अभी बूम बॉट भी डालेंगे, बट बिफोर दैट रोटेशन लेती हुई वियर्ड स्पोर्ट्स ऑलरेडी प्रेप अप हो चुकी है. रियो ऑलरेडी एंट्री भी ले लेंगे, लेकिन लिटिल डज ही नो कि अभी भी यहाँ पर 2 प्लेयर्स वियर्ड स्पोर्ट्स के वेट एंड वॉच करते हुए नजर आएंगे. बट आई थिंक ये सब चीजें फर्क नहीं पड़ती होक्स को. ये देखो इन्होंने काफी ज्यादा आगे तक पुश कर चुके हैं, उनके हाथ में ऑफ है एंड पहले इंसान आते ही he's gonna take that shot, he's gonna dash back immediately. उनका ड्यूलिस्ट बैड लव डाउन हो चुके हैं. अभी फिलहाल के लिए तो किलजॉय को लॉकडाउन लगा हुआ है एंड शॉक डॉट कमिंग डाउन एट द राइट टाइम. सासमी टेकिंग डाउन अ लॉट ऑफ डैमेज. फिर से होक्स काफी बहुत ही नजदीक शॉट लेने वाले थे, एक और ले चुके हैं. एंड अमेया he doesn't need a gun to kill enemies, all he just needs a nano swarm grenade. But on the other hand Sasmi ने भी एक kill निकाल चुके हैं. Immediately things turn over हुए. They brought it down to a 1v3 situation and that is none other than MF God in a 1v3. He flashes, he gets one, he's almost close to get another one. अभी फिलहाल के लिए तो मैंने आपको इम्पोर्टेंस बता ही दिया है कि कितना ज़रूरी होते हैं फ्लैशर्स अटैकर्स में. वेल इतना ज़्यादा उनको काम में नहीं आया बिकॉज MF गॉड का HP भी कम था और वो एक 1v2 सिचुएशन में थे. बाय द वे वेल प्लेड बाय शिवी, काफ़ी अच्छा तरीका से उन्होंने पैनिक किया MF गॉड को वहाँ. एंड नशा स्पोर्ट्स ने काफ़ी क्विकली फॉल बैक भी कर लिया है. आपको क्या लगता है तानिया, 3 राउंड्स बैक टू बैक फुल बाय राउंड्स, वो भी वियर्ड स्पोर्ट्स के सामने? काफ़ी अच्छी तरीके से ये स्प्लिट खेल रहे हैं एंड पिक निकालते हुए जा रहे हैं. पर्टिकुलरली अगर हम होक्स की बात करते हैं, इन एवरी सिंगल राउंड काफ़ी अच्छा आउटशाइन अपनी टीम के लिए कर रहे हैं. शिवी का एक अर्ली यूजेज ऑफ शो स्टॉपर नज़र आया, बट मे बी वो किसी भी कोई भी सिचुएशन में राउंड नहीं जाने देना चाहते थे. दैट इज़ वाई दे वेंट अहेड, क्योंकि नंबर्स में भी ज़्यादा थे. शो स्टॉपर अगर सेव भी कर लेते तो चलता, बट ही इज़ ऑलरेडी, और यहाँ पर रिकॉन का यूजेज आ रहा है, लेकिन होक्स क्रॉस एयर रख के रेडी बैठे हुए हैं. क्या इस बार यहाँ पर कोई पिक मिलेगा? मिड यूज करने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर एक शॉट गया, बट अनफॉर्चुनेटली कनेक्ट नहीं हो रहा है. वियर्ड यहाँ पर एक स्प्लिट स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ेंगे. देखेंगे बैड लव यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं, बिकॉज थोड़ा सा रिस्कियर मूव है जब आप इतना ओपन एरिया में खेलने लग जाते हो एंड देयर इज नोबडी टेकिंग केयर ऑफ मिड. वो एक समथिंग स्ट्रेंज हो रहा है. यस तो सबसे स्ट्रेंज थी चीज़ तो मुझे ये लग रहा है कि सासमी को स्मोक के थ्रू शॉट्स पड़ रहे हैं एंड वो बस 11 HP पे बचे हुए हैं बैरली. एंड आई हैव अ वेरी गुड फीलिंग कि पहला पिक नशा ऑफ स्पोर्ट्स को जाने वाला है. एंड हुक्स का एम देखो, काफ़ी पीछे बैक सीटी पे वो ऑप लगा के बैठे हुए, तो कोई मार्केट क्रॉस नहीं कर सकता है जब तक होक्स वहाँ बैठा है. बट आई गेस बैड लव यहाँ पे शेरिफ के साथ कॉन्फिडेंस पे मार्केट क्रॉस कर चुके हैं एंड वंडर फर्स्ट लाइन में बैठे हैं. उन्होंने बैड लव को देख लिया है, बैड लव के ऊपर काफ़ी सारे शॉट्स फायर कर रहे हैं. ऑन द अदर हैंड बैड लव एक किल ले चुके हैं. वंडर इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट टू स्टॉप इट. 100 HP, 6 bullets only left and there comes Rio with the sheriff. कसम से रीवर शेरिफ और कमाल दोनों एक ही चीज होता है मेरे लिए तो. एंड MF गॉड एक और किल लेते हुए शेरिफ के साथ एक इको राउंड वियर्ड स्पोर्ट्स के हाथ में जा रही है, विच इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग ट्रबल फॉर नशा स्पोर्ट्स इफ दे लूज दिस वन. इकोनॉमी का काफी ट्रबल होने वाला है. जस्ट फ्यू मोर शॉट्स एंड आई गेस शिवी कैन कनेक्ट दैट शॉट ऑन टुवर्ड्स MF गॉड एंड देयर यू गो. व्हाट
एक और शरीफ का what is happening Tanya right now? पूरे pistols are outplaying the rifles. वन शॉट इज इनफ, वन टैप काफी अच्छी तरीके से प्ले करके दिखा रहे हैं यहाँ पर 1v2 सिचुएशन होते हुए, एंड आई थिंक ये राउंड जाएगा फॉर श्योर इन द हैंड्स ऑफ esports आफ्टर लूजिंग 3 consecutive राउंड्स. दिस इज द टाइम एंड विनर डजंट वांट टू पिक एनी बैटल. सेव करने की कोशिश की जा रही है, बट क्या यहाँ पर एमएफ बॉट सेव करने का मौका देंगे? एक शॉट दिया गया एंड ही स्विच, द वंडर ने स्विच कर लिया विद द ऑफ, एंड वी लेट्स सी एक thrifty विन था, एक सेव राउंड को जीता गया है, एंड वी वर एक्सपेक्टिंग सम thrifty victories today. स्कोर को इक्वल कर दिया गया है 3 and 3. अब वेपनरीज की दोनों ही साइड पर कमी नजर नहीं आने वाली है, एंड इफ यू लुक एट द स्प्लिट 1:4 का स्प्लिट नजर आ रहा है. वन प्लेयर इमीडिएटली हेडिंग टुवर्ड्स द मिड, रेस्ट फॉर यहाँ पर वेट कर रहे हैं, एंड एग्जैक्टली अर्ली ड्यूअल देखने के लिए मिलेगा बिकॉज यहाँ पर मिड टू ए का फोकस काफी ज्यादा दिया जा रहा है. बट होप्स फिर से एक बार स्नाइपर के साथ रेडी नजर आएंगे, वेयर ही इज एवरी टाइम सक्सेसफुल गेटिंग द फर्स्ट पिक फॉर हिज टीम. लेट्स सी इफ दे आर गोइंग अहेड. स्टार्स का प्लेसमेंट भी नजर आ रहा है. लेट स्टॉर्म एक्टिवेट हो चुका है ऑन द अटैकर साइड. देखेंगे कितने पिक्स यहां से निकालने में सक्षम रहेंगे. आमना सामना जेट वर्सेस जेट एनी टाइम शुरू होगा. स्नाइपर वर्सेस लेट स्टॉर्म, और यहां पर स्मोक के थ्रू अटैक किया गया. डॉज कर होप्स अपने आप को थोड़ा सा बैक फुट ले जाते हुए नजर आए. वो तो काफ़ी अच्छा एक्यूरेट स्प्रे था स्मोक के वहाँ. मुझे तो लगा कि बहुत ही ज़्यादा डैमेज ले चुके थे होक्स ने, एंड अभी भी एग्रेसिव ऑपिंग कर रहे तानिया, जो अच्छी नहीं है उनकी टीम के लिए. एंड जब बात आती है नशा ऑफ esports की, उन्होंने फोर्स बाय कर चुकी है. उनके पास स्पेक्टर्स है, एक ऑपरेटर है, राइफल्स है, और हाँ ऑफकोर्स सेकेंडरी पिस्टल्स पे बैठे हुए. तो ये राउंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अगर ये राउंड नशा esports हार जाती है तो उनका इकोनॉमी बड़ा ट्रबल में होने वाला है. फिर से एक बार बैड लव आगे जाते हुए नजर आएंगे. रिकॉन का यूजेज अभी के लिए कुछ भी रिवील नहीं हो रहा है. साथी मिड मार्केट का गेट क्रैश करके एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर फ्रॉम द शैडोज का भी यूज किया गया है. देखेंगे कि क्या अटेम्प्ट रहेगा, कितनी पिक्स निकाल सकते हैं, एंड दे आर गोइंग इंटायरली वेरी लॉन्ग, और ए के अंदर एंट्री अभी तक एक भी राउंड में नहीं ली है. दिस इज गोइंग टू द फर्स्ट राउंड के यहाँ पर एंट्री मिल जाएगी. केजे के नैनो स्वॉर्म्स कुछ काम नहीं आए टू ब्लॉक, क्योंकि बैड लव बिल्कुल अलग एंगल से आए. स्पाइक प्लांट हो चुका है, और यहाँ पर आमना सामना बिल्कुल जल्दी होगा. टीम क्लस्टर्स में रियूनाइट होते हुए नशा esports की नजर आ रही हैं, और होक्स अपनी ऑफ के साथ फिर से एक बार रेडी हो गए. बट अनफॉर्चुनेटली वो एंगल में कोई भी उन्हें मिलने नहीं वाला. विनर इज अगेन ट्राइंग टू ब्रेक द गेट, एंड लेट्स सी क्या एंट्री मिलेगी. एंड आई थिंक डोमिनेट कर रही नंबर्स में आप बात कर लें, एंड नथिंग इज लेफ्ट एनी मोर टू प्ले फॉर द लास्ट मैन स्टैंडिंग. यस, आई मीन शिवी के पास ज़रूर पोटेंशियल तो है, बट आई गेस स्टॉर्म थोड़ा आगे पुश कर चुके हैं शिवी को टेक डाउन करते हुए. दैट इज 4th राउंड ऑन बोर्ड फॉर वियर्ड esports, which means Nasha esports has to go for an eco right now. They did pick up the first 3 rounds very quickly, but I guess they are losing again against weird esports, and the match is going really neck to neck. By the way, I'm liking this. I mean, अभी भी पहला हाफ है और इतना कंपटीशन चल रहा है दोनों टीम्स के ऊपर. Especially, I think that weird esports has the advantage side. Ascent is a defender siren map, and having an advantage and the score in your hands, that's a big thing. 4 rounds is like the minimum rounds you need to make a comeback in the defender side. तो अभी अटैकर्स में उनको जितना मिनिमम चाहता है उतना तो उन्हें ले ही लिया, एंड बैड लव ने यहाँ पे एंट्री भी ले चुके हैं विनर के अगेंस्ट. आई मीन इको राउंड है तो ज़्यादा कुछ स्टैट्स नहीं खेलने वाले हैं तानिया. मेरे ख्याल से वो लोग पुश पे ही खेलेंगे, नहीं तो सब लोग साथ में खेलेंगे. वही लग रहा है, पुश पर खेला जाएगा. रिकॉर्ड डाला गया है, और यहाँ पर शिवी को स्पॉट आउट भी किया गया है. शिवी अभी के लिए डॉज आउट कर चुके हैं, एंड फिर से एक बार अर्ली यूजेज ऑफ स्वॉर्म ग्रेनेड नजर आ रहा है. शिवी का क्या स्ट्रैटेजीज रहेगा हम जरूर देखेंगे, एंड एक भी हीलर नहीं है. सो वंस द डैमेज डिलीवर्ड इज फॉरएवर एक्सेप्ट फॉर 1 प्लेयर. देखेंगे आगे किस तरीके से रहेगा, एंड यहाँ पर टरेट को ब्रेक किया गया. साइड स्टॉर्म की, और पिक भी निकाला गया है. गेट क्लोज करने में जरा भी डीले नहीं की गई. वंडर यहाँ पर फ्रेंजी के साथ वेट कर रहे हैं एंट्री, और बैड लव फिर से एक बार एक अच्छा स्नाइपर शॉट पिक कर रहे हैं, और अपनी टीम को एक नंबर्स एडवांटेज दिलवा रहे हैं. 4 वर्सेस 2 हो चुका है. स्टॉर्म प्लांट कर चुके हैं. ब्लेज थोड़ी देर के लिए ब्लॉक करने में जरूर मदद करेगा. सैस्मी रेस्टलेस हैं, हेवन पे जा चुके हैं. देखेंगे वहां से कितनी इजी पिक्स रहेगी. बट बैड लव ऑन एन अनएक्सपेक्टेड स्पॉट वेट कर रहे थे कि यहाँ से कोई ना कोई प्लेयर स्नीक आउट करे.
करेगा तब डेफिनेटली इज गोइंग टू गो फॉर द थर्ड पिक फ्रॉम द स्नाइपर. Ooh, that was a nice exit kill coming in from Shivi. By the way, but I guess at the wrong time where MF God already बैठ के देख रहे थे कि यहाँ क्या चल रहा है. It was a very small victory for Nasha Esports, which was quickly taken by MF God, by the way. उन्होंने आखिरी 2 kill ले चुके हैं and Nasha Esports couldn't save any guns or rifles. So I guess it's their full buy round right now as they've gone for a hard eco in the previous one. Weird Esports on the 5th round right now. They are on the lead, Tanya. If they keep doing this, then they might end up winning the first map as well. And the attacking side, it is way too unexpected for them to go for so many rounds. Yeah, let's be honest here. On attacking side, if you're already able to create the lead, defending is going to be a little easier. You have to play lesser rounds in that state. For now, winner is already waiting, and यहाँ पर drone को destroy कर दिया गया. Paint shell का usage शिवी की ओर से boom body भी छोड़ दिया गया है, so that यहाँ पर एक entry site entry में delay create किया जा सके. And he is successful. लेकिन on the other hand, Hawks is playing his entire different game. यहाँ पर spike को down कर दिया गया है, और यहाँ पर दूसरा pick निकालने की कोशिश में खुद down हो गए. लेकिन वंडर का एक अच्छा खासा team support जहाँ पर MF कोड को ड्रॉप आउट कर दिया गया है, और फिर से एक बार मेंबर्स एडवांटेज में होते हुए नशा ई-स्पोर्ट्स हार्ड बाय फुल बाय के अंदर अभी तक एक भी राउंड मिस नहीं किया गया है. एंड शिवी यहाँ पर एक किल लेने की कोशिश कर रहे थे, बट अल्टीमेटली रेसिप्रोकेट करने की कोशिश करते हुए स्टॉर्म एलिमिनेट हो जाएंगे. नाउ इट इज ऑल अप टू 1v4. वंडर ऑलरेडी उन्हें रिवील कर चुके हैं, एंड आई डोंट थिंक यहाँ पर सर्वाइवल करना इतना इजी रहेगा, एंड बिल्कुल भी इजी नहीं रहा. It is going to be Amaya who is going to knock the final nail in the coffin, with the score being 4-5. Still 1 point of lead for Weird Esports. That was a very good answer from Nasha Esports for Weird Esports. I mean, they did lose on a lot of rounds, so they are falling back step after the other. Both of them are giving out a chance to each other in this competition, and one thing I'm really liking about Weird Esports is that they're not giving up so easily. They're falling back. They're going in for an eco. They're looking after their economy. Both of the teams are playing it like very clean. They're not trying to do something out of the box, but they're doing it in the box, within the limits, very well. The score is 4-5, and this round is going to decide if it's going to be equalized or if Weird is still going to have the lead. As the Killjoy's lockdown comes through, and Wonder is going to take down the Killjoy's lockdown. There's going to be enough space for them to be working with. MF God already made his way over towards the bomb site. The bomb has to get planted anytime soon right now. And as the bomb gets planted, Amir Sain is going to put down his lockdown at the right place, and now everybody has to walk out of this area. So Tanya, काफी अच्छा strategy play किया गया है, and look at Sasmi's position. He's in such a corner, and MF could almost come so close to be taking that lockdown down, but unfortunately the lockdown will be up and gone. It's getting to defuse, and there comes Sova. The flash comes down. Attack is, they've wiped out Nasha Esports with 6th round going into the favor of Weird Esports. एक अच्छा विक्ट्री हासिल किया, एंड अच्छा पुश के साथ किया, बिकॉज दे वर ऑल इन एट ए, एंड अच्छी एंट्री भी मिल गई. लॉकडाउन का यूजेज था, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वाज नथिंग दैट वाज स्टॉपिंग देम, और अच्छी तरीके से 1 by 1 पिक निकाल कर दे वर सक्सेसफुल इनफ. और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अल्ट देखने के लिए हमें मिली, लॉकडाउन देखने के लिए मिला. हंटर्स फ्यूरी अनफॉर्चुनेटली डैमेजिंग नहीं रहा, पिक निकालने में सक्सेसफुल नहीं रहा. हो सकता है थोड़ा सा डिले किया हो, बट दे हैड सफिशिएंट टाइम टू प्लान एज वेल. फिर से एक बार एक पिस्टल राउंड नजर आ रहा है फॉर नशा ई-स्पोर्ट्स, और विनर यहाँ पर एंट्री लेते हुए क्या यहाँ पर क्रॉसफायर इमीडिएट एंगल में मिल जाएगा. आमना सामना हो गया, डैमेज डिलीवर किया गया, एंड विनर यहाँ पर फर्स्ट पिक निकालेंगे. एमएफ गॉड को डाउन कर दिया गया है. होप मार्केट पे वेट कर रहे हैं, ऑन द वर्ज ऑफ टेकिंग डाउन बैड लव. फिर से एक अर्ली मोमेंट निकालते हुए डाउन कर देंगे. सेकंड कॉन्स्टिट्यूट नॉक फॉर बैड लव, और यहाँ पर वंडर की एंट्री शॉक डार्ट बैड लव को डाउन एंड एलिमिनेट कर देगा. विनर की एंट्री फिर से एक बार एक और किल. 2 versus 3 हो चुका है. स्पाइक प्लांट करना हल्का सा डिफिकल्टी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक स्प्लिट स्ट्रैटेजी यूज की गई है नैनो स्वॉर्म थोड़ा सा डिले के लिए, बट आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू बी सफिशिएंट इनफ. एंट्री हो चुकी है, इधर प्लांट हो सकता है स्पाइक जस्ट इन केस इफ दे गो वेरी वेल फोकस्ड एंड नॉट डिले. Yeah. Well, on the brighter side तो मुझे लगता है कि उनको कंपटीशन जो है वो अच्छा चल रहा है नेक टू नेक. और जब जैसे आपने बोला कि उनका प्लांट तो मिल चुका है, बट पोस्ट प्लांट खेलना काफ़ी इंपॉर्टेंट है तानिया. इट्स अ 2v3 सिचुएशन.
जब तक मैं HP देख रही हूँ सोवा की काफी लो है एंड विनर स्टॉर्म को ले चुके हैं. The last person is going to be Sova. Weird Rio gets 1, gets 2, and it's the last person. Astra versus the Sova. Can he get it? Unfortunately, he won't be able to. As winner is gonna stay as the winner and clutches the round for Nasha Esports. A 3v2 going in the favor of Nasha Esports this time. And Weird Esports, that was totally unexpected. Last मतलब round मैंने in सोचा the था कि half. वो थोड़ा पैसिव खेलने वाले हैं, जबकि उनका एम इन स्मोक हो चुका था. थोड़ा अगर वो पीछे खेल लेते तो गेम थोड़ा और आगे बढ़ सकता था. बट हियर वी आर इन द लास्ट राउंड ऑफ द फर्स्ट हाफ. फिलहाल के लिए टॉप ऑफ द स्कोर बोर्ड पे है होक्स विद 13 kills, 10 deaths and 1 assist. Speaking about attackers for esports, we have MF God with 10 kills and 7 deaths. Bad Luck बैठे हुए 6 kill के साथ नीचे. I mean duelist है तो काफी aggressive खेलना पड़ेगा अभी Bad Luck के लिए. ये जो आखिरी round है. But I think Tanya, don't you think Weird Esports is doing good for themselves in the attacker side with 6 rounds especially? They are absolutely doing wonders and this is what is basically needed. Rio फिर से एक बार आज इनिशिएटर साइट में एंट्री लेने के लिए ड्रोन डाला गया था but somewhere he could not get the exact required intel और यहाँ पर वंडर एंटिसिपेट कर रहे हैं कि वाइन में कोई एनिमी है. शॉक डार्ट डाला गया, डैमेज डिलीवर बिल्कुल भी नहीं हुआ और अब यहाँ से वंडर की ओर से एक आउल डाला गया एंड इफ इट गोज इन द राइट एंगल इंडीड अब एनिमी स्पॉटेड है. देखेंगे क्या यहाँ से वंडर पिक निकालने में सक्सेस रहेंगे क्योंकि स्टॉर्म ऑलरेडी वेट कर रहे हैं. बैड लक वंस अगेन विद द स्नाइपर इन द हैंड्स. आई थिंक he can do some wonders coming in. Astra के लिए भी यहाँ पर स्टार डाला गया था डीले करने के लिए. अनफॉर्चुनेटली जितना डीले चाहा था मिले नहीं. ब्लेड स्टॉर्म के साथ एक एंट्री हो चुकी है 1 versus 1 एंड के अच्छे स्प्रे के साथ लेकर चले गए वंडर. और एक रियो का अच्छा खासा हंटर भी देखने के लिए मिला है जहाँ पर वंडर को डाउन कर दिया गया है. स्टिल लीड Weird Esports के पास है बट एज अ टीम एंड आर्मी दे कैन स्टिल होल्ड एंड प्ले. 30 seconds शैडोज left. का यूज किया गया है. देखेंगे और वेट कर रहे थे. was expecting के बोट्स में ट्रांसफर होगा यहाँ पर. ओमन का फ्रॉम द शैडोज और यहाँ पर डाउन भी कर दिया गया है. 2 हो चुका है. Spike down. B. आई एम सो सॉरी बट मैं बस बैठ नहीं पा रही हूँ. जो परफॉर्मेंस में होक्स के हाथ में से देख रही हूँ इतना एग्रेसिव विद द ब्लेड स्टॉर्म्स, इतना भी डर नहीं है. उन्होंने ऑलरेडी 3 किल निकाल चुके हैं. नाउ ही इज ऑन टू द लास्ट वन बट उन्होंने गलत टाइम पे गलत वेपन निकाल दिया यार तानिया. आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो एक 1v4 के होने वाला था हुक्स के लिए बट लास्ट सेकंड में MF कॉर्ड ने काफी चीजें बदल दिए थे रियो ने. एंड Weird Esports has the lead in the first half at closing on attackers with 7 rounds and for defenders with 5 as we switch down right now. Tanya, क्या राउंड था वो. लास्ट राउंड बहुत ही क्रेजी था जहाँ पर हमने देखा अल्ट के यूज हो चुके थे. इमीडिएट प्ले नजर आया था ब्लेड स्टॉर्म के चलते. ही वाज एबल टू पिक सम एक्स्ट्रा किल्स दैट वाज बेसिकली रिक्वायर्ड. अगर हम किल्स कंपेयर करते हैं होक्स एज अ ड्यूलिस्ट एंट्री भी ब्लॉक भी कर रहे थे, पिक्स भी निकाल रहे थे लेकिन डिस्टेंस प्ले के साथ कर रहे थे बिकॉज वी सॉ होक्स प्लेइंग ओवर टाइम विद द ब्लेड स्टॉर्म एज वेल एज स्नाइपर्स अगेन एंड अगेन. लेकिन अगर हम ऑन दी अदर हैंड करते हैं प्लेयर्स हैंड इन हैंड खेल रहे थे, किल्स इक्वलाइज्ड हैं अनलाइक होक्स. एंड यहाँ पर हम शुरू हो चुके हैं. साइड स्विच हो चुकी है. होक्स चाहते हैं कि ए साइड में एंट्री मिले. विनर ऑलरेडी मिड पर नजर आएंगे. क्या यहाँ पर एक इजी एंट्री देखने के लिए मिलेगी. शिवी की ओर से यहाँ पर एक बूम बॉट डाला गया है और क्रैश भी हो गया है. होक्स यहाँ पर फर्स्ट पिक निकालने में सक्सेसफुल रहे हैं जिसका मतलब है ए साइड थोड़ी देर के लिए एम्प्टी हुआ था. पैरानोया का यूजेज. शिवी थोड़ी देर के लिए हेजी हुए थे बट इट डिड नॉट इम्पैक्ट एनी मच मोर. और साइड में एंट्री बहुत जल्दी मिल जाएगी, मिल चुकी है. इंडीड लेट्स वेट for the player to join in. जैसे ही हमें मिलेगा रियो की एंट्री spike is going to get planted. Indeed it is going to be Wonder who has already planted the spike. Less in numbers. क्या 2 प्लेयर्स रोक सकेंगे 4 प्लेयर्स को. Let's see. I mean, फिलहाल के लिए तो मुझे लगता है कि 2v4 पॉसिबल है जब तक एडवांटेज आपके हाथ में है. एंड अभी हमको एक प्लेयर जाते हुए दिखा है. सो इट्स अ 3v2 सिचुएशन विद बैरली एनी HP ऑन टुवर्ड्स रेस. प्रिंसिपल स्विच करते हुए Weird Rio एक किल ले चुके हैं बट शिवी विद द oh my god, Shivi with the classic is gonna end things in classic with a double kill in the end, which means Nasha Esports will finally be getting a round for them in the attacker side.
उनको बस एक और राउंड चाहिए VALORANT स्पोर्ट्स के साथ टाई अप करने के लिए तानिया, एंड मुझे लगता है कि वो हो जाएगा बिकॉज पिस्टल राउंड जीतने के बाद उनके पास अभी इकोनॉमी है, तो वो फोर्स बाय करने जा रहे स्पेक्टर पे। आपको क्या लगता है? फुल फोर्स बाय होगा राउंड ये। दिस इज गोइंग चीज देखने के लिए मिल रही है पर्टिकुलरली फ्रॉम नशा स्पोर्ट्स। फिर से स्टैक्ड अप प्ले है कंटिन्यूसली और ये स्टैक्ड अप प्ले इज पेइंग देम रिवॉर्ड्स। और यहाँ पर रियो रिकॉर्ड डालें उससे पहले हल्का सा बैक फुट जाया जा रहा है, टाइम दिया जा रहा है ताकि साइड एंट्री हो। बैड लव यहाँ पर रैंप पर केयर ले रहे हैं एंड ए साइड को बिल्कुल ब्लैंक आउट कर दिया गया है, रियलाइजिंग कि एक स्ट्रॉन्ग पुश हो रहा है बट दिस माइट बी द टाइम, एग्जैक्ट रिक्वायर्ड टाइम कि यहाँ पर बैड लव लॉन्गर रोटेशन ले ले। स्टॉर्म डिले जरूर करवा रहे हैं थैंक्स टू नेबुला। इमीडिएटली शॉट कनेक्शन नहीं हो पाया। रियो ओवर एक्सपोज करें, ये एक रिस्की अफेयर हो सकता है। डैमेज देकर इमीडिएट बैक फुट किया गया। शिवी यहाँ पर पेंट शेल का यूज कर रहे हैं, रियलाइजिंग नो HP नो हीलर्स, बैक फुट जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। एंड वंस अगेन एक रोटेशन नजर आ रही है VALORANT स्पोर्ट्स की ओर से। फिर से एक बार विनर को हम देख पा रहे हैं कि ए साइड पर आगे बढ़ेंगे। यस, वेल 5v5 सिचुएशन है बट यहाँ पे रेस के HP काफ़ी कम है नशा स्पोर्ट्स की, विच मीन्स उनको ना उनकी ही एडवांटेजेस राउंड में उनको काफ़ी यहाँ पे मुश्किलें ताड़ने पड़ रहे हैं। एंड इट हैज़ बीन बॉट डाउन टू 2v2 सिचुएशन। व्हाट एन अनफॉर्चुनेट बिगिनिंग एंड शिवी इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट टू गेट दैट किल एंड ही वोंट बी एबल टू। दैट पुट्स वंडर in 1v2 and with tragic events, I guess this round will be going in the hands of VALORANT Esports, which means Nasha Esports has lost their force by a round. तानिया, उनका इकोनॉमी अभी काफ़ी टाइम लगेगा उनको रिकवर करने के लिए एंड VALORANT Esports के लिए ये एक बोनस राउंड है। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने काफ़ी काम माइंडसेट के साथ खेला था स्पेक्टर्स के अगेंस्ट, ओनली विथ घोस्ट एंड शेरिफ्स इन देयर हैंड्स। एब्सोल्युटली एक अच्छी कोशिश की गई थी, एक फोर्स बाय किया गया था विद द होप के हम इमीडिएटली जाएंगे। एंड इस बार अगर हम देख रहे हैं तो शील्ड्स की भी कमी नजर आएगी बिकॉज दे वांट टू मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम एक AR के साथ खेला जाए एंड देयर यू वुड वांट टू विन ईजियर राउंड। और हम इसी तरीके से अगर VALORANT स्पोर्ट्स की ओर देखते हैं, यहाँ पर भी फ्री स्पेक्टर्स या प्रीवियस बाय राउंड की नजर आएंगी एंड थोड़ा सा स्ट्रेंथी है। आई टोल्ड ना, एक MF कॉड स्टॉर्म और रियो का एक अच्छा टीम सपोर्ट और कॉम्बो नजर आ रहा है इमीडिएटली रोटेशन लेने में, टीम सपोर्ट लेने में। एंड आई थिंक दैट इज गोइंग टू गिव अ एडवांटेज टू VALORANT स्पोर्ट्स फॉर श्योर। अभी अल्टीमेटली शिवी भी आ चुके हैं विद इन द रेंज नियर टू होक्स, क्योंकि एज अ ड्यूलिस्ट होक्स विल डेफिनेटली रिलाई अपॉन शिवी के पिक्स निकालने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। सो दिस इज व्हाट द कॉम्बो बिटवीन होक्स एंड शिवी इज एक्सपेक्टेड एंड आई थिंक शिवी यहाँ पर एक अपशिफ्ट लेते हुए नजर आएंगे। ही इज ऑल्सो गोइंग अहेड फॉर द वैंडल व्हेन यू वेरी वेल नो अदर टीममेट्स आर गोइंग फॉर द इको, लेकिन ही वांट टू मेक श्योर कि एक फर्स्ट पिक मिल जाए, एक साइड एंट्री मिल जाए एंड दिस इज ऑल व्हाट दे वुड वांट। yes, that's definitely true though. पर आई गेस अगर एक और राउंड नशा स्पोर्ट्स VALORANT स्पोर्ट्स को दे देगी तो काफ़ी मुश्किल होने वाला है। नॉट ओनली देयर इकोनॉमी बट द नंबर ऑफ राउंड्स आर स्लोली गेटिंग इनटू द हैंड्स ऑफ VALORANT स्पोर्ट्स, व्हिच इज नॉट समथिंग नशा स्पोर्ट्स वांट टू सी। बाय द वे, VALORANT has been getting a very wide peek on towards ये शॉट। काफ़ी स्लो एंड स्टडी गेम खेल रहे फिलहाल के लिए नशा स्पोर्ट्स। हर एक कॉर्नर, हर एक एंगल चेक करते जा रहा है। उन्होंने अभी वाइन्स चेक कर लिया है एंड नाउ दे आर ट्राइंग टू मेक देयर एंट्री ओवर टू बॉम्ब साइड। होक्स इज सिटिंग इन अ वेरी क्रैंकी पोजीशन। इवन अगर उसको स्मोक से स्प्रे भी पड़ जाएगा तो काफ़ी आसान होगा उसको टेक डाउन करने के लिए। एंड रिकॉन आएगा, रिकॉन को तोड़ दिया गया है एंड इट्स गोइंग टू बी एन एंटायर push coming in from Nasha Esports, a double kill, a triple kill. 3 players have been taken down of Nasha Esports. It's all in the hands of Initiator and the Sentinel. मुझे नहीं लगता है कि ये 2v5 हो पाएगा क्लच। 30 seconds left. यूनिस चाहते हैं क्लच निकालना डिफिकल्ट होगा। शॉट कार्ड का बिल्कुल सही प्लेसमेंट एंड एक फ्लॉलेस राउंड, काफ़ी अच्छी तरीके से VALORANT स्पोर्ट्स डोमिनेट करते हुए नजर आ रही है। एंड वी ऑलरेडी मेंशन्ड कि अगर अटैकिंग साइड में अच्छा परफॉर्मेंस निकाल कर चले जाएंगे तो डिफेंडर्स इज गोइंग टू बी ईजी और एक राउंड अपने पॉकेट में, बेस्ट आउट ऑफ 3 का एक राउंड अपने पॉकेट में ईजी विन निकाल सकेंगे। एंड दे आर मेकिंग श्योर ऑफ कि बिल्कुल ईजी टाइम ना दिया जाए। नशा स्पोर्ट्स फिर से एक बार स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे। फोर्स बाय वाला राउंड भी नजर आएगा।
जाएगा। अब देखेंगे कि साइट में एंट्री कैसे होगी, बिकॉज दे ट्राइड ए डिलेड एंट्री में भी ट्राई किया, बट साइट में एंट्री तक की प्रोबेबिलिटी नहीं जनरेट हो सकी। तो अब देखेंगे वीआरडी स्पोर्ट्स के सिर्फ रियो वेट कर रहे हैं ऑन साइट ए। रेकॉन का यूज किया जाएगा एंड आई एम वेरी श्योर एवरीबॉडी विल बी रिवील्ड एंड रेकॉन को वेस्ट आउट कर दिया गया है। एंड हमें यहाँ पर वेट कर रहे हैं ऑन द अदर हैंड। केजे का टैरेट भी डिले करने में हेल्प कर रहा है। देखेंगे कि स्टॉर्म का टैरेट कितनी ज्यादा देर तक होल्ड करेगा एंड इंटेल पास हो चुका है। रोटेशन हमें अच्छी तरीके से नजर आ रहा है वीआरडी स्पोर्ट्स की ओर से, क्योंकि एमएफ को डाल चुके हैं, डार्क कवर डाल चुके हैं एंड यहाँ पर स्टॉर्म सक्सेसफुल रहे हैं। शिवी जो मिड मार्केट वॉन्डर कर रहे थे इमीडिएटली डाल दिया। एंड आई एम नोटिसिंग बैड लव हैज गॉट सम एग्जैक्ट प्लेसमेंट्स जहां से वो इजी 2-3 पिक निकाल लेते हैं एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली एज अ डिफेंडर यू वुड वांट। रोटेशन करने वाले, बैक फ्लैंक करने वाले, बैक स्टेप करने वाले हर एक प्लेयर को बैड लव की ओर से स्टॉप कर दिया जा रहा है। Yes, I mean bad love gives out bad luck to the opponents and I guess वो काफ़ी सही से चल रहा है बैड लव के लिए फिलहाल के लिए। तो अभी देखेंगे MF गॉड कितना अनोइंग हो सकते हैं, थोड़े अनोइंग से ज़्यादा ही बढ़कर थे। उन्होंने फ्लैश का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, एक के लिए हुआ है थ्रू द स्मोक स्पैम करते हुए। बैड लव ऐसे चांद सितारे की तरह दिखे और गायब भी हो चुके हैं विनर के हाथ से। रियो is trying to push down out of the bomb side. वंडर ने बॉम्ब प्लांट भी कर दिया है यहाँ। एबफ गॉड के पास काफी कम एचपी था, 65 पी के साथ वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाया है। अगर आप देख रहे तो यहाँ एस्ट्रा के लिए ओ माय गॉड वियर्ड स्टॉर्म ने डबल किल निकाल दिया। सिंगल हैंडेडली पूरा गेम खत्म करने वाला है शायद से, लगता तो ये ऐसी ही है। डबल किल मिला उन्हें, अमेय सायन ऊपर बैठे हुए उनको एक किल मिला and that is a 1v2 clutch from Ameya. No matter how good Storm tried, at the end of the day Ameya managed to get the clutch done यार। काफी बढ़िया क्लच था, काफी अच्छा रोटेशन था अमेया का। वो पीछे पीछे अपने ही नाक के नीचे से घुस गए थे और काफी स्ट्रैटेजिकली एंट्री ली गई है। इमीडिएट स्पॉट होने में भी डिफिकल्टी हुई थी, जिसके चलते काफी अच्छी तरीके से एक जो बेसिक नेसेसिटी हो चुका था अभी के लिए भी एक हार्ड बाय नजर आ रहा है। एवरीबडी वांट्स टू गो अहेड विथ एआरस एक्सेप्ट फॉर वंडर जो स्पेक्टर चलाएंगे, बट फुल शील्ड ली गई है। शिवी यहाँ पर फुल शील्ड लेंगे। यहाँ पर स्टॉर्म वेट कर रहे हैं, टैरेट को इमीडिएटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया है टू अवॉइड एनीथिंग। लेकिन यहाँ पर एक फियर सा भी क्रिएट हो चुका है कि इट इज गोइंग टू बी साइड बी, लेकिन मिड के थ्रू रोटेशन लेते हुए नजर आएंगे अमेया, जिन्होंने अभी एक राउंड जिताया है। यहाँ पर मिड मार्केट के गेट को ब्रेकआउट कर दिया गया है और यहाँ पर बैड लव, दिस इज द ऑफ एंगल मास्टर प्ले बैड लव की ओर से। हर बार हम देख रहे हैं कि मिड को कैप्चर कर रहे हैं, हर एक रोटेशन, हर एक ब्लैक बैक फ्लैंक को रोक रहे हैं और विनर ज्यादा देर तक ये स्ट्रैटेजी चलने नहीं देंगे। और यहाँ पर बैड लव को हटा दिया गया, जिसका मतलब अब साइट ए में एंट्री इजी होगी। लेकिन ऑन द कोर्ट यहाँ पर हम क्लियरली देख पा रहे हैं एमएफ गॉड ने इमीडिएटली रोटेशन ले लिया है और आ चुके हैं और एमएफ गॉड को वंडर एलिमिनेट कर देंगे, टर्निंग इट टू 3v3 अफेयर। अब फाइट ऑफ द इक्वल्स है, साइट में एंट्री है, बॉम्ब प्लांट भी इजीली हो जाने वाला है। देखेंगे ये प्लांट होने के बाद क्या होगा। एंड वी आर ऑलरेडी सीइंग ओडिन इन द हैंड्स ऑफ लियो। तो यहाँ पर एक अच्छा 1v3 क्लच भी क्लोजिंग क्रिएट किया जा सकता है। यहाँ पे तुम देख रहे हो क्या, यहाँ पे बैकस्टैब हो चुका है। स्टॉर्म और हमारा सासमी दोनों के दोनों काफी पेशेंटली वेट कर रहे थे जब तक बॉम्ब प्लांट हो जाए और लॉकडाउन प्लेस में आ जाए, ताकि प्रेशर बढ़े नशा स्पोर्ट्स में ज़्यादा। और प्रेशर तो ज़रूर बढ़ गया था एंड वीआरडी स्पोर्ट्स आराम से उनका बैकस्टैब एक्सिक्यूट करते हुए उनका राउंड उनके हाथ में जा चुका है। अभी I think it's the 10th round for VALORANT Esports right now, and Nasha Esports are in a big trouble in terms of the round. They have to get 3 rounds to tie up again with VALORANT Esports. But ये जो प्ले था ना पिछले राउंड में, ताने खूब बढ़िया खेला गया था। सैसमी प्लांट से पहले ही बैठे थे ए मेन में, बट उन्होंने वेट किया है बैकअप के लिए, उन्होंने स्टॉर्म के लिए वेट किया रोटेट करके ए मेन आते हुए। उन्होंने इसके लिए भी वेट किया है कि ताकि वो स्पाइक प्लांट हो जाए और लॉकडाउन एक्टिवेट हो जाए, तब जाके पुश करे, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होगा। एंड ज़रूर वो उसके हाथ में वर्कआउट हुआ है। वर्कआउट काफी अच्छी तरीके से किया गया है और लीड भी अच्छी तरीके से ऑन द डिफेंडर साइड ली गई है। ए साइड से एक फुल इन पुश नजर आ रहा है, देखेंगे कितना इजियर पुश रहेगा। फॉर नाउ यहाँ पर स्टैक्ड अप प्ले जो स्कैटर्ड थे पूरी तरीके से वीआरडी स्पोर्ट्स हैव रियलाइज्ड के यहाँ पर थ्रेट ए पर ज्यादा है। एक रोटेशन देखने के लिए मिल रहा है। बैड लव भी अब ऑफ एंगल से ऑन साइड आ चुके हैं, नेबुला का यूज किया गया है। शो
फर्स्ट अपॉर्चुनिटी के हाथों में, अनफॉर्चुनेटली सासमी उन्हें यूज नहीं करने देंगे। एमएफ वॉर्ड यहाँ पर वेट कर रहे हैं साइड में एंट्री लेने के लिए, और यहाँ पर एक पिक निकाल लिया गया है थ्रू द हेल, और सेकंड को डाउन देने की कोशिश की जा रही थी और सक्सेसफुली ब्लेड स्टॉर्म के जरिए नहीं, होप्स ने विद द क्लासिक ले लिया है, टर्निंग इट टू अ 1v2 अफेयर, एंड अल्टीमेटली स्टॉर्म यहाँ पर स्टॉर्मी यार अप्रोच रखेंगे और अपनी टीम को यहाँ पर 11th राउंड निकलवा देंगे। सो नाउ दे आर द टीम VALORANT Esports is just 2 rounds away from getting the first out of best out of 3. Look at Storm being a sentinel and taking 21 kills, man. He is doing wonders out of all 10 players. एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस स्टॉर्म की ओर से नजर आ रहा है। अच्छी तरीके से लॉकडाउन की प्लेसमेंट्स हमने देखी, जिसके चलते अभी प्रीवियस वाला राउंड फेवर में गया था VALORANT Esports के। तो एक अच्छा स्ट्रैटेजिक प्ले है, पिक्स निकालने में भी सक्सेसफुल रह रहे हैं, एंड दिस इज व्हाट यू वुड वांट। एंड ड्यूलिस्ट बैक एंड पे खेलते हुए नजर आएंगे, एंड फॉर दिस पर्टिकुलर राउंड बैड लव स्नाइपर के साथ नजर आएंगे। अनफॉर्चुनेटली जो पिक निकालने की कोशिश की गई थी अनसक्सेसफुल रही, बट दे हैव रियलाइज्ड कि यहाँ पर बी साइड ओवर पॉपुलेटेड है। यस, वो तो ज़रूर आपने सही बोला है, बट ये ओडिन के साथ तो चीज़ें और मुश्किल होने वाले हैं अटैकर्स के लिए साइड में एंट्री करने के लिए। हम ऑलरेडी देख सकते हैं कि होक्स का एचपी काफ़ी कम है, 34 एचपी पे बैठे हुए हैं, एंड काफ़ी बढ़िया डैश था बट गलत टाइम पे था। स्टॉर्म ऑलरेडी इंतज़ार कर रहे थे होक्स की पुश करने के लिए, एंड सही टाइम पे उन्होंने सही डिसीजन निकाला है। लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू बी अ बी मेन एग्जीक्यूट राइट नाउ। तानिया पूरे के चारों प्लेयर्स बैठे हुए बी मेन में, एंड यहाँ ओडिन स्प्रे तो रुक ही नहीं रहा है हमारे भाई साहब से, एंड रियो अभी रिकॉन डालेगा। पूरा दुनिया यहाँ पे रिवील होने वाली है, एंड इस बार तो ओडिन काफी डैमेज करने वाली है। किलजॉय काफी लो एचपी पे बैठे हुए हैं, एंड दैट वन टैप डजंट वर्क ऑल द टाइम। वंडर Storm is gonna take one down, which leaves us in a 3v5 situation. You know, I really like how Weird Esports is playing right now. They are making Nasha Esports walk into their crosses instead of going in for that pushes and backstabs. यहाँ पर बैक स्टैप की अटेम्प्ट हो सकती है, बट दे आर कमिटेड कि हम साइड डी में ही आएंगे, डीले का मौका दें, एंड दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट हिट। स्टॉर्म का एक स्टॉर्मी परफॉर्मेंस है। आई टोल्ड बीइंग अ सेंटिनल ही इज डूइंग एवरी रोल दैट ड्यूलिस्ट हैज टू डू, एंड ही इज एबल टू गेट द पिक, ही इज एबल टू गो फॉर द अल्ट, एंड दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट एस ऑफ द सेमी फाइनल्स लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड फॉर द फर्स्ट मैच इटसेल्फ विद इन द फर्स्ट मैप ऑफ एसेंट। यहाँ पर अच्छा खासा सेटअप फिर से एक बार बी साइड पे किया गया, लेकिन एक प्लेयर के हाथों टोटली एलिमिनेट होकर नशा स्पोर्ट्स ने स्ट्रैटेजी ही चेंज कर दी है। बी साइड किसी को जाना ही नहीं है, दे ऑल आर पुशिंग फॉर द साइड, एंड लेट्स सी ये स्टैक्ड अप प्ले क्या रिवॉर्ड्स पे करेगा, बिकॉज फॉर नाउ हम देख पा रहे हैं बैड लव स्नाइपर के साथ फिर से रेडी होंगे रैंप का व्यू लेने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है। सो रियलाइजिंग कि एक रॉन्ग एंगल है, फिर से एक बार कहीं और जाना होगा। फायरिंग शॉट सुनाई जरूर दे रही है, लेकिन कहीं पर भी डैमेज एक्सचेंज नहीं हो रहा है। यस, बहुत ही अच्छा किलजॉय का यहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ है, विच इज गोना पुश डाउन अ लॉट ऑफ अटैकर्स टू दिस स्पॉन। बट बैड लव का पोजीशनिंग देखो, उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना पोजीशन रखा है। छोटा सा भी एंगल दे तो मार देगा, बट हमें यहाँ पे आउट प्ले कर चुके हैं बैड लव को, एंड दैट हंटर्स फ्यूरी कमिंग टू द प्ले। लॉकडाउन तो डिस्ट्रॉय हो चुका है, बट सैस भी यहाँ पे होक्स को डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। Storm getting one on towards Shivi, immediately getting tagged by the boom bot, down 46 HP, a double kill, almost a triple kill coming into the play, and MF God, he's definitely gonna take one hit down, which half में attack से आते हुए भी, जब हमको पता है कि Ascent is kindly favored towards defenders, giving out rounds can cost you a lot, especially सबसे बड़ा स्ट्राइक आउट नशा स्पोर्ट्स पे कब हुआ, जब उन्होंने सेकेंड हाफ का पिस्टल राउंड जीता और सेकेंड राउंड फोर्स बाय राउंड हार गए थे। That did quite a lot of effect. That was a damaging round for them, deciding for the first spy. Unfortunately, now not being able to win was the loss, और एक ऐसा लॉस था जिसे रिकवर करने की कोशिश में ही दे लॉस्ट द एंटायर मैप ऑफ एसेट, क्योंकि रिकवर करने की कोशिश जरूर की गई थी, विल नॉट डिनाई विद द मैटर ऑफ फैक्ट, क्योंकि काफी बार फर्स्ट पिक भी लिया गया था, बट देन स्टॉर्म का एक स्टॉर्मी प्ले है, एंड ही वाज डोमिनेंट इनफ इन एंटायर सेट ऑफ बोथ द टीम्स। एक अच्छा परफॉर्मेंस देकर गए थे, एंड टू बी ऑनेस्ट अकेले स्टॉर्म काफी थे ऑन द डिफेंडर साइड, कोई भी एक साइड
साइड को कंट्रोल करने के लिए, एंड जो एक लर्क को रोका जा रहा था बैड लव की ओर से, कहीं से भी बैक स्टैब करने का मौका नहीं दिया जा रहा था, जिसके चलते डिफेंडर्स में तो दे लॉस्ट द राउंड, वील बी ऑनेस्ट, बट अटैकिंग साइड में कहीं से भी साइड एंट्री लेना डिफिकल्ट हो रहा था। तो आई वुड से एक जो टीम स्प्लिट था ना, और एक स्ट्रैटेजिक प्ले था, एंड इमीडिएट यूजेज ऑफ द अल्टीमेट्स व्हिच वाज यूज्ड, काफी बार रिजल्ट नहीं आ रहा था बट इट वाज इनफ। हंटर्स फ्यूरी का जब यूज किया गया था प्लेयर्स को एक केओटिक सिचुएशन में डालने के लिए, एंड द प्लेयर्स वर जस्ट मूविंग टुवर्ड्स द हेवन, और वहां से स्पॉन आइलैंड से आकर प्लेयर्स अगर आपको एलिमिनेट कर देंगे, टेकिंग 2 consecutive पिक्स, उसके बाद वो नीचे जाना, गेटिंग 3 kills, गेटिंग द विक्ट्री, आई थिंक एक स्ट्रैटेजिक प्ले था, टीम सपोर्ट भी पूरा था, एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि अटैकिंग साइड में लीड ले चुके थे। यस, वो तो आपने बहुत सही बोला। अटैक साइड में लीड के वजह से हमको इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला। पूरा एंटायर मैप वियर्ड स्पोर्ट्स के हाथ में चले गया था जस्ट बिकॉज ऑफ हैविंग दैट लीड इन द फर्स्ट हाफ। एंड सेकेंड हाफ में छोटा सा गलती किया था नशा स्पोर्ट्स ने, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंटली पुश कर दिए थे फोर स्पॉट गन्स के साथ। उनको याद करनी चाहिए थी कि वो लोग वियर्ड स्पोर्ट्स के सामने यहाँ पे बैठे हैं। रिमेंबर दैट वन राउंड जहाँ पे वियर्ड स्पोर्ट्स ने ओनली पिस्टल्स के साथ राउंड निकाला था, ओनली शेरिफ्स, which was a mind blowing round for me. वो राउंड देखने के बाद a lot of things changed for me regarding sheriff and the pistols against rifles. काफी बढ़िया राउंड था वो राउंड। एंड या आई मीन बेस्ट ऑफ लक अगेन फॉर नशा स्पोर्ट्स। अभी भी ये बेस्ट ऑफ 3 है, अभी हमने जस्ट पहला मैप देखा है। अगर एक और मैप वियर्ड स्पोर्ट्स लेके जाती है तो दे आर गोना बी द फर्स्ट फिनालिस्ट फॉर एसस आरओजी वैलोरेंट शोडाउन। अगर नशा स्पोर्ट्स दूसरा मैप उनकी फेवर में ले लेती है तो वी विल गेट टू सी द डिसाइडर्स मैप व्हिच इज बाइंड, माय फेवरेट मैप बाय द वे पर्सनली। Bind is definitely one of my favorites as well, but I would always opt for Ascent over Bind, क्योंकि एक यूजर फ्रेंडली हो चुका है तन्वी। एक Ascent ऐसा मैप हो चुका है कि अगर कोई भी कुछ भी थोड़ी देर के लिए भी अगर खेलना है तो चलो लेट्स गो फॉर Ascent प्ले। एक एवर एवर लास्टिंग सा मैप है, बट टॉकिंग कमिंग बैक टू Bind, एक डिसाइडिंग मैप के अंदर इट इज गोइंग टू बी इक्वलाइज्ड अप्रोच, क्योंकि अनलाइक हेवन, अनलाइक Ascent, Bind के अंदर रीटेक लेना डिफिकल्ट है फॉर द अटैकर साइड, बट इम्पॉसिबल नहीं है, एंड ऑल थैंक्स टू टेलीपोर्टर्स। हम देखेंगे कि क्या परफॉर्मेंस रहेगी डिसाइडर्स मैप में, क्या वियर्ड ई स्पोर्ट्स मौका भी देगी, क्योंकि डेफिनेटली डिफेंडर्स साइड में राउंड निकालना इट इज ऑलवेज इजियर ऑन द मैप ऑफ एसेंट, लेकिन जो अटैकिंग साइड में प्ले दिखाया, इमीडिएट अर्ली पिक्स, अर्ली एंट्री, एंड हर बार हमने देखा कि काफी बार ऐसे राउंड्स में निकले जहां स्पाइक प्लांट करने की जरूरत ही नहीं थी, दे इमीडिएटली वन इट जस्ट बाय एलिमिनेटिंग एन एंटायर टीम। तो अब विद दैट सॉर्ट ऑफ फायर पावर, एंड यू ऑलरेडी मेंशन इन द इंट्रोडक्शन फेज इटसेल्फ तन्वी, कि ये एक ऐसी टीम है, किल हंग्री टीम है। स्पाइक प्लांट होता है दैट्स गुड, लेकिन हम पहले पिक्स निकालेंगे, एंड आई थिंक दिस स्ट्रैटेजी इज पेइंग देम मोर ऑफ द रिवॉर्ड्स, एंड दिस इज व्हाट यू वुड वांट टू गो फॉर। एक पॉइंट की लीड बना चुके हैं, एंड अब और एक पॉइंट कॉन्सिक्यूटिवली चाहिए, क्या वो निकाल पाएंगे? एंड टू द व्यूअर्स, आप अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो मेक श्योर कि आप एक रेड हार्ट स्पैम कर दें, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो स्माइली स्पैम कर दीजिए, आपके फेवरेट टीम को सपोर्ट करिए, आपके फेवरेट प्लेयर को सपोर्ट करिए। तब तक हम मैप वाइज स्कोर बोर्ड देख लेते हैं। Yes, well, quickly jumping to the map by scoreboard. Of course, on the lead हमारे यहाँ बैठे हुए होक्स। होक्स ने जिसने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया था, एंड फ्रॉम द ओपोनेंट टीम वी हैव स्टॉर्म with almost 28 kills, the MVP, I would say precisely, and the highest number of kills currently. 341 average comeback score, 93 econ rating, and 4 first bloods, which is higher than any of the duelist राइट नाउ। बैड लव या सासमी को कंपेयर करते हुए, एंड एक प्लांट दिया उन्होंने, काफी बढ़िया गेम खेला था। 28 किल्स, 10 डेथ्स एंड 1 असिस्ट। जब बात होती है होक्स की, होक्स ने भी काफी अच्छा कोऑर्डिनेटेड प्ले किया उनकी टीम के साथ। 20 किल्स, 19 डेथ्स, 1 असिस्ट, 6 फर्स्ट प्लस दिए उन्होंने। यहाँ से तो हम बता ही सकते हैं कि कितना एफर्ट डाला है होक्स ने अपने टीम के लिए। होक्स नीडेड सम सपोर्ट। अगर शिवी वो सपोर्ट नहीं क्रिएट कर पा रहे थे तो एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि वंडर्स एज अ इनिशिएटर एक फर्स्ट पिक निकालने में हेल्प कर देते। तो होक्स ने अपना 200% एफर्ट्स दिया, बिकॉज यू कैन क्लियरली सी 6 फर्स्ट ब्लड। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इमीडिएटली रश इन, गेट द पिक्स। ही वाज सक्सेसफुली एबल टू गेट दैट, एंड अल्टीमेटली यहाँ पर एक स्टॉर्म को हम पर्टिकुलरली फिर से एक बार एम्फसाइज करना चाहेंगे, ही वाज नॉट अलाउिंग, जब वो डिफेंडर्स में गए साइट
साइट एंट्री ही इतनी ज्यादा देर तक हर्डल सा बना दिया था, और रोटेशन लेना इम्पॉसिबल हो रहा था क्योंकि इतनी ज्यादा देर तक ऑलरेडी कमिटेड रह रहे थे। एंड अनफॉर्चुनेटली साइट में एंट्री के डीले की वजह से नशा ई स्पोर्ट्स रोटेशन में भी अनफॉर्चुनेट कंडीशन में आ रहे थे, जिसके चलते दे वर नॉट एबल टू प्लांट द स्पाइक्स ऑन अटैकिंग साइड. This was just all about Ascent. There are many more maps to go ahead. This is best of 3. It's okay. This is just the beginning. Not being able to get the first round, it's all fine, all good. But there's much more to follow, much more to come. Because with the Flash definitely played a little bit of extra advantage as the duelist itself and the only self healer. Though we did not see him going for the self heal over time, or maybe several times he was able to flash an entire team towards delaying the entry, and that is all he had to do on different side entirely. क्योंकि एक साइड पे स्टॉर्म अपना काम काफी अच्छी तरीके से कर ही रहे थे. Yes, I mean, I think he carried the entire team in a very proper way. अभी फिलहाल हम जाने वाला I think player versus player. That's my favorite glitch pop bulldog by the way. And here we are, player versus player. It's going to be Weird Storm versus Hoax as I expected. 28 kills, 10 deaths, 1 assist, 2.8 KDR by Weird Storm. आप देख रहे हो ताने कितने अच्छे तरीके से उन्होंने अपना केडी मेंटेन किया है। जब बात आती है होक्स की, उन्होंने प्रॉपर 1 केडी मेंटेन किया है। इफ इट वाज नॉट द लास्ट किल ही टुक, इट वुड हैव बीन लेस देन 1 केडी फॉर हिम। या इट वुड हैव बीन डेफिनेटली, लेकिन स्टॉर्म यहाँ पर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, ऑलमोस्ट 3 पिक्स पर राउंड, एंड दिस वाज द थिंग दैट वाज रिक्वायर्ड टू गेट इनटू द विक्ट्री. बट कमिंग बैक टू होक्स, हमने देखा ही ट्राइड टू बी द इनिशिएटर फॉर द टीम, ही ट्राइड टू बी द ड्यूलिस्ट फॉर हिज टीम, एंड सक्सेसफुली पिक्स भी निकल रहे थे. बट टीम सपोर्ट में मुझे कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है फॉर नशा ई स्पोर्ट्स. आई थिंक ये राउंड के अंदर थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन मिस हुआ था इनटू व्हेन दे वर इनटू द डिफेंडिंग साइड, एंड लेट्स होप नेक्स्ट टाइम एक अच्छा कोऑर्डिनेशन देखने के लिए मिले, क्योंकि द वे होक्स वाज डीलिंग, आई थॉट फॉर अ सेकंड कि पूरी एंटायर को अगर साइड पर कब्जा कर लेते हैं, साइड एंट्री डीले करवा लेते हैं, दैट इज गोइंग टू बी इनफ. लेकिन द रिमेनिंग ड्यूलिस्ट ऑफ द टीम कुड नॉट इमीडिएटली अटेंड द एग्जैक्ट रिक्वायर्ड साइड जहां पर कमिट कर चुके थे वियर्ड ई स्पोर्ट्स. तो पीवीपी के अंदर स्टॉर्म यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से ऑलमोस्ट ट्रिपल द प्ले दिखा कर गए हुए हैं, एंड अच्छा परफॉर्मेंस दिखा कर गए. एमवीपी फॉर दिस वेरी मैप इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वियर्ड ई स्पोर्ट्स के स्टॉर्म विद टोटल ऑफ 28 किल्स एंड ओनली 10 डेथ. वी मिस दैट पॉइंट तन्वी, और क्योंकि होक्स के टोटल 17 डेथ्स थी और यहाँ पर स्टॉर्म ने सिर्फ 10 डेथ्स ली, तो सर्टनली हर एक बार वो सर्वाइव करते हुए आगे गए, एक अच्छा परफॉर्म करते हुए आगे गए, एंड एसेंट के मैप के वो एमवीपी भी रह कर गए. दैट इज डेफिनेटली ट्रू। वेल कंग्रेचुलेशन टॉम, पहले मैप के एमवीपी बन चुके हो, बट क्या दूसरे मैप के भी यही मोमेंटम लेके जाओगे, ये मेरा क्वेश्चन है। आई मीन डेफिनेटली मैं स्टॉर्म को यही मोमेंटम कैरी डाउन करना चाहती हूँ, बिकॉज उन्होंने जो एग्रेशन दिखाया एज अ सेंटिनल, वो भी तानिया, इतना एग्रेसिव प्लेस, अगर यही मोमेंटम वियर्ड स्पोर्ट्स अगले मैप पे भी लेके जाएगी, दैट इज वन ऑफ देयर बेस्ट मैप्स बाय द वे, हेवन आई बिलीव। एंड आई गेस हेवन में चीजें काफी 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 अलग होने वाला है। यस, हेवन के अंदर काफ़ी अलग होने वाला. वी कैन एक्सपेक्ट 2 सेंटिनल्स हियर, एंड डेफिनेटली हम एक स्मोक की एक्सपेक्टेशंस रखेंगे यहाँ पर, ताकि तीनों साइड पर एक अच्छा खासा कंट्रोल ऑन द डिफेंडिंग साइड मिल जाए. देखेंगे कि प्लेयर्स किस तरीके से पिक किए जाएंगे, ड्यूलिस्ट का भी इंपॉर्टेंस रहेगा, एंड आई होप पिछले मैप में जो एक फ्लैशर की कमी रह गई थी वो इस बार नहीं रखेंगे, बिकॉज फॉर द मैप ऑफ हेवन यू आर गोइंग टू नीड फ्लैश फॉर द साइड एंट्री फॉर श्योर, क्योंकि डिफेंडर्स साइड का मैप है वो हम डिनाई नहीं करते, लेकिन अटैकर्स अगर फुल स्टैक पुश कर देंगे किसी साइड पर, तो वन प्लेयर इज नॉट गोइंग टू बी एबल टू स्टॉप एन एंटायर स्टैक्ड प्ले. तो एक अटैकर्स के लिए एडवांटेज रहेगा अगर फुल स्टैक में एंट्री ले लेते हैं, साइड में एंट्री मिल जाएगी, द सेंटिनल्स विल डू द रोल. तो अभी के लिए मेरा फोकस ये है कि वियर्ड ई स्पोर्ट्स और नशा ई स्पोर्ट्स किस तरीके से अपनी टीम को स्प्लिट करेंगे, कितने ड्यूलिस्ट लेकर आगे बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं इनिशिएटर इज अ मस्ट, ताकि वो एंट्री मिल जाए, इंटेल मिल जाए, एंड लेट्स सी अगर वो स्प्लिट प्रॉपर रह गया. For the map of heaven, I usually prefer 1 initiator, 2 duelist, 1 controller and 1 sentinel. अगर इसी तरीके से हम देख लेते हैं on the attacking side, they can build up the advantage here. Well, that is definitely true. I'm excited for the next map that is going to be Haven. Well, before we switch down to the map of Haven and pre-match analysis, me and Tanya are going to take a short break and we'll meet you right back here in minutes.
Got him. Let's go. Ladies and gentlemen, we are back after a short break for ROG Showdown series for Valorant. यहाँ पर चल रहा है Weird Esports versus Nasha Esports. First round Weird Esports जीत चुके हैं on the map of Ascent. Next map शुरू होने ही वाला है. But before that, कितनी अच्छी advertisement थी. अगर आप gamer हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप भी इसी तरीके से अच्छे खासे picks and kills Storm की तरह निकाल लें and अच्छे calibration का PC बना लें. So you have got the link in the description. Go ahead, take your buy and make sure कि आप भी इतनी अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन जाए. बट कमिंग बैक टू यू तन्वी, डू यू थिंक इन द मैप ऑफ हेवन यहाँ पर एक हम नशा स्पोर्ट्स की ओर से अलग स्ट्रैटेजीज देख पाएंगे या फिर से वही एक रिपीटेटिव स्ट्रैटेजी देखने को मिलेगी क्योंकि फिर से एक बार वो डिफेंडिंग साइड में हमें दिखने वाले हैं? No. I'm definitely expecting Weird Esports to put down a different set of strategies. वैसे मैंने जैसे कि बोला वो definitely अपने momentum ascent से carry down करने वाले हेवन पे. बट मुझे ज़्यादा नशा स्पोर्ट्स के बारे में बोलना है बिकॉज आफ्टर लूजिंग द फर्स्ट मैप दे हैव टू क्वाइट मेक डिफरेंट सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज एंड दे विल बी स्टार्टिंग ऑफ ऑन द अटैक साइड स्पेशली हेवन मैप पे. तो उनके पास एडवांटेज है ऑलरेडी, साइड एडवांटेज तो है ही. जितना राउंड हो सके उतने राउंड उनको निकालना पड़ेगा इन दी अटैक साइड. बट स्पीकिंग अबाउट वियर्ड स्पोर्ट्स, उनका डिफेंस काफी स्ट्रांग है. हमने पिछले मैप में देखा था अगर सेम काइंड ऑफ स्ट्रांग डिफेंस सेटअप अगर उन्होंने हेवन पे भी सेट किया हो तो आई गेस Weird Esports have high chance compared to Nasha of Esports. Yeah, that is one of the strongest probability. If at the defender side, indeed, let's just reshuffle it. If on the attacker side, if Weird Esport is at least able to go equalized and not below, if they are able to go 6-6, I'm very sure of on the defender side, Weird Esports are going to go very strong because their defense is just on point. वो spike तक plant करना allow नहीं करते, let alone spikes. साइड एंट्री ही डिफिकल्ट कर दी गई है बिकॉज इनटू द एंटायर सेट हार्डली हमने देखा 3 स्पाइक प्लांट किए गए थे. तो जिसके चलते एक डिफेंसिव प्ले जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है Weird Esports के पास और पिक निकालने में कहीं पर भी कमी नहीं है. दे हैव गॉट फ्रंट एंड पे रहते हैं स्टॉर्म जो किसी को एंट्री नहीं दे रहे हैं. मिड वे पर बैड लव को होल्ड करा दिया जाता है जिसके चलते लर्कर्स और फ्लैंकर्स को कोई स्पेस नहीं दी जाती एंड देन इतना ज्यादा तक डिलेड फाइट चल रहा है जिसके चलते रोटेशन रीटेक का ऑप्शन नहीं बच रहा है. सो श्योर Weird Esports के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक प्ले ऑन द साइड ऑफ डिफेंडर्स. बट फॉर नाउ ऑन द साइड ऑफ अटैकर्स लेट्स होप नशा Esports एक नए सेट ऑफ स्किल्स और स्ट्रैटेजीज के साथ कुछ क्रिएट करें जिसके चलते दे गेट द राउंड बिकॉज इट इज गोइंग टू बी द विन विन सिचुएशन. अगर ये मैच चला जाता है, ये मैप चला जाता है Weird Esports के साथ तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी द फर्स्ट फाइनलिस्ट फॉर द डे. Yes, that is definitely true. I agree with you. As we move on to the map of Haven and the Asian pick has begun already. Weird Esports Defenders में जैसे कि हमने सोचा है एंड यहाँ पे नशा Esports Attackers पे काफी सेम लाइनअप है. बस हमको एक ही एक चेंज देखने को मिल रहा है कि यहाँ इस बार डबल ड्यूअलिस्ट नहीं डबल इनिशिएटर सेटअप लेके आ रहे हैं नशा Esports. दैट इज शिवी एंड वंडर ब्रीच प्लस सोवा. काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज 3 फ्लैशेस बैठे हुए हैं अभी शिवी के हाथ में एंड स्टन्स एंड व्हाट नॉट, काफी सारी चीजें. एंड जब बात आती है Weird Esports की, दे आर गोइंग फॉर अ प्रिटी बेसिक वन, डबल ड्यूअलिस्ट, 1 साइफर, 1 ओमन एंड सोवा. वेल अच्छी बात ये है कि हमको सेंटिनल में यहाँ पे साइफर मिला है, किल जॉय नहीं. बिकॉज हेवन इज अ बिग मैप, इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू कीप ऑल द इक्विपमेंट अलाइव ऑफ किल जॉय. बट साइफर तो मैप के कहीं कोने पे भी कंट्रोल ले सकता है. तो साइफर वाज अ गुड पिक. वेल both of the teams have gone for something different from the meta we have. So I'm excited कि पहला राउंड किसके हाथ में जाने वाली है. I have a good feeling कि नशा Esports पहला पिस्टल राउंड जीतने वाली है. पिछले बार तो हमने Weird Esports को जीतते हुए देखा है.
बिल्कुल, यहाँ पर हमने चेंज होते हुए देखा है और स्टॉर्म के अंदर चेंज है, वो अभी भी रहेंगे सेंटिनल के जैसे हो गए हैं साइफर, तो फिर से एक बार एक पूरा एंटायर साइड कंट्रोल हमें देखने के लिए मिल सकता है। बट कमिंग बैक टू शिवी, ही वाज़ अ ड्यूलिस्ट इन प्रीवियस राउंड, ही वाज़ प्लेइंग रेज़, इस बार एक इनिशिएटर का रोल कर रहे हैं, प्लेइंग एज़ अ ब्रीच, क्या साइड एंट्री ईज़ी रहेगी? 3 प्लेयर्स आर पुशिंग फॉर ए, इसका मतलब इमीडिएट एंट्री देखने को मिल सकती है। होप्स एक बार फिर से ऑलमोस्ट ए लॉन्ग के थ्रू एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं एंड यहाँ पर रियो का आमना सामना होने वाला है। देखेंगे रियो क्या करेंगे, बिकॉज 1v1 सिचुएशन क्रिएट होते हुए हो तो रहा है बट डिले है। साइफर का यहाँ पर ट्रैप फायर सेट किया गया है एंड होक्स इज वेटिंग, नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर अदर टीममेट्स टू जस्ट टेक एन एंट्री। इनिशिएटर की भी साथ आ चुकी है, वंडर ने फ्लाइंग ड्रोन डाल दिया है बट ऑन द कोर्स एक रोटेशन देखने के लिए मिल रहा है वीआरडी स्पोर्ट्स की ओर से। हर कोई टीम में मेट ए साइड पर आने की, स्टैक करने की कोशिश कर रही है। फिर से एक बार एक एस्ट्रा का यूजेज नेब्यूला यहाँ पर होल्ड कर रहा है टू अवॉइड द व्यू कमिंग इन फ्रॉम द हेवन एंड टुवर्ड्स द साइड। वेल फिलहाल के लिए स्पाइक तो प्लांट हो चुके हैं, इट्स एन अंडर हेवन प्लांट एंड लॉन्ग का प्लांट भी बोल सकते हैं इन शॉर्ट। Hooks is playing a little too aggressive over towards the CT and Shivi is ready to get the flashes out. ओमन का फ्लैश आते हुए स्टॉर्म ने ऊपर से नीचे कूदा है, 2 किल मतलब एक और लेते हुए स्टॉर्म 3 kills, 4 kills for Storm and that was one of the insane retakes I've ever seen in my life and the quickest one. Now I completely have no doubt that Storm कौन सा भी सेंटिनल उठा है मारने तो जरूर है। And he on the defending side, well, I'll be very honest, I was not expecting Storm to be this good once again. I thought ठीक है ascent map master किया हुआ है, where he is able to control the site entirely, but this time around फिर से एक बार Storm की ओर से एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिला है। मार्शल में बैड लव की ओर से देखने को मिलेगी। Storm अभी सिर्फ हाफ शील्ड लेंगे और एक स्पेक्टर में नजर आएंगे, घोस्ट के साथ हमें MF गॉड नजर आएंगे। नेक्स्ट राउंड में दे आर गोइंग टू गो अहेड विद द पिस्टल with the full by AR। अभी के लिए हम नशा esports को शेरिफ और क्लासिक के साथ देखेंगे। बैड लव ने इनिशिएट कर दिया, नॉट ओनली वन, पूरे सी लॉन्ग पर 2 पिक्स निकाल चुके हैं। थर्ड ऑन द वे हो सकता है, ड्रोन की कोशिश रिकॉन डॉट नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर अटैक किया गया शॉक बोल्ट से, डैमेज बिल्कुल भी डिलीवर नहीं हुआ। स्टॉर्म की फिर से एक बार अच्छी एंट्री देखने के लिए मिल रही, किल जॉय अकेले बचे थे एंड दिस इज गोइंग टू बी बैड लव थर्ड पिक इन द सेम राउंड। एक राउंड बैड लव निकाल लेते हैं, एक राउंड हम स्टॉर्म के हाथों में दे देते हैं, जिसके चलते ऑन द डिफेंडर साइड वी हैव मेंशन्ड VALORANT Esports is dominating in the map of Ascent and once again in the map of Heaven। यस जैसे कि मैंने बोला VALORANT Esports का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैप है हेवन एंड नशा Esports है, काफ़ी छोटे गलतियां कर रहे हैं। पहला राउंड में उन्होंने काफ़ी बढ़िया एंट्री दिया था, काफ़ी बढ़िया प्लांट किया था, बट पोस्ट प्लांट में उन्होंने गलती कर दिया था। ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स को अगर वो नोटिस नहीं करेंगे तो आगे जाके काफ़ी बढ़िया चीज़ काफ़ी बढ़िया से मैप हारने वाला है टू बी ऑनेस्ट। एंड इट्स अ फोर्स बाय राउंड फॉर नशा Esports एंड जब तक मुझे पता है कि VALORANT Esports का बोनस राउंड है, अगर ये राउंड नशा Esports हार जाती है तो काफ़ी मुश्किल होने वाला है। स्टॉर्म कॉर्नर चेक करते हुए उन्होंने एस्ट्रा के ऊपर ऑलमोस्ट पिक निकाल दिया था, बट होक्स विद अ ट्रिपल किल, विनर गोज डाउन। होक्स को पास बस 4 HP बचा है एंड द लास्ट वन स्टैंडिंग फॉर टीम VALORANT Esports इज रियो। तुम्हें क्या लगता है कि रियो 1-2 किल निकाल सकते हैं? आई मीन 3 लोगों का HP काफ़ी कम है नशा Esports के टीम में। Let's hope निकाल लें to destroy a little bit of economy and force buy for the next round as well, but क्या वो मौका दिया जाएगा? 1v5 situation and I'm very sure of Rio is not the player कि आराम से play of patience, they can allow the spike to get bursted immediately and we have seen him play previously as well। फिर से एक बार हम रियो को देख रहे हैं and with the same players, so हल्का सा एंट्री लेने की कोशिश साइड पे किया जरूर जा रहा है, and I don't think this is going to matter much यहाँ पर। और एक पिक भी लेने का मौका वंडर ने नहीं दिया, सोआ वर्सेस सोआ हो गया और वंडर इमीडिएटली टुक डाउन रियो। विद दैट दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट राउंड फॉर नशा ऑफ Esports एज अ अटैकर। अब इस बार फिर से एक का पुश देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि सी में विक्ट्री आ चुकी है, तो एक अच्छा डिफेंस सिस्टम क्रिएट हो चुका होगा, तो माइंड गेम्स भी देखने के लिए मिल रही है नशा Esports की ओर से। और वियर्ड के स्टॉर्म जो है बी साइड पर ब्लॉक बनाने की कोशिश करें, कंट्रोल लेने की कोशिश करें, और गराज पर भी एक कंट्रोल है। एंड डोंट यू थिंक मेटा कितना चेंज हो गया है तन्वी? नोबडी इज नीडिंग अ हीलर एनीमोर।
यस, आई मीन हीलर तो काफी दूर हो चुका है अभी। प्रीवियसली सेज यूज्ड टू बी द वेरी डिफॉल्ट सेंटिनल पिक इन हेवन, बिकॉज बी एंट्रेंस वॉल कर देते थे मिड पे और आराम से खेल लेते थे, गराज वॉल करते थे। बट अभी फिलहाल के लिए तो काफी चेंजेस आए हुए हैं। एंड व्हाट अ स्मार्ट प्ले बाय वंडर, वो तो शॉक डॉट से अभी साइफर का ट्रैप तोड़ने लगे हैं। बट ऑन द अदर हैंड बैड लव अपना पहला एंट्री लेते हुए है। नशा ऑफ स्पोर्ट्स के पहला प्लेयर ऑलरेडी डाउन हो चुका है, दैट इज हुक्स गोइंग डाउन। 3 प्लेयर्स एक गराज पुशाने वाले हैं। एमएफ गॉड के पास जज के हाथ में बैठे हुए, डबल किल एंड नाउ इज गोना यूज दैट फ्लैश पुश डाउन ऑन टू द ब्रीच। बट शिवी यू आर वेरी लकी, उसने सही टाइम पे बैक स्पेस बटन दबा दिया था, नहीं तो काफी मुश्किल होने वाला था शिवी को भी। Shivi's been spotted either way and he's getting pushed over there. The spike has been dropped. Weird MF God gets one, it's gonna get another one. Close था but winner ने डबल किल निकाल लिया तानिया यहाँ पे। एंड तुम्हें क्या लगता है कि बैड लव ये राउंड निकाल सकते हैं? जरूर से निकाल सकते हैं, ये तो 1v3 था। काफी बढ़िया ट्राई था विनर के हाथ से। एंड वियर्ड स्पोर्ट्स का तीसरा राउंड है ये। वियर्ड स्पोर्ट्स का तीसरा राउंड है ये। अच्छा, फिर से एक बार टीम सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है बिटवीन बैड लव स्टॉर्म एंड एमएफ गॉड। एक अच्छी तरीके से खोल रहे हैं। एंड लुक एट रियो एंड सैसमी, लीड इन विन राउंड्स है। इसके बाद अकाउंट ओपन नहीं हुआ है। सेम गोज फॉर अमेया एंड शिवी, अकाउंट ओपन नहीं हुआ है। तो देखेंगे एज अ कंट्रोलर विनर आगे क्या करेंगे। नॉट वांटिंग द स्पाइक एट ऑल, यहाँ पर ड्रॉप कर दिया गया। स्प्लिट की कोशिश नहीं की जा रही है। इंडिया दे आर गोइंग 3 प्लेयर्स फॉर द गराज एंट्री, 2 प्लेयर्स गोइंग अहेड फॉर द लॉन्ग एंट्री। लेकिन बैड लव ऑलरेडी यहाँ पर रेडी है क्रॉसहेयर लेकर एक एंट्री। एंड आई एम वेरी श्योर ऑफ बैड लव यहाँ पर चांस मिस नहीं करेंगे। यहाँ पर फ्लैश का यूज किया गया, मोमेंटम जो है उसे क्रैश करने की कोशिश की गई, सक्सेसफुल रहे। बैड लव की पोजीशन हटा दी गई है। साइड एंट्री मिली जरूर थी और यहाँ पर काफी ज्यादा डैमेज ले चुके हैं। इफेक्ट निकालकर इमीडिएट रिक्वायर्ड डैश किया गया, ब्राफ का यूज। लेकिन वहां पर शिवी अपना अकाउंट ओपन कर लेंगे, स्टॉर्म को टेक डाउन कर देंगे। यस, वेल स्टॉर्म एक बढ़िया स्टॉर्म से बाहर निकल चुके हैं, बट आगे तो काफी मुश्किल है। लेट्स सी कितना दूर तक ये जा सकते हैं। एंड शिवी भी आखिरी प्लेयर। आई थॉट शिवी क्लच कर सकते थे 1v2 सिचुएशन, बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट सेकंड पे हमारे सासमी रोटेशन को कट कर दिए और ये हुआ 14 राउंड हमारी वियर्ड स्पोर्ट्स के लिए। सॉरी, 4th राउंड, माय बैड। यहाँ पर वियर्ड स्पोर्ट्स डिफेंडर्स साइड में राउंड निकालने का मौका नहीं दे रहे हैं। लेस इन नंबर्स अगर हो भी जाते हैं तो स्टिल दे आर मेकिंग श्योर ऑफ के कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजिक प्ले कर लें एंड टेक द राउंड इनटू देयर पोजीशन। थोड़ी देर के लिए बैड लव को सी लॉन्ग से हटाने में सक्सेसफुल जरूर रहे थे, बट इट वाज नॉट एनफ टू गेट द एंटायर साइट एंट्री। शायद यहाँ पर हमें कुछ नई स्ट्रैटेजीज देखने के लिए मिल रही है। 3:2 का स्प्लिट तो पक्का है। एंड यहाँ पर ब्लेड स्टॉर्म का यूज हो की और से और ट्रैप फायर में स्टक होने का बिल्कुल सही मोमेंट पर यूज किया गया। एमएफ यहाँ पर डाउन कर देंगे, नॉट ओनली वन फॉलोड बाय अदर एज वेल ऑन द कोर्ट भी अमेया को डाउन कर देंगे। जासमी की ओर से ये एक फिनिशर प्ले, 2 पिक्स एंड अराउंड इन द पॉकेट। दिस वन वाज द फ्लॉलेस बाय फार। 5 राउंड्स इनटू द फेवर ऑफ वीएडी स्पोर्ट्स। और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू शो अ कमबैक फॉर नशा स्पोर्ट्स। हमने एसेंट में भी एक कमबैक स्टोरी लिखने के लिए कहा था, बट इट टर्न्ड वेरी डिफिकल्ट ड्यू टू द ब्रोकन इको। फिर से एक बार वही रिपीटेशन नजर आ रहा है। क्या रिजल्ट भी वही होगा? फिलहाल के लिए तो लग रहा है कि रिजल्ट वियर्ड स्पोर्ट्स के हाथ में है। वो काफ़ी अच्छे से डोमिनेट कर रहे हैं। और जब बात होती है नशा ऑफ स्पोर्ट्स की, कोशिश तो काफ़ी कर रहे हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया, हेवन एक बार फिर से अटैक सायरन मैप है। एंड अटैक सायरन में शुरू करने के बावजूद भी नशा स्पोर्ट्स काफ़ी सारे राउंड्स लूज कर रही है। अगर ऐसे ही जाता रहा तो उनका ना ही इकोनॉमी भी बड़ा ट्रबल में होगा एंड उनका नंबर ऑफ राउंड्स है वो भी ट्रबल में होने वाला है। Well, I think Amir Sain is all ready to set up a very hardcore execute right now with the orbital strike coming into the play and Storm, but Storm is not gonna get stopped by any of this. Sasmi gets himself a double kill. Shivi gets one, all in the hands of winner in a 1v3 situation right now. And there you go, MF God काफी आराम से winner को take down कर दिया है and that is the 6th round for वियर्ड स्पोर्ट्स। आप देखा है कितना अच्छा एग्जीक्यूट प्लान किया था ना शॉफ स्पोर्ट्स ने। शिवी ने ऑर्बिटल स्ट्राइक डाला था
काफी अच्छा डैश आया था, बट एक जगह गलती हो गई कि स्टॉर्म को पहला एंट्री मिल चुका था ऑलरेडी। स्टॉर्म ने एक पिक निकाल लिया एंड आई वुड अप्रिशिएट शिवी का जो रोलिंग थंडर था थोड़ी देर के लिए शेक कर चुका था। फॉर अ सेकंड आई फेल्ट कि दिस इज द टाइम टू जस्ट एग्जैक्टली पुश इन, क्योंकि ही वाज एबल टू गिव द इम्पैक्ट ऑफ द रोलिंग थंडर, बट अनफॉर्चुनेटली वो पिक नहीं निकल पाया। यूज द अल्ट, अनफॉर्चुनेटली नॉट विनिंग द राउंड। नाउ अगेन आई थिंक कुछ स्ट्रैटेजी में चेंज करके भी बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो एंटायर स्प्लिट स्कैटर प्ले चल रहा है। फिर से एक बार सैसमी एक पिक ले चुके हैं, शिवी हैज बीन टेकन डाउन। बैड लव यहाँ पर गराज व्यू लेकर बैठे जहां से विनर को टेक डाउन किया गया, और यहाँ पर गराज विंडो से एमएफ गॉड he could have taken the pick, but he is going for an entire global rotation. There he is successfully able to take not only one but two, and he will also heal himself. What a play! फिर से एक बार एक flawless round जाएगा VALORANT Esports के हाथों में, और तन्वी I think the fate is getting written one step closer, and I think ultimately एक सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव विक्ट्री काफी क्लोज नजर आने लग गई है VALORANT स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि द वे दे आर प्लेइंग कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही। स्टैक्ड एंट्री वाली काम नहीं कर रही, स्प्लिट एंट्री वाली काम नहीं कर रही, स्कैटर्ड एंट्री वाली काम नहीं कर रही। आई डोंट नो व्हाट एल्स डज नशा ऑफ esports have into their pockets or in the sleeve। फिर से एक बार एक पुश देखने के लिए मिल रहा है, एक्सेप्ट फॉर वन प्लेयर जो अपनी टीम से काफी ज्यादा दूर जा रहे हैं एंड स्प्लिट हो चुके हैं, एंड द स्प्लिट इज नॉट गोइंग टू पे देम रिवॉर्ड्स। बैड लव यहाँ पर वेट कर रहे हैं एंड ही इज ऑलरेडी प्लेस्ड हिज crosshair. Yes. Well, not only that, Sasmi immediately gets spotted, but bad love. It's not going to take him much time to take one down. With one player going down, it's a 4v5 situation, and unfortunately, Amir Sain's position has been revealed away, and so does the lockdown will go, which puts us in a 3v4 situation right now. Well, currently it's going to be a B push coming in, but MF God, he's already a step ahead of what Nasha Esports is doing. Gets traded. A 3v2 situation right now. Hawks has beautifully used the Astra's divide. He's going to be getting the bomb planted down. It's a long plant, by the way. Interestingly, we can say that it's a 3v2. And Rio might have a real good shot at winning this round if they go for the proper push right now. Yep, वो लोग बैक साइड पुश कर रहे हैं, एंड ये देखो विनर यहाँ पे गराज से पुश कर रहे हैं, एंड आई गेस विनर विल गेट स्पॉटेड आउट ओवर द, बट फिलहाल के लिए उन्होंने गलत जगह स्प्रे कर लिया है, एंड हमारी शॉटी के साथ हमारे जेट एंट्री कर रहे हैं, बट शॉटी कम में नहीं आ रहा है, बट ऑफ जरूर आएगा। मतलब विनर के ऊपर किल निकालते हुए रियो ने होक्स के ऊपर निकाल लिया, एंड दैट वाज अ ब्यूटीफुल रीडिंग। यहाँ पे विनर का पुश काफी गलत चीज था, मुझे लगा तानिया, बिकॉज अगर विनर थोड़ा और सब्र कर लेते, थोड़ा और वेट करने के बाद पुश कर देते, तो मे बी उनको आराम से किल मिलते थे। उन्होंने पैनिक मोड में ना ही उन्होंने एक किल निकाल पाए, इन टर्न वो खुद मर चुके थे, विच गेव अ वेरी गुड चांस फॉर VALORANT Esports टू टेक ओवर द राउंड। Winner created a very good plan because the way Astral Form was created, spike plant ho chuka tha, everything was under their dominance, under their control, but going and revealing and exposing changed the situations entirely। मुझे लग रहा है थोड़ा सा chaos create कर गए, थोड़ा सा panic में आ गए, जिसके चलते वो खुद decide नहीं कर पा रहे थे आगे जाना भी है या नहीं। फिर से एक बार विनर की ओर से यहाँ पर हम नेबुला देख पा रहे हैं जो ब्लॉक कर रहा है व्यू। MF गॉड के लिए स्प्लिट प्ले है, लेकिन बैड लव के लिए किसी का भी रोकना, कुछ भी करना इज एवरीथिंग इज इजी। हंटर्स फ्यूरी यूज की जा रही है, देखेंगे हम क्या यहाँ से कोई नॉक या किल कंफर्मेशन सिक्योर किया जाएगा। सैसमी बाहर आ चुके हैं और यहाँ पर हम देखेंगे 1v1 ड्यूएल होते हुए वंडर वर्सेस सैसमी। रिकॉन का काफी अच्छा यूजेज, बैक स्टैब होते हुए रियलाइज कर गए कि यहाँ पर एग्जैक्टली प्लेयर वेट करें, दैट टू बैड लव विद द स्नाइपर। नोबडी वुड वांट टू फेस बैड लव कि आप सामने से जाओ, टेक डाउन हो जाओ। अभी के लिए MF गॉड विनर को डाउन कर चुके हैं। शिवी भी वेट कर रहे हैं बी साइड पर। वी डोंट नो कि क्या प्लान बन रहा है, क्या बी प्लांट होने वाला है, बिकॉज ही इज होल्डिंग वेरी क्लोज टू अ बी साइड। एंड यस, आ चुके हैं वंडर, यहाँ पर बी प्लांट दे देंगे, लेकिन फ्रॉम द शैडोज यूज किया गया है। लेट्स सी क्या यहाँ से पिक्स और किल्स निकालना इजी होगा। एंड देयर वाज अ कंफ्यूजन देयर, क्योंकि फ्रॉम द शैडो यूज करके इमीडिएटली सी साइड में गॉड जा चुके थे। बहुत ही बढ़िया टाइमिंग का रिकॉन था, बहुत ही बढ़िया टाइमिंग का फ्लैश भी था। यहाँ पे सैसमी ने डबल किल निकाल लिया, एंड वो तीसरे पे देख रहे थे, एंड लास्ट किल मिल चुका है।
That run it back has definitely costed them 2 kills. And फिर से एक बार काफी अच्छा retake Weird Esports के हाथ में जाते हुए, which puts us that 9 rounds for Weird Esports and only 1 for Nasha Esports. पहला मैप एसेंट काफी बेटर लग रहा है मुझे. जैसे कि मैंने बोला, Weird Esports का बेस्ट मैप था ये हेवन, and there was no chance that Weird Esports was giving away the lead for Nasha Esports. वैसे यही बात पे बात करते करते हम फर्स्ट हाफ के लास्ट सेकेंड राउंड पे तानिया, एंड जहां से डोमिनेशन मुझे Weird Esports से दिख रहा है, मुझे लग नहीं रहा है कि नशा ऑफ Esports कमबैक कर पाएगी. बहुत ही they are like a little more than late to just set up and create a new plan for now. Let's hope they are able to. And bad luck यहाँ से फिर से एक बार स्नाइपर के साथ सी लॉन्ग कर रहे हैं. आफ्टर शॉक आया हुआ है. निबिला का काफी अच्छा यूजेज साइड में लेकी गई है, सो अवॉइड. फिर से एक बार रोलिंग थंडर का यूजेज एंड इम्पैक्ट आया हुआ है. दिस इज द एग्जैक्ट टाइम के ड्यूलिस्ट को पुशिंग करना चाहिए. होक सेंट्री ले चुके हैं. was able to take down MF4 but not any further. यहाँ पर रैश की सेफ्टी हो चुकी है. 3 पिक्स निकाल चुके हैं. Is it going to be the fourth one? एक अच्छा फ्लैश देखने को मिला है केजे को. डैमेज एंड इट इज गोइंग टू बी 2v2 ऑफ देयर. फिर से डैमेज किया गया है एंड यहाँ पर अमाया काफी अच्छी तरीके से उसे रिड्यूस करके 1v1 पर लेकर आई. Shock bolt was enough to delay the plant or maybe just stop. बहुत ही अच्छा प्ले है, लेकिन अभी नशा Esports राउंड भले ही नहीं निकल रहा, but at least they are not being taken down 5-0 के स्कोर से. इस बार वो प्लेयर्स को रिड्यूस करके राउंड लूज कर रहे हैं, तो एक परफॉर्मेंस में लेवल अप जरूर हुआ है. एंड 10 राउंड्स ऑलरेडी इनटू द फेवर ऑफ Esports. That was a very very sick round coming in from Weird Esports. By the way, Sasmi ने काफी बढ़िया होल्ड किया था साइड को. He almost got himself a triple kill the last round, but who came at the end? That was Rio man. He went totally crazy. बहुत ही बड़े से उन्होंने शॉकडाउन का इस्तेमाल किया था. उन्होंने डबल किल निकाला. वो राउंड जो था बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था रियो के हाथ से. एंड रियो अभी फिलहाल के लिए हाथ में ऑप पकड़े हुए. इट्स अ डबल ऑपरेटर सेटअप एंड नॉट एवरी टाइम बैड लव, नॉट एवरी सिंगल टाइम. फोक्स ने काफी अच्छा एंट्री निकालते हुए उनको पहला एंट्री मिल चुका है. केजे इज स्टैक डाउन टू वेरी लो HP. फिलहाल के लिए अमेया को लग रहा है कि वो एंट्री कर पाएंगे मिड बॉम्ब साइड, बट फोक्स इज कॉल्ड इन फॉर अ रोटेशन. Sasmi got spotted over towards the A long, and right now Rio gets taken down with the op. That means the man advantage is definitely not looking good for Weird Esports. 2-man down, Nasha of Esports with a two-player advantage. Maybe it's not bad after all. तानिया, मुझे लग रहा है कि मुझे काफी अच्छा फीलिंग आ रहा है कि ये राउंड फॉल बैक कर सकते हैं नशा Esports और ये राउंड उनके हाथ में ले सकते हैं. एक अच्छी साइट एंट्री भी मिल रही है और यहाँ पर स्पाई कैम्प के जरिए दे हैव रियलाइज सी से यूज होगा. न्यूरल शिफ्ट का भी यूज कर लिया गया है. दे डोंट इवन वांट टू गिव अ सिंगल राउंड. एमएफ गॉड यहाँ पर एक स्मोक डालने की कोशिश. अलार्म बॉट ट्रिगर हो चुका है. होप स्नाइपर के साथ अभी भी रेडी है. इज एबल टू टेक डाउन वन एंड शॉटी फॉर द क्लोज रेंज. दैट इज व्हाट यू वांट. एंड नाउ पेशेंस चाहिए. लेट्स होप थोड़ा सा पेशेंस दिखा दे. ये राउंड डेफिनेटली जा सकता है इनटू द फेवर ऑफ नशा Esports. एंड लास्ट मैन रिमेनिंग. आई डोंट नो क्या प्लान्स रहेंगे उनके, वो क्या करना चाहेंगे एग्जैक्टली, क्योंकि अभी के लिए ऑल दैट सासमी एंड होप की ओर से फाइनली पुराना प्ले ऑफ पैटर्न जो हमने एसेंट में देखा था वो देखने के लिए मिला है. एंड गेटिंग द सेकंड राउंड एज अटैकर इनटू देयर फेवर. साइड स्विच हो चुकी है, रोल स्विच हो चुके हैं. एज अ डिफेंडर ऑलरेडी 10 पॉइंट्स अर्न कर चुके हैं बहुत डिफिकल्टी के साथ. अब सिर्फ 3 पॉइंट्स का सफर बाकी रहेगा. लेट्स सी एज अ डिफेंडर्स कैसे आगे जाएंगे, बिकॉज दे हैव गॉट अ कंट्रोलर एस्ट्रा, दे हैव गॉट अ सेंटिनल केजे. लेट्स होप कि दे आर एबल टू गिव अ गुड कंट्रोल. पर्टिकुलरली अगर हम बात करें स्टॉर्म एंट्री कैसे लेना चाहेंगे, दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ माय पर्सनल क्वेश्चन. बिकॉज आप सेंटिनल अच्छे बन सकते हो ऑन द डिफेंडिंग साइड, लेकिन ऑन द अटैकिंग साइड प्ले पर थोड़ा सा प्रेशर रहेगा. बहुत सही बोला आपने. फिलहाल के लिए तो हमने फर्स्ट हाफ खत्म कर चुके हैं. सेकंड हाफ के आगे चलते हुए
10-2 स्कोर है। वियर्ड स्पोर्ट्स के पास 8 राउंड का लीड है एंड फिलहाल शेरिफ के साथ कुछ वंडर्स तय करने की कोशिश कर रहा है। फोक्स ऑलरेडी एंट्री निकाल चुके हैं रियो के ऊपर। दैट मीन्स नशा ऑफ स्पोर्ट्स के पास अभी एक प्लेयर का एडवांटेज है। लोग काफी पेशेंटली वेट कर रहे हैं। उन्होंने एक और किल निकाल लिया। डैश करते हुए वापस साइड में आ चुके हैं। वो बच गए इवन आफ्टर गेटिंग डाउन विथ 15 HP लेफ्ट इन द हैंड्स। शिवी एक और एंट्री लेते हुए अ 2v5 सिचुएशन। And finally, maybe it's time that Nasha of Esports rise and shine. Now that finally got their chance. दोनों बैड लव और साइफर काफी लो HP पे। बैड लव तो 50 HP पे बैठे हुए हैं। शिवी, you have to check each and every corner. Bad love didn't know he was coming. Shivi gets one. Storm immediately takes down the trade. साइफर के हाथ में अभी के लिए केज है। केज एक्टिवेट करते हुए and look at who is at A shot. I mean, Cypher completely had no idea कि विनर उधर बैठ के वेट कर रहे थे स्टॉर्म को पुश करने के लिए एंड काफी अच्छा राउंड निकाला नशा ऑफ स्पोर्ट्स ने। काफी अच्छा एंड मच रिक्वायर्ड राउंड निकाला विदाउट लूजिंग अ सिंगल प्लेयर। इंडीड दे डिड लूज वन प्लेयर एट द वेरी एंड ऑफ द टाइम और वहां तक दे हैव ऑलरेडी रिटन एक पेज लिखा जा चुका था कि ये राउंड हम लेकर चले जाएंगे। अगर हम बाई की बात करेंगे तो वी स्पोर्ट्स टोटली पिस्टल नो शील्ड पर जा रही है, सेविंग फॉर द नेक्स्ट राउंड एंड काफी अच्छा लीड है। अगर ये राउंड चला भी जाएगा वी आर गोइंग टू गेट मच मोर इनटू द नेक्स्ट राउंड। इको स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। होप्स एक बार फिर से हमें मार्शल के साथ नजर आएंगे, देखेंगे क्या रहेगा। अभी के लिए एक शॉक डाला गया है बट दे डिड नॉट इम्पैक्ट एनीवन एज ऑफ नाउ। शिवी बी साइड पर होल्ड कर बैठे हुए हैं, देखेंगे क्या करना चाहेंगे एग्जैक्टली। सामने ही 4 प्लेयर्स हैं एंड आई थिंक ये जो नब्यूला का यूज था उनके अगेंस्ट यूज कर लिया गया। 2 पिक्स निकाल लिए एंड हाउ मेनी मोर टू गो। टीम सपोर्ट इमीडिएटली आ गया है एंड नशा स्पोर्ट्स तनवी एक अटैकर साइड पे नया प्ले दिखाते हुए नजर आ रहे हैं एंड अगर इसी तरीके से खेलते गए विक्ट्री कैन बी क्लोज डाउन। यस एंड लुक्स लाइक इस बार काफी स्मूथ जा रहा है विक्ट्री। बैड लव विद अ क्लीन डबल हेड शॉट विद द शेरिफ। नाउ इज वेटिंग अगर कोई स्मोक के थ्रू पुश करने वाला है कि नहीं। वेल विनर तो हाथ में स्पेक्टर लेके बैठे हुए हैं, मिड पे देख रहे हैं, मिड विंडो पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। वाओ, दैट्स अ वेरी नाइस वे टू शोकेस द स्किन्स बाय द वे। या तो स्किन्स की मेला पड़ी हुई है तानिया। स्किन्स की तो बहुत अच्छी तरीके से विजुअल्स नजर आ रहे हैं लेकिन विनर की नजरें सिर्फ लास्ट मैन स्टैंडिंग बैड लव पर थी जिसको एलिमिनेट कर दिया गया है एंड काफी अच्छी तरीके से ऑन द डिफेंडिंग साइड परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी द 4th राउंड इनटू देयर फेवर्स। सिर्फ 2 राउंड्स निकाला था ऑन द अटैकिंग साइड एंड अब एज अ डिफेंडर 2 कॉन्सेक्यूटिव निकाल चुके हैं बट ऑन द कॉन्ट्ररी जो पिछला राउंड था वी स्पोर्ट्स का वो एक पिस्टल राउंड था, अच्छा खासा सेव कर लिया गया है। पूरी तरीके से एआर्स देखने को मिल रही है वी स्पोर्ट्स की ओर से। अब देखेंगे कि क्या स्ट्रैटेजिकल प्ले हमें फिर से एक बार नशा ऑफ स्पोर्ट्स से देखने के लिए मिलेगा। सैसमी हाईएस्ट फ्रैगर रहेंगे बीइंग द ड्यूलिस्ट। ही इज डूइंग वेरी गुड इन दिस पर्टिकुलर प्लेस। आफ्टर शॉक डाला गया है, इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं था। होक्स यहाँ पर क्रॉसहेड सेट करके बैठे हैं बट कुछ भी व्यू यहाँ पर नहीं मिलेगा। केज ट्रिगर किया गया है। दे आर एंटिसिपेटिंग ए साइड एंट्री। लिटिल डू दे नो कि बी पर ऑलरेडी पुश किया जा चुका है एंड बी पर प्लेयर्स रोटेशन लेकर रियलाइजेशन कर रहे हैं एंड ए साइड बिल्कुल भी वेकेंट हो चुकी है। दिस इज द एग्जैक्ट टाइम जब डिसाइड किया जा सकता है रियो ए पर लर्न करने के लिए जा सकते हैं बट लेट्स सी आर दे गोइंग टू गो अहेड। वेल बैड लव हैड डिफरेंट प्लान्स, पिक कर लिया गया है होक्स को। वेल प्लान्स तो काफी आराम से बदल रहे हैं बट क्या अभी भी चांस है नशा ऑफ स्पोर्ट्स को कम बैक करने वियर्ड स्पोर्ट्स के सामने? वो क्वेश्चन का आंसर अभी तक मिला नहीं है हमें। वंडर ऑन द अदर हैंड स्पेक्टर के साथ ही इज मेकिंग अ डिफरेंस। ही हैज ऑलरेडी गॉट द एंट्री, फर्स्ट किल। सैसमी गेटिंग टैग डाउन विद a lot of shock darts over there. She was trying to push over towards the A longs. Well, Bad Love को already A shot का कंट्रोल मिल चुका है। अगर Bad Love को A bomb साइड का कंट्रोल मिल गया तब तो काफी मुश्किल होने वाला है। ये देखो Bad Love is almost pushed up towards the A bomb side. And on the other hand, MF Code काफी अच्छा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हैं। उन्होंने C का कंट्रोल ले लिया। स्पाइक C पे प्लांट हो रहा है और Bad Love सोच रहे कि वो A bomb साइड से बैक स्टैब करे। Spike down, C. एक प्लान अच्छा क्रिएट किया जा रहा है, देखेंगे मौका मिलेगा या नहीं। सैसमी की ओर से एज अ फीनिक्स काफी अच्छा प्ले हमें देखने के लिए मिल रहा है एंड यहाँ पर
कंकशन की कोशिश एंड अनसक्सेसफुल रहा बिकॉज व्हाटसोएवर यू विल से स्पाइक प्लांट करने का मौका नहीं दिया गया एंड अगेन ये एक डिफेंडर साइड पर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस नजर आ रही है फ्रॉम द साइड ऑफ नशा ऑफ esports the way they are going ahead. I think they still stand a chance if they continue to do so because Ascent, we know they could not achieve what they wanted to, but on the map of Haven here they are the defenders now and defending very very well. On the attacking side spike plan करने का मौका नहीं मिला, eliminate हुए थे तो भी 5-0 से eliminate हुए थे, प्लेयर्स को पिक किए बगैर eliminate हुए थे, लास्ट क्लास में चेंज हुआ था. होक्स इस बार मिड विंडो पर फोकस दे रहे हैं, बी विंडो पर कोई भी नहीं है एंड एक स्नीकियर अप्रोच रखा जा रहा है. ए साइड पर एंट्री वेल यहाँ पर एम्प्टी नहीं है, वंडर वेट कर रहे हैं, ड्रोन का यूजेज किया गया, स्पॉट भी कर लिया गया है लेकिन वो ड्रोन का अच्छी तरीके से मिसयूज किया गया. बैड लव वहां पर वंडर को टेक डाउन कर देंगे एंड शिवी को भी टेक डाउन इमीडिएटली आउट किया गया है. 4 वर्सेस 3 की सिचुएशन, स्पाइक प्लांट हो रहा है इस बार. या स्पाइक तो प्लांट हो चुका है एंड जेट काफ़ी ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाई है होक्स बिकॉज ऑफ द शॉट गन ही हैड. एंड स्टॉर्म फिलहाल के लिए तो अंडर हेवन बैठे हुए हैं. बैड लव इज प्लेइंग अ वेरी क्लोज एंगल टुवर्ड्स सी टीम and winner is going to check each and every corner and that was a very bad timing for Bad Love to come out of his nest. And the second he came out, he has been taken down. Amesai and winner are looking for a very very strong retake over here. They're trying to get sprayed, but in turn it's going to be Storm who gets them a double sheriff, put straight into their head, and that's finally a thrifty round and a very beautiful round for VALORANT Esports. अच्छी बात है VALORANT Esports फॉल बैक कर रही है, बट सबसे अच्छा तो मुझे नशा Esports लग रही है. उन्होंने कोशिश किया जितना हो सका है. डिफेंडर्स पे उन्होंने आई थिंक बैक टू बैक अभी 3 राउंड निकल चुके हैं. एंड फर्स्ट राउंड VALORANT Esports का एज अटैकर क्लियर आउट हो रहा है एंड इस बार फिर से सारे के सारे प्लेयर्स एआर के साथ MF गॉड हमें स्पेक्टर के साथ नजर आएंगे. ऑन दी अदर हैंड इकोनॉमी क्रैश हो चुकी है जिसके चलते हम बाई नहीं देख पा रहे हैं. एक वैंडल जरूर नजर आई थी. स्टॉर्म यहाँ से गराज डोर से एक केज डाला गया है, लेट्स सी क्या वहां से एंट्री इजी होगी. होक्स मिड पर हमेशा वेट करते हुए नजर आए, चाहे मिड विंडो होगा या बी साइड टोटली होगी. और एक स्कैटर्ड प्ले ड्रोन का यूज किया गया है, देखेंगे क्या इंटेल मिलेगा इधर. बैड लव ड्रोन को फॉलो करते हुए जा रहे हैं. साइड क्लियर at least for now it does look clear, but I'm very sure of it is not. And look at what the player is up to. MF God साइट सी पर पहुंच रहे हैं एंड फिर से एक बार एक स्प्लिट स्ट्रैटेजी इधर नजर आ रही है फ्रॉम नशा Esports. इसका मतलब प्लांट नहीं करने देना इज द की टू सक्सेस एंड आई एम वेरी श्योर ऑफ विनर यही कोशिश करेंगे नेबुला का यूज करके कि साइट में एंट्री जितनी हो सकती है डीले हो जाए. यस अभी 1 मिनट का टाइम अभी भी बाकी है. 50 seconds to go for them to get the bomb planted down and they already know the position of where exactly winner is standing. Winner luckily manages to get to the other side of the coast, but Amayasain is standing very close over towards the long. उनको रोटेशन करना पड़ेगा या तो कमिट करना पड़ेगा. मेरे ख्याल से उनको कमिट करना पड़ेगा. 30 सेकेंड बचे हुए एंड हमारी run it back आते हुए he's making his way very aggressively to the bomb side. Storm gets 1 and Sasmi he almost managed to get 1 kill but काफी क्लोज एंगल पे खेल रहे थे. अमय उनका पोजीशन तो रिवील हो चुके हैं. Storm gets a double kill. Bad Love gets 1 in no time. आखिरी 30 सेकंड में पूरा गेम चेंज कर दिया है VALORANT Esports ने. उन्होंने कमिट किया है सी बॉम्ब साइड को और काफी अच्छे तरीके से नशा Esports को डिफीट कर चुके हैं. अभी हम आ चुके हैं मैच पॉइंट पे. तानिया, I really want to know if this match point is going to let Nasha Esports do a comeback or maybe it's just going to be another victory for VALORANT Esports, which means we've already got our first finalist. We are going to get the first finalist for sure. देखेंगे VALORANT Esports क्या यहाँ पर जाने देंगे ये राउंड विथ 2 अल्ट रेडी, रेडी है और यहाँ पर ऑलरेडी साइड एंट्री पर डिले करने के लिए वंडर ने हंटर्स फ्यूरी का यूज कर दिया गया. अनफॉर्चुनेटली वो ज्यादा काम नहीं आया, हल्का सा डैमेज जरूर गया था. इंडीड यहाँ पर 2 प्लेयर्स को पिक कर लिया गया है एंड इट इज गोइंग टू बी 3 वर्सेस 5. फिर से एक बार एमएफ को सी साइड पर एक पुश देते हुए नजर आएंगे लेकिन यहाँ पर हमें वेट कर रहे हैं. गार्डियन
का यूज देखने के लिए मिल रहा है और लॉकडाउन का बिल्कुल सही टाइम पर यूटिलाइजेशन, टर्निंग इट टू अ 3v3 एंड टोटली ब्लॉकेज ऑफ एंटरिंग द साइड सी। और यहाँ पर रोटेशन लिया जा चुका है, देखेंगे एंट्री कैसे रहेगी। लॉकडाउन को ब्रेक किया गया, बैड लव एक पुश देते हुए, दिस वाज मच रिक्वायर्ड, रोलिंग थंडर, बट स्टिल ज्यादा Spike इफेक्ट planted. नहीं होगा। One स्पाइक प्लांट enemy हो चुका remaining. है, देखेंगे आगे क्या प्लान्स रहेंगे, क्या ये राउंड अकेले स्टॉर्म निकाल पाएंगे। वेल लगता तो ऐसा नहीं है, बिकॉज शिवी ने ऑलरेडी स्टॉर्म को नेल कॉफिन में डाल चुका है, तो उसका मतलब ये होता है कि वियर्ड स्पोर्ट्स इज स्टिल getting a little delayed to their victory. Nashafi Sports getting the 6th round back, and that was a very good round by Shivi. 3v2 situation जा रहा था जब Jet got concussed and he went for a double up draft, but Shivi was in the bright side. He got that kill, and now we are looking at 6th round on board for Nasha and 12th for VRD Sports. Well, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा VRD Sports को, एक राउंड काफ़ी है उनको पहला फाइनलिस्ट बनने के लिए। एंड जिस तरीके का परफॉर्मेंस इस बार बैड लव से देख रही हूँ, काफी इंप्रूव हुआ है तानिया पहला मैप पे वो बॉटम ऑफ द लीडर बोर्ड पे बैठे हैं, अभी वो ऊपर बैठे हुए 22 किल्स के साथ तानिया। और यहाँ पर साइड एंट्री भी ली जा चुकी है फ्रॉम द शैडो यूज करके, हेवन पर एंट्री पिक भी ले लिया गया है। एमएफ गॉड हर बार एक स्नीकर अप्रोच रखते हैं, बट लेकर गए हुए हैं, turning it to advantage of numbers into the hands of VRD Esports as a very closer step towards being the first finalist and first grand finalist to mention it. And let's see, rotation में थोड़ा सा डिले देखने के लिए मिल रहा है, क्या हो पाएगा या क्या नहीं, दैट टाइम विल शो। लेकिन अभी के लिए आउल को भेजा गया, इंटेल देने के लिए इंटेल मिल चुका है, विनर इज स्पॉटेड और यहाँ पर स्टॉर्म ने एक पिक ले लिया है एंड विनर को ट्रेड आउट करके यहाँ पर बैड लव अभी भी हाईएस्ट ट्रैगर रहेंगे और अपने आप के लिए फर्स्ट स्लॉट ग्रैंड फाइनलिस्ट की फिक्स कर देंगे। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस, बहुत ही अच्छा शो VRD स्पोर्ट्स की ओर से पुट अप हुआ। एक कमबैक स्टोरी देखने के लिए मिल रही थी नशा स्पोर्ट्स के लिए, लेकिन VRD स्पोर्ट्स मौके नहीं देना चाहते थे। दे वर वेरी श्योर ऑफ, चाहे अर्ली यूज करना पड़े अल्ट का, कुछ भी करना है, बट वी वांट टू मेक श्योर दैट वी प्लांट द स्पाइक, देन देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप देम। Well, lucky that VRD Sports started off on a good note in the map of Ascent. बल्कि जब वो अटैकर्स में शुरुआत किए थे, उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस रखा था एंड सेम मोमेंटम उन्होंने हेवन पे लाया था, एंड हेवन उनका असेंट से भी ज्यादा मिस्ड मैप था। सो आई डोंट थिंक दे हैड अ डाउट ऑन देमसेल्फ, दे वर डेफिनेटली विनिंग द मैप ऑफ हेवन, एंड दैट वाज अ वेरी वेल प्लेड मैच कमिंग इन फ्रॉम VRD Sports and Ashaf Esports. नाइस ट्राई बडीज अगेन, उन्होंने डबल डिजिट तक नहीं पहुंच पाए, बट उन्होंने कंपटीशन तो जरूर दिया है, प्रेशर तो जरूर दिया है एक न एक पॉइंट पे, बट देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट Shop Esports should be working on their team, especially the push, the timing has affected a lot between themselves. As we finish, I guess, our first match of the day, that is Nasha Esports versus VRD Sports, and हमारी VRD Sports जीत चुके हैं, and they are going to be the first finalists for tomorrow's grand finale of Asus Rog Valorant Showdown series. And now we have another semi-finale as well. But before we jump into the other semi-finale, I have a lot of post-match analysis to talk about, Tanya. Absolutely, we do have a lot to talk about, particularly of the map of heaven, जहाँ पर रीटेक करने के मौके कम दिए गए थे VRD स्पोर्ट्स की ओर से। एंड when we were when they were on the attacking side as well, Tanvi, 30 seconds में भी they have successfully finished a round. No matter planting the bomb, it's okay, we don't plant the spike, हम श्योर करेंगे कि 30 seconds में entire squad को eliminate करके राउंड हमारे फेवर में लेकर जाएंगे। तो एक किल हंग्री टीम थी एंड we did not see the greed coming in. एक किल हंग्री होना और किल ग्रीडी होना, दोनों में डिफरेंस था, और ये डिफरेंस को काफी अच्छी तरीके से समझदारी में रखकर प्ले किया गया, स्प्लिट प्ले भी किया गया था। हमने देखा था रीटेक लेते हुए भी, एंड आई थिंक दे डिड एवरीथिंग दैट वाज रिक्वायर्ड, क्योंकि जब आप ऑन दी अटैकिंग साइड इतने ज्यादा राउंड निकाल लेते हो, तो बीइंग द डिफेंडर इट टर्न्स इनटू अ मैसिव, एक डिफिकल्टी क्रिएट कर चुके थे, एंड इट वाज अ मैसिव ट्रबल फॉर द कमबैक फॉर नशा स्पोर्ट्स। और वो स्टोरी लिखने की कोशिश करने में राउंड्स कहाँ स्लिप हो गए वो पता ही नहीं चला। यस, आपने सही बोला है। अभी तो मैं एक ही चीज़ के लिए इंतज़ार कर रही हूँ कि वो मैप वाइज़ स्कोर कार्ड के लिए, कि जिसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ किल्स थे।
आपको क्या लगता है? मुझे तो होक्स लगता है अभी भी। नहीं, मुझे बैड लव लगता है एक्चुअली। बैड लव पिछला मैप में उन्होंने परफ़ॉर्म किया था ही नहीं, बट ये मैप में उन्होंने काफ़ी धूमधार परफ़ॉर्मेंस दिखाई है। 22 किल्स था द लास्ट टाइम आई सॉ हिज स्कोर बोर्ड। काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस किया था। मुझे भी आई वुड सेकंड दैट बैड लव ही लग रहे हैं हाईएस्ट ट्रैगर। आई वाज़ एक्सपेक्टिंग मच मोर फ्रॉम स्टॉर्म एज़ वेल। ख़ैर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया स्टॉर्म ने। लेकिन जो पिछले मैप में दिखाया ना, अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पर हमें थोड़े से शेकी नज़र आ रहे थे। दो दे हैव वन द स्लॉट ऑफ ग्रैंड फाइनलिस्ट, बट द वे स्टॉर्म प्लेड इनटू द प्रीवियस मैप एज़ अ साइफर ही कुड नॉट गो एज़ स्ट्रांग एज़ ही वाज़ एज़ अ केजे। तो एक परफॉर्मेंस अच्छा था, डोमिनेटिंग प्ले भी था, but comparing his play with the previous one to here, definitely in the map of Ascent, he was outshining everybody else. But coming back right now, एक bad love की positioning जो थी सी लॉन्ग की, काफी अच्छी तरीके से कैप्टिवेट करके बैठे हुए थे, क्योंकि जब भी सी लॉन्ग से प्लेयर्स आ रहे थे, was able to pick sometimes 2, sometimes 3, and sometimes यहाँ पर डैश का यूज करके हमने फ्रेंजी से भी पिक लेते हुए देखा when he was using the combo of मार्शल एंड फ्रेंजी। तो एक अच्छा परफॉर्मेंस था ओवरऑल बैड लव की ओर से। And this time the way he was going ahead with no stops at all, he had to be the highest fragger. Here we go ahead with the map scoreboard for the map of Heaven, and it was definitely Nasha of Esports versus Weird Esports. And over here Shivi himself had a total of how many kills? Well, he had first blood to be precise, and 17 kills and 17 deaths. Yes, that was a well played scoreboard, by the way. As I was speaking, Bad Love के पास है 25 kills, 9 deaths and 1 assist, which means his KD is more than 2 right now. आराम से 2 से ज़्यादा KD हो गया होगा। एंड जब बात आती है हमारी नशा ऑफ स्पोर्ट्स से, it's Shivi who's standing with the highest number of kills, 17 kills, 17 deaths and 1 assist, perfectly balanced of 1 kill death ratio. Or Sasmi with 19, Storm with 18, MF God with 12, and Rio with 4. Rio did underperform a lot in this map, but I guess उनके teammates इतने kills ले चुके थे कि कुछ बचा ही नहीं था रियो के लिए। मुझे तो ऐसे ही लग रहा था। और ये पर्टिकुलर राउंड में सैस्मी की ओर से भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस था। इनटू द फर्स्ट हाफ वी डेफिनेटली मेंशन्ड इट एज वेल कि सैस्मी हाईएस्ट ट्रैगर हैं, एंड जब दो डेडली ड्यूओ क्रिएट कर देते हैं ड्यूलिस्ट का, तो ओपोनेंट्स के लिए एक रिस्कियर अफेयर बन जाता है। एंड एग्जैक्टली वही किया सैस्मी और बैड लव ने। डेडली ड्यूओ ऑफ ड्यूलिस्ट क्रिएट कर लिया, जिसके चलते दे वर नॉट अलाउड टू प्लांट द स्पाइक, एंड एक इतना अग्रेसिव पुश के साथ खेलते हुए नजर आए थे कि स्पाइक प्लांट करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। दे वर जस्ट वेकेटिंग द एंटायर साइड एंड विनिंग द राउंड्स। थोड़ा सा डिफिकल्टी था इन द मैप ऑफ एसेंट, लेकिन हेवन एक फ्लॉलेस राउंड रहा, जहां पर ऑन द अटैकर साइड 9 राउंड्स निकाल लिए गए थे। तो ऑल दे हैड टू डू वाज गेट 3 राउंड्स फॉर देमसेल्व्स, एंड दे वर सक्सेसफुली एबल टू गेट अल्टीमेटली, जहां पर एक कमबैक देखने के लिए मिला जरूर था नशा ई स्पोर्ट्स से, जहां पर एज अ अटैकर एक फर्स्ट राउंड लाने के लिए ही वियर्ड ई स्पोर्ट्स को काफी टाइम लग गया था। दैट वाज द थर्ड राउंड। So ultimately, Nasha Esports definitely tried to give the best of the competitions, but Weird Esports had their plans already written कि हम as a duelist बहुत ही strong perform करेंगे और किसी को भी खड़े रहने का मौका नहीं देंगे। So as a Sentinel, Storm को अगर अकेले को analyze करना है, he was a perfect KJ, but he as a cipher, all he did was give a good control over site and delay the entry, where he was successful enough to not allow a easier spike plant for Nasha Esports. यस, वेल नशा स्पोर्ट्स उन्होंने ट्राई तो किया था, बट इट वाज जस्ट नॉट गुड इनफ अगेंस्ट वियर्ड स्पोर्ट्स। वेल वियर्ड स्पोर्ट्स ऑन द अदर हैंड, दे वेर मेकिंग द मोस्ट ऑफ इट वाइल दे कैन। तानिया, आई लव द वे उन्होंने कितना एग्रेसिवली अपना परफॉर्मेंस दिया हुआ है, कितना एग्रेसिवली उन्होंने दिखाया, कितना एग्रेसिवली उन्होंने मेंटेन किया है पुश को। वो काफी अच्छा तरीका था, एंड मुझे लगता है कि इट्स गोइंग टू बी शिवी वर्सेस बैड लव इन द प्लेयर टू प्लेयर मैप वाइज, प्लेयर टू प्लेयर, हेड टू हेड। वेल एक जी हाँ। और चीज मुझे अजीब लग रहा है कि नशा स्पोर्ट्स और बेहतर कर सकती थी अटैकर्स में। वो बस 2 राउंड्स लिए थे अटैकिंग साइड में, बल्कि जितना भी उनका अटैकिंग खराब हो, फिर भी वो 2 राउंड से ज्यादा निकाल ही सकते थे तानिया, मेरे को लगता है।
यस, निकाल सकते थे बट मौका नहीं दिया जा रहा था। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यहाँ पर जो ड्यूलिस्ट का कॉम्बो क्रिएट हो चुका था, वो चांस नहीं दे रहा था। एंड इफ यू कंपेयर द डिफ्यूजल्स एज वेल, यहाँ पर नाशा ई स्पोर्ट्स ने सिर्फ एक स्पाइक डिफ्यूजल किया हुआ है, बट ऑन द अदर हैंड ऑन द अटैकर साइड, अगर हम डिफेंडर साइड अगर हम देखते हुए, डी स्पोर्ट्स ने टोटल 4 डिफ्यूजल किया था। इसका मतलब अगर कंट्रोल मिल चुका था साइड का, स्पाइक प्लांट भी हो चुका था, तो फिनिशर देकर वो राउंड जीता गया है। लेट्स हेड टुवर्ड्स मैप वाइज प्लेयर वर्सेस प्लेयर, एंड इट इज एज यू मेंशन्ड तन्वी, वियर्ड ई स्पोर्ट्स के बैड लव एंड द शिवी 25 किल्स ली गई थी। एंड बैड लव वाज द ड्यूलिस्ट, वी वर एक्सपेक्टिंग कि इसी तरीके का प्ले हो, एंड विथ ओनली 9 डेथ्स, मतलब एक अच्छा परफॉर्मेंस पिक्स भी निकाल रहे हो और आप एलिमिनेट भी नहीं हो रहे हो, एंड वेरी क्लोज टू 2.9 जो कि प्रीवियस राउंड में स्टॉर्म थे, ऑलमोस्ट 3 पिक्स ईच राउंड। एंड यहाँ पर शिवी ने भी वही कोशिश की कि पर राउंड एक पिक निकाला गया था, एंड ही आल्सो गेव 7 एक्स्ट्रा असिस्ट टू द टीममेट्स। Yes, 7 assists. That's a big number from Shivi, but only if he could have finished that kills, maybe he would have had a better chance. मुझे तो लगता है कि अगर शिवी ने थोड़ा और मेहनत डाल के अगर वो असिस्ट को सच्ची में किल में बना देता, ही मस्ट हैव बीन डायरेक्टली हैविंग दैट कंपटीशन टुवर्ड्स बैड लव। ऑलमोस्ट 23 kills, 24 kills, मैच तो आराम से हो जाता था। Well, that was a very, very good competition from both of them. Shivi outplayed, to be honest. Shivi played better as a race in the map of Ascent. Then, he played better right now with the breach in his hand. Let's head towards the MVP for this particular map of Heaven here, and it is indefinitely Bad Love, and he was totally expected to achieve this MVP title. And total 25 kills, 9 deaths, 1 assist, or almost on the average 3 picks per match nikal kar gaye hain. And Bad Love was exactly what was required to get an easier spot on the grand finalist list, and that is how we know we are Esports is going to play tomorrow's grand finals for Asus Rog Showdown series. But coming back to the next half for the day, इट इज गोइंग टू बी इवन मोर इंटरेस्टिंग, बिकॉज एक फाइनलिस्ट तो जरूर मिल गया है, एक और फाइनलिस्ट मिलना अभी भी बाकी है। एंड हमने देखा एक अच्छा तगड़ा कंपटीशन देने की कोशिश की गई थी। इट वाज नॉट ऑलवेज वन वे अफेयर तन्वी, एक अच्छा कंपटीशन देने की कोशिश की जा रही थी, बट वो कोशिशें नाकाम हो रही थी। इवन आफ्टर चेंजिंग द प्लेयर स्टैट्स, इवन आफ्टर चेंजिंग द एजेंट्स, मौका नहीं दिया जा रहा था। इन एवरी एंगल वी स्पोर्ट्स एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रही थी। Yes. वेल परफॉर्मेंस तो कहीं पे भी कमी नहीं लगी है मेरे दोनों टीम से। इट्स जस्ट द कम्युनिकेशन विच लैक्ड फ्रॉम नशॉफी स्पोर्ट्स। इन टर्म्स ऑफ फ्रैगिंग वो खूब बढ़िया कर रहे थे। अब मतलब आप खुद ही देख लो होक्स ने कितना एफर्ट डाला है वो गेम उनके हाथ में लाने के लिए। जैसे कि हर प्लेयर ने यहाँ पे एफर्ट डाला था, बट इट्स जस्ट दैट टीम वर्क कम्स एट द एंड ऑफ द डे एज अ मेजर प्राइम थिंग इन द गेम। स्पेशली एफपीएस गेम्स में तो एक टीम गेम होती है, टीम गेम में पांचों के पांचों को इक्वली लगाना पड़ता है। एंड दिस इज गोइंग टू बी द एंड ऑफ सेमीफिनाले 1। हमारे पास एक और सेमीफिनाले है जो और नेक्स्ट गेम में शुरू होने वाले हैं, एंड द नेक्स्ट 2 टीम्स आर कंप्लीटली अननोन टू मी, तानिया। They are definitely going to be very, we are going to get to see the roster, but before that let's head towards the overall scorecard. Well, we very well know how the performance went. 0-2 clean sweep से we are esports अपने आप को qualify करके चुकी है। And coming back to Hawks, अच्छा प्रदर्शन था, अच्छा परफॉर्मेंस था, हाईएस्ट फ्रैगर भी रह चुके थे comparing the entire battle, but only frags is not going to win you the rounds. You need to make sure that आप टीम सपोर्ट के साथ वो फ्रैग्स निकालते हैं। आई थिंक कि प्ले बहुत अच्छा था, म्यूचुअल कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं डिफिकल्टी रह गई। फिर टॉक अबाउट शिवी एज वेल, 28 किल्स निकाले थे। ऑन द अदर हैंड स्टॉर्म भले ही नेक्स्ट मैच में हाईएस्ट फ्रैगर ना रहे थे, बट इफ वी कंपेयर 2 मैचेस ऑल टुगेदर, स्टॉर्म अभी भी हाईएस्ट फ्रैगर रहेंगे, एंड ही इज द ओनली प्लेयर टू गेट 1.18 KPR, दैट इज किल पर राउंड्स। एक अच्छा परफॉर्मेंसेस देखने के लिए मिला है स्टॉर्म की ओर से एज अ सेंटिनल। दिस इज नॉट वी यूजुअली एक्सपेक्ट, वी एक्सपेक्ट दिस प्ले फ्रॉम द ड्यूलिस्ट, लेकिन अगर आप एज अ सेंटिनल इस तरीके की पिक्स निकाल सकते हो, साइट एंट्री दिलवा सकते हो, एंड साइट में डीले एंट्री करवा सकते हो फॉर द ओपोनेंट्स, एंड हु वुडंट वांट अ सेंटिनल लाइक स्टॉर्म? कांग्रेचुलेशंस स्टॉर्म, यू रियली आउटप्ले
played each and every player out of all of the scorecard. But let's get back towards Nasha Esports. की ओर से एक super performance था, but Ameya could have been a better supporter for his team, so that at least ये जो clean sweep है उससे कुछ और result देखने को मिल सकता था. Yes. Well, it was quite expected that Storm was going to be on the top. Tanya, to be honest, 46 kills to his name. Almost उन्होंने आधा सेंचुरी मार लिया था यार तानिया. Just 4 kills away from the half century. And हम देखेंगे कल ग्रैंड फाइनल्स में कितनी सेंचुरीज पूरी करते हैं, क्योंकि सेमीफाइनल्स में बैड लव और स्टॉर्म का एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखा. एंड वी शुड नॉट फॉरगेट द प्ले ऑफ सेसमी एज वेल, क्योंकि ये जो एसेंट मैप था उसके अंदर हमने देखा सेसमी ही वाज ट्राइंग टू शो अप सम कलर्स, ट्रू कलर्स फॉर हिमसेल्फ, लेकिन वो हेवन में टोटली आउटशाइन कर चुके थे. सेसमी काफी ज्यादा देर तक फर्स्ट हाफ में टॉप फ्रैगर भी बन चुके थे. तो समवेयर एक जो टीम कोऑर्डिनेशन था ना, it was just on point for VRD Esports, and this is what you want to be when you want to win. And I think VRD Esports in every aspects, in terms of picks, in terms of attacking side, in terms of defender side, they went all in and they were successful in every different criteria. Yes, I definitely agree with you, Tanya. But इन सबसे बढ़िया important चीज, एक चीज हमने concentrate नहीं किया है कि the momentum जो था, once the momentum was going down, it was hard to restore it back again. एंड नशा स्पोर्ट्स के लिए भी उन्होंने सेकंड हाफ में बहुत ही अच्छे तरीके से 4 राउंड बैक टू बैक जीते थे, बट वो एक राउंड जीतने के लिए उनको एंटायर मैप का स्टेक पड़ा था. And now, unfortunately, they lost it, and now it's going to be VRD Sports moving into the finale for tomorrow. And as we have the second finale coming up, it's between two very interesting teams. And if you guys don't want to miss out, make sure you subscribe to our YouTube channel and follow us on our Instagram and on Facebook. That is Asus Rog. By the way, if you guys also want to participate, we have a lot of tournaments coming up. So stay updated, guys. Me and Tanya are going to take a short break before the semi-finale 2 starts. So don't go anywhere. Get your popcorn. Stay active. We're going to be right back. Got him. Let's go.
एल से थोड़ी देर के लिए डिले करने की कोशिश, लेकिन आई डोंट थिंक ये कोशिश ज्यादा देर तक काम करेगी। साइड एंट्री आ चुकी है और यहाँ पर होक्स पीछे से आकर थर्ड साइड में एंट्री हो चुकी है। ऑन द वर्ज ऑफ प्लांटिंग, डिलेड रहेंगे। होक्स काफी लो है एचपी में और उन्हें लुक्स लाइक गेम अभी इंटरेस्टिंग होता बैठेगा, बिकॉज पहला राउंड तो चले गया है बीओडी स्पोर्ट्स के हाथ में। अभी दूसरा होने वाला है नशा स्पोर्ट्स क्लोज द बॉट इट डाउन टू 2v स्पोर्ट्स आ जाती है, तो मे बी दे हैव टू गो फॉर एन इको, बिकॉज बैड लव ऑलरेडी इको पे बैठ चुके हैं। एंड दैट वाज द वेरी क्रिस्पी शॉट कमिंग इन फ्रॉम सासमी। Sassy as hell gets another one. Already पोजीशन पता है शिवी का ठहरे हुए हैं एंड ग्रेनेड आते हुए ये आगे जाने वाले, कुछ डरना ही नहीं है। लेकिन काफी ज्यादा आगे तक पुश कर चुके हैं, उनके हाथ में ऑफ है एंड पहले इंसान आते ही he's gonna take that shot, he's gonna taking down a lot of damage। फिर से होक्स काफी बहुत ही नजदीक शॉट लेने वाला है, ऊपर काफी सारे शॉट्स फायर कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड बैड लव एक किल ले चुके हैं। वंडर इज ट्राइंग दिस लेवल बेस्ट टू स्टॉप इट। 100 HP, 6 bullets only left, and there comes Rio with the sheriff। कसम से रीवर शेरिफ और क्या एंट्री मिलेगी एंड आई थिंक डोमिनेट कर नंबर्स में आप बात करें तरीके से रहेगा। एंड यहाँ पर टरेट को ब्रेक किया गया, साइड एंट्री की और पिक भी निकाला गया है गेट क्लोज करने में जरा भी किसी। That was a nice exit kill coming in from Shivi, by the way, but I guess at the wrong time where MF God ऑलरेडी बैठ के देख रहे थे। होक्स इज प्लेइंग हिज एंटायर डिफरेंट गेम। यहाँ पर स्पाइक को डाउन कर दिया गया है और यहाँ पर दूसरा पिक निकालने की कोशिश में खुद डाउन हो गए, लेकिन वंडर का एक अच्छा था फुल बाई के अंदर अभी तक एक भी राउंड मिस नहीं किया गया है। एंड शिवी यहाँ पर एक किल लेने की कोशिश कर रहे थे, बट अल्टीमेटली रेसिप्रोकेट करने की कोशिश हार्ड किया गया है। एंड लुक एट सासमी's position, is in such a corner and MF could ultimately the lockdown will be up and gone। It's getting to diffuse and they come so watch। क्या यहाँ पर क्रॉसफायर इमीडिएट एंगल में मिल जाएगा, आमना सामना हो गया, डैमेज डिलीवर किया गया एंड विनर यहाँ पर उनका प्लांट तो मिल चुका है, बट पोस्ट प्लांट खेलना काफी इंपॉर्टेंट है तानिया। इट्स अ 2v3 सिचुएशन। और जब तक मैं एचपी देख रही हूँ सोवा की काफी लेकर चले गए वंडर। और रियो का अच्छा खासा हंटर देखने के लिए मिला है, शैडोज का यूज किया गया है, देखेंगे। और वेट करे थे में ट्रांसफर होगा यहाँ पर ओमन का फ्रॉम द शैडोज और यहाँ पर डाउन भी कर दिया गया है। 2 हो चुका है। शिवी की ओर से यहाँ पर एक बूम बॉट डाला गया है और क्रैश भी हो गया है। होक्स यहाँ पर में एंट्री बहुत जल्दी मिल जाएगी, मिल चुकी है। इंडी लेट्स वेट फॉर द प्लेयर टू जॉइन। रियो एक किल ले चुके हैं, बट शिवी विद द ओह माय गॉड, शिवी विद द कम है नशा स्पोर्ट्स की, व्हिच मींस उनको ना उनकी ही एडवांटेजेस 30 seconds left। यूनिस चाह चुके हैं क्लच निकालना डिफिकल्ट होगा। शॉट डार्ट बिल्कुल सही प्लेसमेंट एंड एक फ्लॉलेस राउंड, काफी अच्छी कर रहा है बैड लव के लिए फिलहाल के लिए। तो अभी देखेंगे एमएफ गॉड कितना अनोइंग हो सकते हैं। ये ऐसी ही है, डबल किल मिला उन्हें। अमेय सायन ऊपर बैठे हुए, उनको एक किल मिला एंड दैट इज अ 1v2 क्लच फ्रॉम अमेय। नो मैटर हाउ गुड स्टॉर्म से क्लच भी क्लोज क्रिएट किया जा सकता है। यहाँ पे तुम देख रहे हो क्या, यहाँ पे बैक स्टैब हो चुका है स्टॉर्म और हम एमएफ गॉड यहाँ पर वेट कर रहे हैं साइड में एंट्री लेने के लिए और यहाँ पर एक पिक निकालिए। 1v स्टैब की अटेम्प्ट हो सकती है, बट दे आर कमिटेड कि हम साइड बी में ही आएंगे। डीले तब होकर ने एंड डिस्ट्रॉय हो चुका है, बट ज़ास्मी यहाँ पे होक्स को डिस्ट्रॉय कर दिए। स्टॉर्म गेटिंग 1-on-2 with ज़ास्मी यहाँ पे होक्स को डिस्ट्रॉय कर दिए। Storm getting 1-on-2 with Shivi, immediately getting tagged by the boom bot. Down 46 HP, a double kill, almost a triple kill coming into the play. And MF down towards the CT and Shivi's ready to get the flashes out. ओमन का फ्लैश आते हुए स्टॉर्म ने ऊपर से नीचे कूदा है। 2 किल मतलब एक और लेते हुए स्टॉर्म 3 kills 4 kills for Storm। नशा esports को शेरिफ और क्लासिक के साथ देखेंगे। बैड लव ने इनिशिएट कर दिया, नॉट ओनली वन डिलीवर नहीं हुआ स्टॉर्म की फिर से एक बार अच्छी एंट्री देखने के लिए मिली। किल जॉय अकेले ऑलरेडी डाउन हो चुका है, दैट इज होक्स गोइंग डाउन। 3 players एक गराज पुश आने वाले हैं। एमएफ गॉड के पास जज के हाथ में बैठे हुए डबल किल एंड नाउ इस दिया था, नहीं तो काफी मुश्किल होने वाला था शिवी को भी। शिवी बीन स्पॉटेड ईदर वे एंड इज गेटिंग पुश्ड ओवर। किल निकाल लिया तानिया यहाँ पे। एंड तुम्हें क्या लगता है कि बैड लव ये राउंड निकाल सकता है? जरूर से निकाल। हटा दी गई है, साइड एंट्री मिली जरूर थी और यहाँ पर काफी ज्यादा डैमेज ले चुके हैं। इफेक्ट दबा के तो काफी मुश्किल है। लेट्स सी कितना दूर तक ये जा सकते हैं। एंड शिवी भी आखिरी प्लेयर ने डबल किल और ट्रैप फायर में स्टक होने का बिल्कुल सही मोमेंट पर यूज किया गया। एमएफ
यहाँ पर डाउन कर देंगे, नॉट ओनली वन फॉलोड बाय अदर एज वेल ऑन द कोर्ट फ्रॉम भी अमेया को डाउन कर देंगे। जासमी की ओर से ये एक आज वो भी ट्रबल में होने वाला है। Well, I think Amir Sain is all ready to set up a core and execute right now with the orbital strike coming into the play and Storm, but Storm is not gonna get stopped by any of all in the hands of winner in a 1v3 situation right now. And there you go, MF God काफी नहीं हो रहा है तो एंटायर स्प्लिट स्कैटर प्ले चल रहा है। फिर से एक बार सासमी एक पिक ले चुके हैं। राज विंडो से MF God he could have taken the pick but he is going for an entire global rotation. There he is successfully able to take not only one but yes. Well, not only that, Sasmi immediately gets spotted. Take one day down. With one player going down, it's a 4v5 situation, and unfortunately, which puts us in a 3v4 situation right now. Well, currently it's going to be a B push coming in, but MF also use करके immediately C side में God जा चुके थे। बहुत ही बढ़िया टाइमिंग का रिकॉन था, बहुत ही बढ़िया टाइमिंग का फ्लैश भी था। यहाँ पे 6 मिनट अब फिर से डाउन किया गया है एंड यहाँ पर अमाया काफी अच्छी तरीके से उसे रिड्यूस करके 1v1 पर लेकर आए। शॉक बॉट डालने की कोशिश, अलार्म बॉट ट्रिगर हो चुका है। होप स्नाइपर के साथ अभी भी रेडी है, इज एबल टू टेक डाउन वन शॉट बैकली क्योंकि अभी के लिए ऑल दैट सासमी है। जस्ट गो एंड होप की ओर से फाइनली पुराना प्लेयर Esports के पास अभी एक प्लेयर का एडवांटेज है। लोग काफी पेशेंटली वेट कर तुमने ही 4 प्लेयर्स हैं एंड आई थिंक ये जो नब्यूला का यूज था उनके अगेंस्ट यूज कर लिया गया। 2 पिक्स निकाली है एंड हाउ मेनी होते गए विक्ट्री कैन बी क्लोज डाउन। यस एंड लुक्स लाइक इस बार काफी स्मूथ जा रहा है विक्ट्री। Down, C. एक प्लान अच्छा क्रिएट किया जा रहा है, देखेंगे मौका मिलेगा या नहीं। सैक्शन की कोशिश एंड अनसक्सेसफुल रहा बिकॉज़ व्हाटएवर यू विल से स्पाइक के गेट स्पॉट भी कर लिया गया है लेकिन वो ड्रोन का अच्छी तरीके से मिसयूज किया गया। या स्पाइक तो प्लांट हो चुका है एंड जेट काफी रन इट बैक आते हुए ही इज मेकिंग हिज वे वेरी एग्रेसिवली टू द बॉम्ब साइड। स्टॉर्म गेट्स वन Dasmi he almost managed to get 1 kill but काफी क्लोज एंगल पे खेल रहे थे। अमय उनका पोजीशन तो रिवील हो चुके हैं। स्टॉर्म गेट्स अ डबल किल, बैड लव गेट्स इट इज गोइंग टू बी 3 वर्सेस 5। फिर से एक बार एमएफ को सी साइड पर एक पुश देते हुए नजर आएंगे लेकिन यहाँ पर अमय से अंडर रेडी है, वेट कर रहे हैं गार्डियन का यूज देखने के लिए। और यहाँ पर साइड एंट्री भी ली जा चुकी है फ्रॉम द शैडो यूज करके एक हेवन पर एंट्री ले लिया गया है। एमएफ गॉड हर बार एक स्नीकर अप्रोच रखते हैं बट लेकर गए हुए हैं। टर्निंग एक अभी के लिए आउल को भेजा गया है इंटेल देने के लिए, इंटेल मिल चुका है। विनर इज स्पॉटेड और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए डिले करने की कोशिश लेकिन आई डोंट थिंक ये कोशिश ज्यादा देर तक काम करेगी। साइड एंट्री आ चुकी है और यहाँ पर होप पीछे से आकर थर्ड एंट्री हो चुकी है ऑन द वर्ड ऑफ प्लांटिंग। डिलेड रहेंगे, होप्स काफी लो है एचपी में और नेर्वियो गेम अभी इंटरेस्टिंग होता बैठेगा बिकॉज पहला राउंड तो चले गया है बीओडी स्पोर्ट्स के हाथ में, अभी दूसरा होने वाला है नशा स्पोर्ट्स क्लोज द बॉट इट डाउन टू 2v3 आ जाती है तो मे बी दे हैव टू गो फॉर एन इको बिकॉज बैड लव ऑलरेडी इको पे बैठ चुके हैं एंड दैट वाज द वेरी क्रिस्पी शॉट कमिंग इन फ्रॉम सासमी। Sassy as hell gets another one. पोजीशन पता है शिविका ठहरे हुए हैं एंड ग्रेनेड आते हुए ये आगे जाने वाले, कुछ डरना ही नहीं है। Looks like काफी ज्यादा आगे तक पुश कर चुके हैं, उनके हाथ में ऑप है एंड पहले इंसान आते ही he's gonna take that shot so Asmi taking down a lot of damage। फिर से होक्स काफी बहुत ही नजदीक शॉट लेने वाले के ऊपर काफी सारे शॉट्स फायर कर रहे हैं। ऑन द हैंड बैड लव एक किल ले चुके हैं। वंडर is trying this level best to stop it। 100 HP, 6 bullets only left and there comes Rio with the sheriff। कसम से रिवर शेरिफ और क्या एंट्री मिलेगी एंड आई थिंक डोमिनेट कर देगी। नंबर्स में आप बात करें तरीके से रहेगा एंड यहाँ पर टरेट को ब्रेक किया गया। साइड एंट्री की और पिक भी निकाला गया है गेट क्लोज करने में जरा भी। That was a nice exit kill coming in from Shivi by the way, but I guess at the wrong time where MF God ऑलरेडी बैठ के देख रहे थे। Fox is playing his entire different game। यहाँ पर स्पाइक को डाउन कर दिया गया है और यहाँ पर दूसरा पिक निकालने की कोशिश में खुद डाउन हो गए लेकिन वंडर का एक अच्छा फुल बाई के अंदर अभी तक एक भी राउंड मिस नहीं किया गया है एंड शिवी यहाँ पर एक किल लेने की कोशिश कर रहे थे बट अल्टीमेटली रेसिप्रोकेट करने की कोशिश किया गया है एंड लुक एट Sasmi's position is in such a corner and MF could already the lockdown will be up and gone।
It's getting to diffuse and they come so bad. क्या यहाँ पर क्रॉसफायर इमीडिएट एंगल में मिल जाएगा, आमना सामना हो गया, डैमेज डिलीवर किया गया एंड विनर यहाँ पर उनका प्लांट तो मिल चुका है बट पोस्ट प्लांट खेलना काफी इंपॉर्टेंट है तानिया. इट्स अ 2v3 सिचुएशन और जब तक मैं एचपी देख रही हूँ सोवा की काफी साथ लेकर चले गए वंडर. और एक रियो का अच्छा खासा हंटर भी देखने के लिए मिला है. हार्ट शैडोज का यूज किया गया है, देखेंगे. और वेट करें में ट्रांसफर होगा यहाँ पर ओमन का फ्रॉम द शैडोज और यहाँ पर डाउन भी कर दिया गया है. 2 हो चुका है. शिवी की ओर से यहाँ पर एक बूम बॉट डाला गया है और क्रैश भी हो गया है. होक्स यहाँ पर में एंट्री बहुत जल्दी मिल जाएगी, मिल चुकी है. इंडी लेट्स वेट फॉर द प्लेयर टू जॉइन. वियर्ड रियो एक किल ले चुके हैं बट शिवी विद द ओह माय गॉड शिवी विद द में नशा स्पोर्ट्स की व्हिच मींस उनको ना उनकी ही एडवांटेजेस. 30 seconds left. यूनिस चाहते हैं क्लास में करना डिफिकल्ट होगा. शॉटगन का बिल्कुल सही प्लेसमेंट एंड एक फ्लॉलेस राउंड, काफी अच्छे चल रहा है बैड लव के लिए फिलहाल के लिए. तो अभी देखेंगे एमएफ गॉड कितना अनोइंग हो सकते हैं. ये ऐसी ही है. डबल किल मिला उन्हें. अमेय सायन ऊपर बैठे हुए उनको एक किल मिला एंड दैट इज अ 1v2 क्लच फ्रॉम अमेय. नो मैटर हाउ गुड स्टॉर्म ट्राई. क्लच भी क्लोज क्रिएट किया जा सकता है. यहाँ पे तुम देख रहे हो क्या यहाँ पे बैक स्टैब हो चुका है स्टॉर्म और हमारे एमएफ गॉड यहाँ पर वेट कर रहे हैं साइड में एंट्री लेने के लिए. और यहाँ पर एक पिक निकालते हुए अटेम्प्ट हो सकती है बट दे आर कमिटेड कि हम साइड बी में ही आएंगे. डीले तब होकर ने एंड काफी डिस्ट्रॉय हो चुका है बट जैस भी यहाँ पे होक्स को डिस्ट्रॉय कर दिए. स्टॉर्म गेटिंग 1-on-2 टूवर्ड्स जैस भी यहाँ पे होक्स को डिस्ट्रॉय कर दिए. Storm getting 1-on-2 towards Shivi, immediately getting tagged by the boom bot. Down 46 HP, a double kill, almost a triple kill coming into the play. And MF towards the CT and Shivi is ready to get the flashes out. ओमन का फ्लैश आते हुए स्टॉर्म ने ऊपर से नीचे कूदा है. 2 किल मतलब एक और लेते हुए स्टॉर्म 3 kills 4 kills for Storm. नशा esports को शेरिफ और क्लासिक के साथ देखेंगे. बैड लव ने इनिशिएट कर दिया. नॉट ओनली वन डिलीवर नहीं हुआ स्टॉर्म की फिर से एक बार अच्छी एंट्री देखने के लिए मिली. किल जॉय अकेले रेडी डाउन हो चुका है. दैट इज होक्स गोइंग डाउन. 3 players एक गराज पुशाने वाले हैं. एमएफ गॉड के पास जज के हाथ में बैठे हुए डबल किल एंड नाउ इस था नहीं तो काफी मुश्किल होने वाला था शिवी को भी. शिवी बीन स्पॉटेड ईदर वे एंड इज गेटिंग पुश्ड ओवर. डबल निकाल लिया तानिया यहाँ पे. एंड तुम्हें क्या लगता है कि बैड लव ये राउंड निकाल सकता है? जरूर से हटा दी गई है. साइड एंट्री मिली जरूर थी और यहाँ पर काफी ज्यादा डैमेज ले चुके हैं. एक पिक निकाल ये तो काफी मुश्किल है. लेट्स सी कितना दूर तक ये जा सकते हैं. एंड शिवी भी आखिरी प्लेयर बट और से और ट्रैप फायर में स्टक होने का बिल्कुल सही मोमेंट पर यूज किया गया. एमएफ यहाँ पर डाउन कर देंगे. नॉट ओनली वन फॉलोड बाय अदर एज वेल ऑन द फोर्थ भी अमेय को डाउन कर देंगे. लास्ट की ओर से ये एक वो भी ट्रबल में होने वाला है. Well, I think Ameya Sayan is all ready to set up a core execute right now with the orbital strike coming into the play and Storm, but Storm is not gonna get stopped by any of all in the hands of winner in a 1v3 situation right now. And there you go. MF God काफी डबल नहीं हो रहा है तो एंटायर स्प्लिट स्कैटर प्ले चल रहा है. फिर से एक बार सैसमी एक पिक ले चुके हैं. मतलब कि गराज विंडो से एमएफ गॉड he could have taken the pick but he is going for an entire global rotation. There he is successfully able to take not only one.
Let's go. लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम बैक टू आर जी शोडाउन सीरीज वैलोरेंट। यहाँ पर हम एक फाइनलिस्ट मिल चुके हैं हमें जो कि है वी ई स्पोर्ट्स, लेकिन अभी भी रेस शुरू है फॉर द सेकंड फाइनलिस्ट। एंड अभी फिर से एक बार रिपीटेशन होगा, बेस्ट ऑफ 3 होगा एंड क्लीन स्वीप देकर वी ई स्पोर्ट्स इमीडिएटली क्वालिफाई कर चुके हैं। फर्स्ट हाफ काफी स्मूथ रहा वी ई स्पोर्ट्स के लिए, बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द सेम हैपनिंग इनटू द सेकंड एज वेल फॉर द सेकंड हाफ फॉर द सेकंड फाइनलिस्ट। डू यू थिंक तन्वी फिर से एक बार हमें एक क्लीन स्वीप देखने के लिए मिलेगा या फिर एक टफ कंपटीशन देखने के लिए मिलेगा जहां पर 3 मैचेस भी हो सकते हैं? मुझे लगता है कि कंपटीशन काफ़ी बड़ा होने वाला है फर्स्ट सेमीफिनाले से ज़्यादा, बिकॉज़ द टीम्स व्हिच वी आर वाचिंग, F5 Esports वर्सेस Axe Gaming. F5 Esports is none other than the ex-Fangs team. So there used to be a team named Fangs which had a very aggressive control over even top tier teams of India. So them coming back and playing against TGS Axe, it's going to put down a lot of things on the board for FI Sports. सो एक्साइटिंग है, अच्छी चीज़ है। जब तक रोस्टर रिवील ना हो जाए तब तक थोड़ा तो मुश्किल होगा बताने के लिए कि इज इट गोइंग टू बी अ क्लोज फाइट और एल्स इज इट गोइंग टू बी अ वन साइडेड परफॉर्मेंसेस, बट डेफिनेटली वी डिड सी अ वन साइडेड परफॉर्मेंस इन द सेमीफिनाले वन। आई एम लुकिंग कि ये सेमीफिनाल है तो स्टेक्स ज़्यादा है तो कंपटीशन भी ज़्यादा होना चाहिए। इवन आई वुड वांट टू सी एक क्लोज कॉल मैच, एक कट थ्रोट कंपटीशन, एक नेक टू नेक कंपटीशन, बिकॉज उसमें ज्यादा थ्रिल क्रिएट हो जाता है, जिसमें ज्यादा कास्टर्स को, व्यूअर्स को ज्यादा मजा आता है। वेल, टॉकिंग अबाउट प्लेयर्स, हाँ मुझे पता है प्रेशर बढ़ जाता है, प्लेयर्स को मजा नहीं आता, बट टू पुट अप अ बेटर शो, लेट्स होप कि इस बार का जो शो वन साइड डोमिनेंट अफेयर ना हो। वी आर गोइंग टू गेट टू सी द रोस्टर सून, बट बिफोर दैट आई हैव अ फीलिंग कि फिर से एक बार डोमिनेंस देखने को मिल सकती है, बिकॉज इफ इट कैन हैपन वंस इन सेमीफाइनल्स, why not twice as well? As you've already mentioned, एक से फैंग esports के नाम से खेल चुकी है, and I totally recollect कि अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, and particularly we have seen कि यहाँ पर जो combination in when they were playing from the entire different roster, we saw the combination of the initiator and as well as duelist together. क्या फिर से एक बार एक esports इसी combination के साथ जीतेगी, या फिर with the roster changes, name changes, एक नई strategy भी लेकर आएगी? But coming back to the other team, let's see how is Hi-Fi Esports going to be. Here is the lineup, and we can see here all 5 players. It is going to be Fluxy, Beast, Sonic, Kazuya, and Flicker. Well, this was a totally unexpected roster reveal for me. Kazuya and Flicker, very, very aggressive players, especially speaking about Kazuya. He has played under so many rosters so far, so many teams, that he has the perfect blend of the game. He's a jet main player and he goes very well, very aggressive. He gets all the entries that are necessary. And speaking about Beast and Flicker, they are a great support to the team. Well, Fluxy and Sonic are new to me. I'm looking forward to their play. Well, all the best for Axe Esports. Though I'm expecting a very aggressive performance from them because they have players like Flicker and Kazuya who completely go aggressive on their opponents. And coming down to the second roster reveal, that is F5 Esports. Now, this is a very interesting team that everybody is looking forward for the roster reveal, because if FI Sports has more than 2 aggressive players, I guess then the game goes down one sided unless there's a lot of teamwork being put by Axe Gaming.
Let's see if they are putting in the efforts. Let's see, because that only time can show us. And coming back to Team FI Esports, let's see how dominating are they going to be. Are they going to compete or weird esports even more than what they have done? Then we can have a glimpse of tomorrow today. If this is the way, if exactly what weird esports did, that is exactly if there's any team who is going to do. Let's see if that is the situation or no. For now, if we talk about the current roster, where we saw Fluxy, Beast, Sonic, Kazuya, and Flicker all together, how well they are lined up. Coming back to the next lineup for the day, which is FI Esports, we can see Cactus, iGod, K3, Kohli, and Smokia. Well, Smokia name totally indicates we are going to see a lot of smokes coming in from him. Yes, Smokia, I got are few of the best duelists, and especially speaking about I got, he has also played in top tier teams of India, has the best jet game for now. I'm pretty sure that FI Esports is gonna give a very very strong match against Axe Esports. Well, the suspense is still there, the mystery is still there that which one of the teams has the advantages or the upper steps in the game. There's only one way of knowing it, that's by the map veto, because map veto speaks a lot of things, and I have a feeling that FI Esports looks a little stronger in the maps like bind, because igod is an opper and as well as a jet player, so bind gives him a lot of advantage. And speaking about Axie Sports, their best map is Haven again. Now, if the best map is Haven, we have seen how strong Weird Esports went ahead on the defender side as well as attacking side. And if this is the short team FI is going to put up to, I can already pre-assume what kind of a score we can see. But we can never underrate any other team. All are equals because they all have gone through the same rigorous performance of the qualification process, entering towards the semi-finals. One spot totally confirmed by Weird Esports, and one will be confirmed real soon. Either it is going to be AX Esports or it is going to be FI Esports. But coming back to the lineup of FI Esports, certainly yes, duelists are doing very, very well. But only duelist is not going to give them the rewards, and exactly what happened into the previous match, where Hawks was able to get so much of frags for the team, but unfortunately not getting any rewards. If that is going to be the case of scenario, then I'm afraid for the team FI as well, because team coordination is the key towards victory. क्या वो टीम कोऑर्डिनेशन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि पिक निकालना, किल निकालना हमने देखा है पिछले मैच में, वो सफिशिएंट इनफ नहीं था क्वालिफाई करने के लिए. लेट्स होप कि H5 ये जो टीम है F5 वो अपने काम में इतनी प्रोबेबिलिटी के साथ पिक निकाले कि राउंड्स भी साथ में निकलते जाएं. Yes. Well, I'm quite excited for the map veto, as आपने बोला है कि दोनों की दोनों टीम सही लग रहा है, दोनों की rosters equally compatible लग रहा है मुझे फिलहाल के लिए तो. But map veto speaks a lot of things, which also shows the weaker sides of the team as well, कि वो कहाँ से start कर रहे हैं, attackers या defenders. Well, speaking about Axie Sports, they have banned Split, Haven, and they have picked the map of Bind and Ascent. Well, the first map has been picked by F5 Esports, which to my surprise is Icebox, and Breeze has also been banned by F5 Esports. Wow, that's a very good beginning, Tanya, by the way. We are going to be seeing the map of Icebox, the biggest map so far, which totally took people off their minds. A lot of comebacks have been done, a lot of insane plays. There is a lot of room in that map to improve quickly and fall back. That is the map of Icebox, where FI Esports will be starting off on the attacker sides, which means already unko side advantage hai. Absolutely, Icebox being the a little bit advantageous for attackers side, we can expect a good start, a good jump start for Team FI Esports. Let's see, are they going to go ahead with the same or no? क्योंकि Icebox एक unpredictable maps है, हम immediately नहीं कह सकते कि सिर्फ attacking को advantage मिलेगा या defenders को advantage मिलेगा. हमने tables turn होते देखे हैं, swap होते देखे हैं और roles reverse होकर देखे हुए हैं, जहाँ पर duelist bottom fragger बन के बैठे हैं, sentinel side को control करके बैठे हैं. तो Icebox मेरी नजर में सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल मैप रहा है, जहां पर रोल चेंज करने में भी डीले नहीं है, पिक्स निकालने में भी डीले नहीं है. एंड दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वन, एंड दैट टू ऑन द अटैकर्स साइड. एक हल्का सा हम प्लस दे सकते हैं एफआई ई स्पोर्ट्स को, क्योंकि आइस बॉक्स में दूसरे कास्टर्स अग्री नहीं करते हैं. दे कॉल इट एन इक्वलाइज्ड मैप फॉर द अटैकर्स एज वेल एज डिफेंडर्स. लेकिन जितना मैं एनालाइज करती हूँ, अटैकर्स को एक थोड़ा सा एडवांटेज रहता है, एन इनडेफिनेट एडवांटेज रहता है, एंड उसमें ही आपको मैक्सिमम राउंड्स निकालने होंगे. FI Esports being on the attacking side, क्या वो गैदर कर पाएंगे,
लीड जो चाहिए होगा, क्योंकि ऑन द डिफेंडर साइड द क्वेश्चन इज जब प्लांट हो जाता है ऑन द अदर एंड स्पाइक, तो रीटेक लेकर वापस से जाना, डिफ्यूज करना एंड विदाउट गेटिंग पिक्ड आउट, वो एक डिफिकल्टी रहती है। यस, वो डिफिकल्ट तो रहती है। एंड आइस बॉक्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट। एंड यहाँ पे ना बहुत डिफरेंट डिफरेंट मेटा चलते हैं, डिफरेंट एजेंट्स की मेटा चलती है। कभी कभी डबल कंट्रोलर देख सकते हैं, कभी कभी सिंगल ड्यूलिस्ट देख सकते हैं, कभी कभी डबल सेंटिनल सेटअप्स देख सकते हैं। सो देर आर अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑन दिस मैप। प्रोबेबिलिटी की हद से ज्यादा है दैट हाउ मेनी कॉम्बोज ऑफ एजेंट्स कैन यू यूज इन दिस पर्टिकुलर मैप. You can use Phoenix, Raze, Jet, and especially Rena. So let's quickly dive into the map of Icebox, where the map agents have already begun and looks like जैसे कि मैंने बोला है डबल सेंटिनल सेटअप हो सकता है, वो जरूर हमको देखने के लिए मिलेगा from team Axe Esports, that is Flicker picking up the Sage and Fluxy going on with the Killjoy. बीस्ट फिलहाल के लिए इनिशिएटर लॉक इन करने के देख रहा है। एंड एक ही ड्यूलिस्ट है और वो कजुआ है। जैसे कि मैंने बोला, आईगॉड ने भी एक ही ड्यूलिस्ट है अपने टीम से, उन्होंने भी जेट पिक किया है। बहुत ही सिमिलर लाइनअप दिख रहा है। बस यहाँ एक ही चीज है कि ओमन लेना चाहते हैं कि या वाइपर। यहाँ तो वाइपर का इंस्टा लॉक हो चुका है अटैकर्स में। अभी हमको बस डिफेंडर्स का लॉक देखना पड़ेगा कि सोनिक इज गोइंग टू पिक अप ओमन या वाइपर। मुझे लगता है कि वो वाइपर पे लॉक इन करने वाले हैं। वाइपर पे एक अच्छा साइड कंट्रोल मिल जाता है इन द मैप ऑफ आइस बॉक्स, एंड दैट इज व्हाट यू वुड वांट। अगर आप एक साइड को टोटली कैप्चर कर सकते हैं, स्पेशली जब आपका अल्ट Choose रेडी your है, आई थिंक agent. सोनिक विल डेफिनेटली पे अ लॉट ऑफ रिवॉर्ड्स टू द टीम। कजुया ले चुके हैं अपने लिए जेट, बीइंग द ड्यूलिस्ट फॉर द टीम, एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड पिक कमिंग इन फ्रॉम हियर एज वेल। तो एक अच्छा सेंटिनल प्ले होगा। वी कैन क्लियरली सी 2 सेंटिनल्स पर फोकस दिया हुआ है, एंड वी आर गोइंग टू सी सेज, मतलब जो मिड जो होगा, ट्यूब ब्लॉक होगा, जो रिपीटेडली हमें देखने के लिए मिल सकता है। वाइपर भी एज अ कंट्रोलर हमें दोनों ही साइड पर देखने के लिए मिल रही है। इट इज एन एग्जैक्ट फाइट ऑफ द इक्वल्स। तो एक रोस्टर भी क्वाइट इक्वल लग रहा है, एजेंट्स भी टोटली इक्वल हैं। ये मैप काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल रहेगा फॉर द फ्यूचर कॉल। Yes, that is definitely true. As we begin the map of Icebox with a double sentinel setup, जब हम देख रहे हैं डिफेंडर्स के हाथ से, I think Kazuya will be playing B main, Sage of course as obvious कि वो मिड पे वॉल करेगी, किचन वॉल कर सकती है, किलजॉय ये सेटअप करने वाली है, नहीं तो ये पोस्ट प्लांट के लिए भी वॉल सेव कर सकते हैं कभी, बिकॉज इट्स अ पिस्टल राउंड, द बुलेट्स आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्रेक अ वॉल इजीली व्हेन इट्स द डिफ्यूज कमिंग इन फ्रॉम डिफेंडर्स। सो पोस्ट प्लांट के लिए भी वॉल सेव करने एक बहुत स्मार्ट वे है। बिल्कुल सही। पोस्ट प्लांट में भी आप यू कैन ऑल्सो टोटली वॉल द सिटी एरिया, जिसके चलते इमीडिएट एंट्री आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इनिशिएटर ने अपना काम लगा दिया है, स्मोक एंट्री ले रहे हैं, वाइपर वॉल का हल्का सा डैमेज, बट इतना चलेगा, नॉट गोइंग टू मैटर। इमीडिएट साइड ए पर पुश किया गया है, लेकिन ऑल 4 प्लेयर्स ऑफ द डिफेंडिंग साइड ऑफ टीम 3GS6 भी वेट कर रही है। जिपलाइन का यूज किया गया है, एंड यहाँ पर वाइपर्स क्लाउड भी यूज किया गया। इमीडिएटली प्लांट करके जिपलाइन का अगेन यूज कर लिया गया है। बहुत ही स्मार्ट प्लांट था फॉर द पिस्टल राउंड, एंड अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ आगे जाया गया है। सो अ गुड अटैकिंग साइड ऑलरेडी सीन कमिंग अप फ्रॉम FI Esports. Yes, FI Esports seems like they're having a very good entry. I got already getting the most of, he can get himself a double kill. Sonic के पास अभी भी 2 वाइप फिट है, बट यूज नहीं कर पाएगा बिकॉज स्मोकिया लास्ट के ले चुके हैं, एंड दे डिड हैव अ very good kickstart for the beginning of Icebox. Well, attack is sided, वो तो एक advantage already दे चुकी है। एडवांटेज आ चुका है फॉर द अटैकर साइड। स्पाइक अभी भी हाथ में रहेगा टुवर्ड्स कंट्रोलर, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे हैव टू फॉलो। FI Esports ने प्लेयर्स साइड इवैक्यूएट हो चुकी है, बी साइड टोटली कब्जे में आ गई। इमीडिएटली FI Esports के वाइपर जाते हुए फिर से एक बार होल्ड कर रहे हैं, नॉट टू गेट इमीडिएटली कंफ्यूज, और यहाँ पर एक स्पाइक प्लांट फिर से एक बार देखने के लिए मिल सकता है। आई गॉड के पास एक हाइट का एडवांटेज क्रिएट हो सकता है। अभी भी प्लेयर्स रोटेशन में डिले कर रहे थे, एंड नाउ
नाउ अल्टीमेटली मिड का यूज करके रोटेशन देखने को मिला है। कॉली यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सोनी की ओर से काफी अच्छा पिस्टल कंफर्मेशन। B2B स्लो नहीं जाएंगे, 2 किल्स ऑलरेडी सिक्योर हो चुके हैं। In very second round, we are going to get to see a very good play coming in from B2 as well, and second consecutive victory by losing only one player. एक काफी अच्छी शुरुआत है FI Esports के लिए। Yes, that was a very good beginning again for F5 Esports. They made it to the second round, but अभी ये third round important है। ये bonus round है F5 Esports के लिए, and TJS के लिए ये एक फुल बाय राउंड है। अगर TJS एक्स ये राउंड हार जाती है तो काफ़ी मुश्किल होने वाला है, उनका इकोनॉमी पे काफ़ी असर पड़ेगा, एंड आई डोंट थिंक F5 Esports will again give them a chance to get back their round. And how every single time they are switching the plans. Previously there was a full A push, then for the second round they went for the full B push. This time they're going ahead towards the split strategy using the mid, and we can see Tube will be walled by Flicker to avoid any mid side rotation. और यहाँ पर I got side A में एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। 1 versus 1 ड्यूअल देखने को मिल सकता है। स्मोकिया यहाँ पर अच्छा खासा बैकट्रैक ले रहे हैं, 2 पिक्स देखने को मिल जरूर सकते थे, लेकिन फ्लक्सी यहाँ पर इतना इजी मौका नहीं देंगे। पोजीशन काफी अच्छी है, हेवन साइड पे आप बाहर का भी कंट्रोल ले सकते हो, एंड विद इन द प्लांट साइड भी आप कंट्रोल ले सकते हो। एज शॉट की ओर से एक एंट्री देखने को मिल रही है साइड पर, एंड एवरीबॉडी इज क्लस्टर्ड ऑन साइड ए, और वॉल का एक यूनिक यूजेज, हाइट का एडवांटेज लेने की कोशिश टू जस्ट गेट द पिक। एंड लेट्स टॉक अबाउट B2 वंस अगेन। सेंटिनल होते हुए वी आर सीइंग वंस अगेन अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ पिक्स बीइंग टेकन। Yes. Well, I'm expecting a little more damage coming in from Axe. वैसे अच्छी damage था, बीस्ट ने डबल किल ले लिया, almost that kill coming in from my god. That was a close headshot, but confirmation नहीं आ पाया था, and as expected, TJS Axe will be taking down the first round in the hands. काफी बढ़िया बोनस राउंड खेला है F5 Esports ने, उन्होंने भी दो किल लिए हुए थे F5 Esports के अगेंस्ट। उनका इकोनॉमी, F5 Esports का इकोनॉमी थोड़ा अभी भी अनबैलेंस्ड दिख रहा है मुझे। अगर वो लोग ये राउंड हार जाएंगे तो उनको इको करना पड़ेगा शायद से F5 को। इको करना पड़ेगा, बिकॉज इफ दे लूज एनी फर्दर तो एक विन बैक सिचुएशन बहुत ही डिफिकल्ट होती है, एंड वी कैन क्लियरली सी B2 का अल्ट रेडी हो चुका है, सो वन प्लेयर कैन डेफिनेटली पिक अप द रिस्क। लीस्ट यहाँ पर रिकॉन डाल चुके हैं, एंड ही हैज स्पॉटेड ऑलमोस्ट एवरीवन। क्या यहाँ से रीटेक लेने की कोशिश की जाएगी? नहीं, ड्रोन को भेजा जा रहा है, स्पॉट भी किया जाएगा, और यहाँ पर एक एंट्री भी हो चुकी है आई गॉड की। लेट्स होप कि पिक भी मिल जाए, अगर पिक मिल जाता है तो इट इज गोइंग टू बी अ लिटिल डिफिकल्ट वंस अगेन फॉर टीम TGS। अभी के लिए एक राउंड ले चुके हैं, फ्लक्सी का स्वॉर्म ग्रेनेड काफी अच्छी तरीके से यूज किया गया, डाउन करवाकर अच्छे से स्पाइक डाउन किया गया था, बट मेंशन इट बिफोर B2 के पास रेजरेक्शन रेडी हो चुका था, रेजरेक्ट किया गया है। 2 वर्सेस 3 का सिचुएशन है। Yes, well, a 3v2 situation. जेट की HP काफ़ी कम है FS Esports के हाथ में, and I don't think the Jet has any resources left to do something. Well, Axe on the other hand, again with a man advantage, they are looking to get an entry. Smokia already gave away his position. He caught the attention of both of the players. Sonic is going to take the alarm boot down. They still do have the spike in their hands. It's going to be Smokia getting the plant. Inside the nest, Sonic is trying to clear out the way. Fluxy is trying to get a lot of damage done, and Flicker will get that kill. I got all by himself, left in a 1v3 situation. I don't think FS Esports can do this round, because there's absolutely any HP left for I got to get this round, and the bomb has been successfully defused. With 11 HP left, I got will be going in for the Phantom safe. That's a good call, by the way, if you ask me. Indeed, it was a very good call. You need to make sure you save it when you are losing, and it was predictive because they were less in numbers, and even after using the ult, there was nothing much more that they could have done. A good placement, a good split was seen coming in from Team TGSX. Somewhere, if you talk about the kills, iGod will be the top fragger now, being the duelist, but on the other hand, Beast is trying to be a very good support, and as an initiative, you're able to pick good kills, and this is what exactly you want. Once again, a push coming in towards the side B. Recon Bolt has
has been sent. Will anybody be scanned? Nobody gets scanned. Going flawlessly inside, well, which could put into the risk for iGod, and Play team cannot afford to lose iGod as of now. Viper wall standing right in front of us. Will the toxic stream be enough to stop the enemies, to stop the opponents from joining in the party at B side? Yes. Well, I don't think that's happening because Kazuya is looking pretty mad with the operator in his hand. Smokey is trying to figure out things, but unfortunately, on the other hand, B2 already gets taken down. It's an eco round coming in from FSC Sports. They have to be really careful. Kazuya is tagged down to 49 HP, by the way. Blind spray through the walls might not have affected Kazuya, but Kazuya will definitely be picking another kill against iGod. It's all in the hands of Smokia and Kohli, both of them left in a 2v5 situation. It's actually impossible to do it. Again, they can get the exit kills, as I told you. Smokia managed to get 1, get 2. He still has 85 HP left, Tanya. You should run. And also the lockdown is ready. This will be the exact time when they can go ahead and use the plant the spike, क्योंकि एक बार spike plant हो जाएगा, एक अच्छा मौका मिल जाएगा to win the round again. काफी अच्छी flawless सी शुरुआत जरूर हुई थी, लेकिन अभी के लिए वो शुरुआत डीले हो चुकी है. ओपन का प्लांट दिया जा रहा है एंड यहाँ पर काफी अच्छी प्लेसमेंट थी स्वॉर्म ग्रेनेड की, जिसकी वजह से प्लांट को प्लांट नहीं लेने दिया गया, बट विदाउट एनी डिले वाइपर मेड श्योर कि वो प्लांट कर दे. कोहली को भी टेक डाउन कर दिया गया है बीस्ट की ओर से. एक बीस्टी परफॉर्मेंस एंड आई लाइक दिस न्यू स्किन कमिंग इन. आई रियली लाइक इट. Yes, well, that was one hell of a sick finisher coming in from Kazuya and his orb. Well, unfortunately, Kazuya did go down, but his skin did not. And coming back, speaking about 3 rounds going into the favor of Axe, FSC Sports Economy was really in trouble the last round. Now they finally went for an eco. Now they have enough resources to go for 4 spy with 1 spectre, 2 phantoms and 2 vandals. Once again, this is kind of looking risky for me, Tanya. They have to look forward for a really strong game if they want to get the confirmation round against Axe. And there you go. I got made sure he does it. Kazuya going in for overconfident wishes. Not every time, buddy. I got managed to get the entry, and now with the Hunter's Fury coming into the play, is getting down to very low HP. That is 30 HP left, but we have a healer. We have 2 healers, 1 from both team coming into the play. Smokey already getting an with the op is going crazy. He's mad, but he has a method to his madness, Tanya. And what a method it was. Sonic is going to be the last man standing. 1 versus 5 with the blades from iGod. Did definitely try to end the day, but he could not. He was taken down, but ultimately it is going to be ad shot जो आएंगे, Sonic को eliminate करेंगे, and with 4 men remaining, अपने लिए एक 3rd round जीत लेंगे, which turns into an equalized battle 3 and 3. इस बार फिर से क्या यही एक stack की push अगर ले रहे हैं, we can clearly see FI Esports की ओर से अगर stack push आ रहा है, 5 player का एक साथ का push आ रहा है, तो वो साइड पर कंट्रोल भी ले रहे हैं, प्लांट भी निकाल रहे हैं एंड राउंड भी निकाल रहे हैं. यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से नैनो स्वॉर्म्स की प्लेसमेंट अच्छा स्टॉप किया जा रहा है. नॉट टू गिव एन इजी एंट्री. देखेंगे कितनी देर तक यहाँ पर होल्ड किया जाएगा. एंड ऑन टू रेसिप्रोकेट, स्मोकिया भी रेडी है टू गिव सम गुड प्लेसमेंट्स एंड यूटिलिटीज टू बी प्लेस्ड. ड्रोन को भेजा गया है, किसी को स्पॉट नहीं किया गया है. आई गॉड की एक रिस्क की एंट्री, बट बीइंग द ड्यूलिस्ट ये रिस्क तो जरूर लेना पड़ेगा. Yes, रिस्क के बिना रस्की रह जाएगा. एंड आई गेस वो रिस्क तो उन्होंने लिया है, बट आई गेस नैनो सम ग्रेनेड्स वेर अ लिटिल टू हार्ड ऑन हिम as 2 players went down coming from FSC Sports. It's a lockdown right now, a 4v3 situation. Bomb has been planted down. Well, on the brighter side, we can also say that all the players have taken very good post plant positions, Tanya. They can, coordinate with one and the other. Unfortunately, Sonic is tagged down to very low HP, and once again, Smokia using his nanosum grenades at his best gets another kill. B2 gets 1, B2 gets a double. He's gonna heal himself back, and he knows that Sova is walking right in front of him. He gets 1, but don't worry, there is sitting Smokia for the trade, and he managed to get the trade, which puts 4th round on board for FSC Sports.
and also getting the lead over here. So now there's a 1 point of lead, much more to follow. Let's see what happens, because you can clearly see Sonic का वाइपर्स पिट रेडी हो चुका है, कजुया का ब्लेड स्टॉर्म भी रेडी है। तो हम एक डिफेंडर साइड पर स्ट्रेंथ जरूर देखेंगे, देखेंगे वो स्ट्रेंथ किस तरीके से आगे जाएगी। बिकॉज यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं अल्टीमेट रेडी होने की, अल्टीमेट रेडी जरूर है, बट देन अगेन दे आर ऑन द पिस्टल राउंड, गोइंग विद द हाफ शील्ड्स एंड शेरिफ। इट इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट राउंड इफ दे विन दिस। टेबल्स माइट बी टर्न फॉर नाउ। एक पुश देखने को मिल रहा है साइड बी की ओर से, जहां पर सिर्फ एक ही प्लेयर होने वाले हैं, व्हिच इज गोइंग टू बी स्मोकिया। Yes. Fluxy going down, that means one sentinel down. A lot of util has been gone to waste right now. With the man advantage, I guess Axe Esports को कोई चांस नहीं है ये राउंड FS Esports के अगेंस्ट निकालने के लिए। स्पाइक भी ऑलरेडी प्लांट हो चुका है ऑलमोस्ट, एंड लुक एट स्मोकिया बीइंग सो स्नीकी कैंपिंग इन मिड। इको राउंड में भी कैंप कर रहे हैं, बहुत ही डेडिकेशन दिखा रहे हैं यहाँ पे। दे डोंट वांट टू गिव इवन अ सिंगल वेपन टू द हैंड्स ऑफ Axe. नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट इज फ्लिकर इन अ 1 vs 3. He gets one, he gets traded, and that is 5th round on board for FS Esports. That's a very nice comeback coming in from FS Esports, by the way. And as our attackers, we did mention previously that FS Esports needs to make sure that on the attacker side अच्छे खासे round निकाल ले, and Sonic saved the Viper's pit with the weaponry. So did Flicker. He has got the revival ready for him, resurrection ready for him. लेकिन ये वाले round के अंदर यहाँ पर FS Esports के भी 2 ults ready हो चुके हैं, coming in from resurrection and Hunter's Fury, जो post plan काफी अच्छी तरीके से काम आ सकता है। देखेंगे क्या ये strategy काम आएगी या नहीं, क्योंकि अभी के लिए immediately साइट A को ब्लॉक नहीं किया गया, साइट बी को ब्लॉक किया गया, जहां पर एक भी प्लेयर नहीं है। दैट मींस एक अल्ट वेस्ट हो चुका है। कजुया आज काफी अच्छा एंगल लेकर होल्ड करके बैठे थे, जहां से पिक किया जा सकता था, लेकिन ड्रोन का एक स्मार्ट यूजेज और हंटर फ्यूरी का भी यूज कर लिया गया है। क्या यहाँ पर कोई पिक मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिला एक भी पिक, तो बोथ द अल्ट्स आर वेस्टेड आउट। Yes. Well, the game just gets interesting and interesting even more as it has been brought down to a 3v2 situation. But सही time पे resurrection आ गया है unfortunately. Oh wait, B2 did manage to get that kill, by the way. Resurrection ही नहीं, backup भी देती अब B2 ने, जिसको गेम और आसान हो गया है। FS Esports going on to another round, and now they are on a winning streak. Tanya. Now they are on the winning streak. अच्छा खासा इको भी क्रिएट हो चुका है, एंड इमेजिन अभी TGSX टीम ने अपने लिए एक अच्छा राउंड क्रिएट किया था, जिसके चलते दे वेंट फॉर द फुल बाय एंड दैट राउंड गॉट वेस्टेड अवे। इसका मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। हम देखेंगे आगे क्या प्ले रहेगा। सोनिक यहाँ पर रेडी है स्नेक बाइट के साथ लेट एंट्री कर पाने के लिए, एंड इट इज जस्ट राइट ऑन टाइम। लेकिन यहाँ पर अब रफ यूज करके एक अच्छी स्ट्रैटेजी यूज की गई है, एंड यहाँ पर कौन को भी वेस्ट आउट कर दिया गया है। स्लो ऑफ कितनी ज्यादा देर तक स्लो कर पाएगा वो जरूर हम देखेंगे, लेकिन टॉक्सिक स्क्रीन का एक अच्छा खासा यूज एंड यहाँ पर डिले करने की कोशिश, बट आई थिंक साइड पर कंट्रोल पूरी की पूरी तरीके से आ चुका है। वॉल यूज हो चुकी है, प्लांट करने की कोशिश भी सक्सेसफुल रही है, एंड ही टू हैज सक्सेसफुली प्लांटेड दिस फाइट। Ooh, look at Sonic gets tagged by the shock dart down of 41 HP, Tanya. Well, looking forward, FS God got spotted out and is down to 5 HP. And without heal, I think it's going to be very difficult for him to take a fight. Fluxy on the other hand gets kill on towards Kohli. And ये Recon थोड़ा ज़्यादा ही players को reveal करने वाले हैं. Smoke is going on a killing spree. He got a 4K. All he needs is just one more kill to get the ace. Smokia, where are you, my man? Headshot काफी बड़े ट्रबल में, and I don't think Headshot is gonna kill Beast. He's gonna let Smokia get his ace. Oh man, Headshot, क्या ही फ्लिक मारा उन्होंने। फ्लिक काफी अच्छा था, उसके साथ 7 पॉइंट्स पर आ चुकी है टीम FS Esports, एंड अटैकिंग साइड पर नजर आ रही है। हाईएस्ट फ्रैगर स्मोकिया रहेंगे एज अ सेंटिनल। आज का दिन सेंटिनल के लिए काफी अच्छा है, हमने देखा है, एंड आई थिंक अभी लॉकडाउन भी रेडी हो चुका है स्मोकिया के लिए, तो एक हम अर्ली प्लांट भी देख सकते हैं। सो इज ब्लेड स्टॉर्म रेडी फॉर आई गॉड? देखेंगे स्ट्रैटेजिकली करेक्ट होंगे या नहीं, बिकॉज आई डिड मेंशन दैट दिस टीम डेफिनेटली हैज अ गुड ड्यूओ फॉर इनिशिएटर एंड अ ड्यूलिस्ट, एंड वही होने वाला ये पर्टिकुलर राउंड। इमीडिएट एंट्री हो चुकी है साइड ए में, लेकिन अभी तक कोई भी पिक नहीं निकाला गया है। अच्छा टास्क एंड पिक निकालने के साथ खुद एलिमिनेट हो चुके हैं, एंड शॉक कार्ड को भेजा गया है।
Browns get the revelation, लेकिन Sonic को Collie that take down कर देंगे, turning it to the advantage of players. अब अकेले player क्या करेंगे वो देखने वाली बात होगी. Well, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे. Fluxy will get eliminated as well. Collie will knock the final lane in the coffin. With that, it is a good lead created. 3 and 8. एंड नाउ दैट वाज अ कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड टर्न. मैंने सोचा कि ऑलमोस्ट 1 मिनट के लिए कि एक्स ये राउंड लेके जाने वाली है, बट थिंग्स हैव changed and they are going in favor again and again for FS Esports. And look at FS Esports, लास्ट राउंड है, बहुत सारे पैसे उनके पास, तो वो छोड़ रहे हैं. There you go. How exactly to utilize economy, while on the other hand Axe is definitely struggling to meet their ends as the Undisputed comes in and B2 gets the entry against Kazuya. Kazuya काफ़ी अर्ली पिक्स पे चले जाते हैं, काफ़ी बार फर्स्ट ब्लड बन चुके हैं उनकी टीम के लिए. As Kohli is gonna activate his Viper's ultimate, स्पाइक तो प्लांट यूं ही हो जाएगा तानिया. वाइपर स्प्लिट रेडी हो चुका है, लेकिन सामने लॉकडाउन भी लगा दिया गया है और यहाँ पर बीच बिल्कुल सही वक्त पर आएंगे और आई गॉड को डाउन करेंगे. प्लान हो चुका है दोनों ही. आज सोनिक हैज बीन डिटेन्ड, क्या वो स्पॉट हो जाएंगे, क्या वो टेक डाउन कर दिए जाएंगे, वो एक अभी के लिए 20 भी यहाँ पर चांस मिल रहेंगे. दो इफ वी टॉक अबाउट एफएस Esports, यस एक लगता है कि चीज़ें काफ़ी रॉन्ग नोट पे एंड हुआ है. आई मीन एक्चुअली सही नोट पे एंड काफ़ी नीडेड राउंड था एंड दे डेफिनेटली मेड इट इनटू देयर फेवर. Well, 4 rounds and defenders is still not bad now that they're switched down to the attackers and everyone knows that Icebox is an attacking sided map. So I think Axe can do a better comeback if they get the first pistol round in the next round. Well, interestingly, I do have a feeling that if Smokia, continues to compete with such performance of 15 kills, 4 deaths in first half, I think he'll do wonders. By the time second half ends, I wouldn't be surprised if he's on 30 kills. Absolutely, there's no surprise. अब sides change हो चुकी है attackers and defenders की. As a attacker काफ़ी अच्छा performance FS Esports की ओर से and यहाँ पर हम देख रहे थे ट्यूब एंट्री लेने की कोशिश की गई थी, लेकिन सोनिक काफ़ी अच्छी तरीके से वेट एंड प्ले ऑफ पेशेंस दिखा रहे थे, जिसके चलते बीस्ट ने भी अपने लिए एक पिक निकाल लिया है. Kazuya trying to delivering a lot of damage but unfortunately वो damage deliver नहीं हो रहा है. रिच का काफ़ी अच्छा कवर है, रैंप का काफ़ी अच्छा कवर है and is it a retake? साइट को टोटली अबैंडन करके शिफ्ट किया जा रहा है टुवर्ड्स साइड बी. Look at Smokey playing at such close note. He gets himself a kill, a double and almost a triple was coming on the way, but Flicker on the other hand started flicking his classic out and definitely did manage to get a double kill over there, Tanya. On the other hand, the spike has been picked up by Kazuya and looks like they're going to be making their way towards the mid. Oh, yes, they are making their way towards the mid as Kazuya takes down. And now it's all in the hands of B2. B2 left in a 1 versus 2 situation. The butterfly knife is very distracting, to be honest. 30 seconds Definitely, left. it is distracting, and you immediately tend to just swap the weapons and start enjoying the butterfly knife. Let's see if it is going to be the scene of enjoying. Flicker right now has sufficiently wall to avoid any backstab, but it is going to be an immediate front action coming in, and it was ultimately Sage versus Sage, where Flicker was able to take down B2 flawlessly. And on the attacking side, this is going to be an immediate first round 1. एक अच्छी लीड जरूर बना ली थी, लेकिन डिफेंड करना आइस बॉक्स में हमेशा से थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट होता है. And we saw the retake coming in. इसका मतलब this team is definitely not forcing themselves or committing themselves onto any particular side. एक TGS की ओर से मैंने देखा once they realize कि यहाँ पर पिक निकल सकता है, अपने टीम को बचाकर without losing any members immediate retake लिया गया है. फिर से एक बार एक स्टैक प्ले देखने को मिल सकता है. ऑन साइट भी देखेंगे क्या स्ट्रैटेजीज रहेंगी, क्योंकि साइट बी पर यहाँ पर हम आई गॉड को नहीं, ऑन साइट वी कैन सी FS के आई गॉड वेट कर रहे हैं ट्यूब के थ्रू. स्मोकिया की एंट्री एंड स्पॉट कर लिया गया है. B2 को देखेंगे क्या जाने का मौका दिया जाएगा. फ्लिकर वर्सेस स्मोकिया. Yep. Well, looks like Fluxery has got his crosses straight on Sage. And there you go. What a beautiful way to execute it.
He got himself a kill and now he's looking for another one. Punch enemy blood, but remaining. and is going in for the reload. 63 HP left. The shock dart coming into the play was so close. Either way, Fluxy ne kill nikal liya, and that is the 6th round on board for Axe. On the brighter side, Axe is making a comeback, and FSC Sports still has a 2-point lead. And now it's a bonus round. Definitely, it's a bonus round for FSC Sports. बट पिछले राउंड एक्सी स्पोर्ट्स ने फोर्स बाय कर लिया था तो नाउ दे हैव टू गो फॉर स्पेक्टर्स बुलडॉग्स एंड डू थिंक इट इज इनफ टू गेट द राउंड वंस अगेन क्योंकि एक अच्छा प्ले देखने के लिए जरूर मिल रहा है लेकिन ऑन दी अटैकिंग साइड अच्छा परफॉर्मेंस था डिफेंडर साइड में अभी तक भी एक भी राउंड नहीं निकला है 3 राउंड्स ऑलरेडी जा चुके हैं और यहाँ पर कुछ लाइनअप का यूज किया जा रहा है सोनिक की ओर से देखेंगे क्या एग्जैक्ट स्टार्ट हो रहा है साइड बी में एंट्री लेने की कोशिश कजुया बिल्कुल सही वक्त पर पहुंच गए हैं स्पाइक प्लांट भी हो चुका है एंड व्हाट अ परफेक्ट प्लेसमेंट ऑफ स्मोक क्लाउड हियर टॉक्सिक क्लाउड हियर एंड यहाँ पर ट्यूब किचन पर भी फोकस दिया जा रहा है कजुया प्लांट करके इमीडिएटली पिक्स निकालने की कोशिश में आ चुके हैं बीस्ट की भी एंट्री यहाँ से होगी जरूर एंड आई थिंक कजुया विल बी सक्सेसफुली एबल टू टेक 2 पिक्स फॉर श्योर ऑन द कॉन्ट्ररी एक रोक दिया गया है एंड 20 की जो शॉक डार्ट थी 2 प्लेयर्स को डाउन कर दिया गया इट इज टर्निंग इनटू अ 2v2 हाफ डिफ्यूज हो चुका है एंड हाफ डिफ्यूज एक शॉट कोशिश करेंगे निकालने की विदाउट पिकिंग एनी किल्स दिस राउंड गोज इनटू द हैंड्स ऑफ डिफेंडर्स आई वुड से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन में चले गए हैं तन्वी बिकॉज दे ऑलरेडी टुक दिस राउंड आउट एक अच्छा स्ट्रैटेजी प्लांट कर लिया गया था प्लेयर्स अलाइव थे उसके बावजूद दे लॉस्ट द राउंड एक थोड़ा सा लापरवाही हो गया या फर्स्टली इकोनॉमी एक्स स्पोर्ट्स के फेवर में नहीं था एंड secondly I had a very I had a very good feeling that FSC Sports it was an easy one for them to retake but जब players जिंदा थे तभी भी वो defend नहीं कर पाए Spike already got diffused, which also is gonna affect on their loss bonus. On the other hand, Sonic is holding in towards the mids, and we have Kazuya going in for the first pick. It's an Oppo versus Oppo. I gets spotted out, and Kazuya gets down. Now I'm pretty sure it's not gonna take that chance again of peeking. But I think it's way too early for a push. Kazuya is trying to look and see if there's anybody pushing. Flicker is going forward. It's gonna go down into the nest. Look at Kohli, he's just messing around in the map. Ooh, I got it. It was not actually an operator. In turn, it was a Marshall, which he managed to get an opening entry on towards Axe Esports. Now that the Viper is down, there's only 4 players left. It's a man advantage for FSC Sports either way. Ooh, things have changed a little too early. Headshot gets one, Kohli gets another. Beast on the other hand has putting out beast performance. A double kill and the spike also will be getting planted down. Now it's all in the hands of Kazuya. In a 1v, what happened to Kazuya over there? He had his crosshair set up on the Killjoy and Smokier took both of them in a single spray. And also now diffusing ultimately now there's a change of play and they are not pushing being on the defender side they have realized there's no point just moving ahead get your players getting picked one by one and they are saving themselves for the final call they are allowing the spike plant every single time and then going for the post plant play which is going into the favors of team FSC Sports and they should be continuing it if it is working why not usually the strats would be that defenders doesn't allow the site entry they are allowing the site entry they are allowing the plants and then they initiate the fights after post plant for now we can see Curly has got ready Viper's Pit and on the other hand Hunter's Fury as well as Flicker has got its ult ready let's see how is it going to be used IGOT has got a very good positioning to pick a knock and is he going to get the opportunity or no a site entry comes in close and unfortunately he will be taken down Kazuya is able to take down one Flicker was able to take down two turning it to a 3 versus 3 affair it is the entry of Smokia here and Smokia will be able to take one more turning it to a 2v2 that was a very good entry from Axe Esports but on the other hand they forgot that they had Headshot who was a very huge asset to the team he gave the first to double kill and now he also finished up the closing kill on towards Paste putting it 11th round on board for FSC Esports and Axe Esports
I don't know what they lacked or where they lacked, because they did start a very good entry. They got the kill on towards Igor, the Jet went down, the Viper went down, but headshot he took and he flushed the entire bomb site away. And it paid them so much. It is like they're 2 steps away from getting the first round out of best of the three. I think it is going to be a stacky push on the side A where zip lines are being used, and Igor has got a very good positioning. He might take the first pick very easily, and indeed he does. And that dash did not work up into his favor. He will be taken down. But it is Rick on that has revealed a player's existence over here. Our drone will reveal even furthermore. And we can clearly see Flicker have the resurrection ready, and Sonic will be safe, turning it to again 4v3 situation. Lockdown will be used here. Let's see, will it evacuate the opponents or will lockdown be destroyed? Unfortunately, I don't think it is going to be destroyed, turning it to a 4v2 for now. Spike down A. One enemy remaining. Well, looks like it's down to a 1v2 situation, all in the hands of Headshot, and Headshot uses his Antis Fury at the right time. He's trying to get a lot of damage done. He couldn't get the damage, but yes, he definitely did delay the bomb plant. But in despite of that, the bomb has got planted down, and Headshot knows both the positions of the player. He knows exactly where Fluxy is standing, and Fluxy might be getting that kill, and he definitely will be. And after losing 5 rounds straight, Asus Esports have managed to get back on track, get back on feet. That's the 7th round in the hands. Still with the lead of 4 points. How far are they going to go? Smokey are definitely going very strong for his team with total of 25 kills, and on the opponent side as well, nobody has reached the marker of 20. All he needs is a little bit of extra team support. Let's hope FSI God is able to deliver the duelist role that he desires. For now, we can clearly see 3 ultimates are ready on the defender's side. Smokey has got his ready, and Fluxy takes the entry. Immediate entry on the side B comes in. Clouds were used, cloud bursts were used, and God immediately heading with the Blaze Storm. Will he be able to get any pick? Viper Split will also be used to delay any entry. Let's see, is it going to be a successful attempt or no? Kazuya trying to get a pick here. Well, no, he won't be able to get an easy pick whatsoever. Yes, he did try his level best. That's a nice one. Kazuya is tagged down to a little low HP. On the other hand, FSC Sports is standing very close towards Flicker. Igor is trying to make an entry, and as soon as the Viper's ultimate go down, it's going to be a huge mess. Igor stepped out at the wrong time. That's going to be an advantage for Sage, getting the first entry over towards FSC Sports. All FSC Sports needs is just one more round to get the match point, and Axe have to make that comeback. Around almost 4 to 5 rounds are necessary for them to tie up against FS. And they have realized with only 39 seconds remaining, they will have to change the site, where already one player from the defender side has reached here, and Headshot is trying to... Oh my god, Spike what a down perfect mid. connection. Is able to not only take down 1 but 2 all together, using the recon to get even more intel coming in. Sonic will also go ahead towards the side A. Let's see if is he going to get the entry, and yes, Sonic will take down the Headshot, and he will be traded immediately by B2 here. 14 seconds and a dream of planting the spike. Will the dream come 10 true? seconds left. Now that is a very interesting question. Will the dream come One true? enemy I have a remaining. feeling yes, it will. And there you go. B2 is gonna get that match point for his team, FSC Sports. Even after losing the first pick, they managed to fall back and get it done. And the dream got shattered over here, and Smokey is still doing very good for his team. If you look at Beast, he is also doing very good. Kazuya needs to make sure he levels up. Do you notice something, that the duelist and the controllers are on the bottom 2 side. Same goes on both the ends. On the for Team TGS as well as Team FSC Sports, where we expect much more from duelists. Let's see what are they going to go ahead. Zipline being immediately used. Igor is trying to get the control over the site and disallow the entry to be very precise, and he was able to spot the enemy here. Spokia will take down Flicker. Yes. A 3v5 situation. Looks like FSC Sports has already got the advantage over. And I don't think there's absolutely any way that Axe Esports is gonna be getting away with the post plant of this.
Well, FSC Sports, they're going to be putting everything they have on the remaining. board to get this retake happen. B2, on the other hand, he's already a beast, already got himself a double kill. And there comes the killjoys locked down. The defender's killjoys locked down as nobody is left from attackers. And it's going to be FSC Sports walking away with the victory in the map of Icebox. Flawless. Defenders win. Congratulations, FS Esports, on the attackers, initiating on the attacker's side and getting the first point for yourself out of best out of three. And being the attacker on Icebox, we did mention that it was a little bit of advantage and they need to make sure that they don't lose it. And they made sure about it and got the first victory for themselves. But still, I have a little bit of complaint for the duelist. Why were you on the bottom two on both the end? Not only one team, but on both the ends. Yeah, I don't know. Maybe it was just too good for the Sentinels to make the game. They played as if, defending a bomb site or attacking and playing a post plant. It's like the biggest responsibility. Yeah. It crosses over the responsibility of the duelist as well. Just getting an entry is the job of the duelist, but doing the rest of the job is in the hands of Sentinel controller, which they played very well. Tanya, by the way, I guess Mokia deserves a lots of credits from FSC Sports. He completely turned over the table so many times, and he Yeah. got himself an ace as well. He was able to Almost deliver close a games. lot. Yeah, a very close ace we did see, and he was able to control the site. He was able to go for early finishers. He was like a all man package. He did everything that was required. Though lockdowns did not show so much of a privilege that he was desiring to get, because his lockdown was getting bursted out, but somewhere he has done tremendous job for his team to get and to reach towards what they are right now. Yes. Well, looks like a little more effort has to be done by Axie Sports. They did come down to a close score, 7 to 13 was close enough, but only if they could have got more rounds in the attacking side, it could have been an easy job. On the defending side, the score was almost going 9 to 3, but they stopped it. They made it 8 to 4. They had a safe beginning in the first half. In the second half, FSC Sports went totally crazy. Their defense setup was so strong, and Kazuya giving away a lot of first bloods to the team. Like, he is the core subject of the team, and that's a single duelist setup coming in, by the way. So if Kazuya goes down, the entry is gonna be a trouble for the entire team. And post plant, every time after Axis Sports got the plant done, their post plant positions have been in such a confusion that there is very less communication between them. Remember that one round where Smokia came from the backstab and took all the four players off. Yeah, the spray worked wonder for Smokia there as well. So even after using the Viper's pit, not getting the control post plant was a little unexpected from the side. Let's see if they are going to continue, because if we talk about the agent selection, it was equalized. It was the fight of the equals that we already mentioned, but still with the exact same revelation on both the ends. Because ultimately, as an attackers, if you are able to get the lead, as a defenders, you will be paused into exact same pattern. Now overcoming that was a challenge in beginning, where they consecutively lost 2 to 3 rounds, and then it was all sure about it that we'll make sure whatsoever we are allowing the plants, we will go for the post plants play. And certainly they were able to do it very nicely, except for once where B2 literally shattered the dream of planting. Yes, they definitely did shatter the plant. I thought the plant was gonna go down. At least they would get 300, credits for the plant. But unfortunately, FSC Sports did not let that happen. But anyway, it's still the first map. It's a best of three, guys. We just finished the first map. We have two more maps to go where you might find an opportunity to grab in one map and take it down to the desirous map. And I guess I'm looking forward for the map or scorecard. And let's see. Who are your bets on? Who is going to be the MVP, by the way? Well, The Smokia highest number for of sure. kills. Smokia for sure. And definitely he has to be named first, because the way he played, he Yes. was the first one. And here we go ahead with the map wise scoreboard. We will see all players together, but for sure, Smokia has to be on number one with total of 26 kills and only 8 deaths, well, which is very less compared to anybody else on the entire screen. Opponents as well as his very own team. B2 definitely has the Sentinel. Just imagine then V2 Sentinels doing best of the work, and rest is just history. Yes. Smokey, one hell of a player.
26 kills, 8 assists, 8 deaths, and 1 assist, completely outplayed the opponents. On the other hand, we have Beast fragging in the top, 19 kills, 16 deaths, and 2 assists. As you said, both of the Vipers are down on the board, both of the Jets are down on the board. They have to up their game, especially because we are only sitting down with 9 kills in 2 entry frags. Most of And the job was done by iGod, I guess, in the coming in from the FSC Sports, but in Axie Sports, Kazuya was needed a little more for the entry picks, Tanya. Kazuya could definitely would have done better, not even reaching the double digit marker. And talk about Sonic, well, being the controller, I would say that even after being the controller, using the Viper's Pit was not sufficient enough to get the control over the entire site. We did see players getting picked and eliminated over here. And if you look at iGod, being the duelist, not getting the highest strat, it's okay, but he did deliver an early entry towards the site that totally is predicted by the four first bloods. On the other hand, we can see Flicker going ahead, getting the first picks, and so did Fluxy. So once again, two sentinels trying to get the entry within the site, and it is going to be the initiator who picks the extra kills for the teammates and getting trying to at least get the round into their favor. On the defenders side, team TGS did initiate with a very good start, getting 2 to 3 back to back rounds, spoiling the economy here for FSE Sports. But then nothing worked against Swokia. The way he played, only man to reach towards the 20 marker and above and beyond, total of 26 kills and only 8 deaths to work out with. And Kohli, well man, you did play very good. We are seeing your kills, but your assists are also very humongous, which is the double digit, even more than your kills. That is going to be total of 10 assists coming in. Yes, 10 S's is actually a big deal. Kohli couldn't make most of the game with the kills, but he managed to do it in a way or so by getting 10 S's to his name. Now, that's the highest number of S's I've seen so far. And going down to the player versus player, I'm pretty sure it's going to be Smokia versus Beast, because both of them, they come from different roles rather than duelists. And now we can clearly say that, duelists are not the only, players in the, not the only agents that are supposed to be top fragging. We have initiators, sentinels taking top of the leaderboard. Right now we have Smokia versus TGS Beast, 26 kills for Smokia and 19 kills for Beast. Well, both of their KDR has a huge difference, Tanya. 3.25 for Smokia and 1.19 for Beast. Smokia crossing the barrier by far. We have seen various MVPs, PvP status as well as MVP. Nobody has crossed the 3 kills per mark per round marker, and here he crosses to almost 3.25, which is a good start for Smokia. And he needs to make sure he continue to be the same killjoy that he did, because he's doing wonders for his team. And this is what you would want to go ahead. Like in the map of Icebox, it was just perfect play on the attacking side, nailed it on the defender side, still getting the picks. Though lockdown did not work, doesn't matter. I'll take the picks for my team. That is what Smokia went ahead with and got the victory for his team. So somewhere Smokia deserves to be the MVP for this particular round as well. Let's see who is it going to be or who not. But coming back to Beast as the initiator, he did outshine for his team. But the duelist no needs to show up the up level up themselves to get the exact amount of kills required for the team. Yes. Yeah, Tanya. And I am totally, I mean, it's not totally like unexpected for me to see Smokia coming up as the top fragger and the MVP of the match. Definitely, yes. And I want him to be MVP once again, Tanya. In the second map, when we go down to the second map, I really want him to put out more of his performance. But more than FSC Sports, I'd like Axis Sports to put in more efforts. Like, Kazuya play a little more passive, maybe. What do you think is going wrong for Axis Sports? I really want the duelists to go ahead and get the early frags required for the team. That is what I actually feel. And I'm very sure of, if duelists are going to play the strong role required, initiators appreciated. If you go for one duelist, then the combo for initiators and the duelist is going to work just perfect. But then duelists need to go hand in hand. First pick can be taken by initiator, but then the latter has to be controlled by the duelist. I think that is where the portion was exactly neglected.
And I'm very sure of for the coming map, they are going to give the changes required to get the victory into their pockets. First semi-final match was a total clean sweep. Once again, if there's a second consecutive victory, we can see a clean sweep. But I don't think the way the fights took in onto the attacker side as well as on the defender side, where the sides were switched, the roles were switched, that is where I did see some changes coming in. So maybe not in the map of Icebox. I still anticipate that we can see an equalized fight, balanced fight into the next upcoming map for the day. Yes, the next upcoming map for the day. I mean, it's still a suspense. You guys have to wait till we go back to the next map. Well, meanwhile, I think me and Tanya are gonna take a short break, and we'll be right back with you guys with the last map. I wouldn't say last map though, second map going live, because I'm really looking forward for the Deciders map to come up. Got him. Let's go. Got him. Let's go.
Let's go. स्कोर से एक अच्छी अटैकिंग साइड से और इस बार नेक्स्ट मैप जो है बाइंड का होने वाला है। यहाँ पर भी एफएससी स्पोर्ट्स ने प्लेयर्स सिलेक्ट करना शुरू कर दिया है। कोहली बनेंगे इस बार ब्रिम। वेल स्मोक्स की नेसेसिटी जरूर रहेगी। कोहली को हमने देखा जरूर है पिछले मैच में, लेकिन इस बार वाइपर की तरह नहीं, हम ब्रिम की तरह देखने वाले हैं। एंड इफ वी हेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्लेयर, आई गॉड फिर से एक बार ड्यूलिस्ट की तरह नजर आएंगे, लेकिन इस बार वो जेट नहीं बनेंगे, इस बार वो बनेंगे रेज। और बी2 फिर से एक बार सेज बनेंगे। और यहाँ पर स्मोकिया को हम एज अ स्काई देखने के लिए पसंद करना चाहेंगे, क्योंकि स्काई के फ्लैशेस सबसे ज्यादा डेडली होंगे। स्मोकिया एज अ केजे, एज अ सेंटिनल, he did go outshine overboard for his team. Let's see as the initiator how many more frags can he go ahead with. Now on the other side अगर हम कंपेयर करते हैं, बीस्ट फिर से एक बार हमें सोआ की ओर से नजर आएंगे। If you look at Flicker right now, Flicker is going ahead as a sky. And if you look at Kazuya, well, Kazuya, he was jet then, he is jet now, and it is going to be Fluxy to Select changing the your roles as agent. well. And I will always appreciate Cypher on the grounds of bind, क्योंकि बैकस्टैब रोकने में काफी अच्छा इंपॉर्टेंस रखता है। देखेंगे आगे किस तरीके की स्ट्रैटेजी रखना चाहेंगे, क्योंकि अभी के लिए अगर हम टीम्स की बात करते हैं तो यहाँ पर एक ही ड्यूलिस्ट नजर आ रहा है डिफेंडिंग साइड पर। एंड वी कैन क्लियरली सी वन कंट्रोलर, one sentinel and two initiators to work out with. On the other hand, अगर हम attacking side पर जाते हैं, we can see two initiators and one sentinel to work out with. Alongside we can clearly see Astra as a controller as well as Jet as the duelist. हम देखेंगे B2 की strategy कहाँ रहेगी। Usually हम balls जो होती है वो देखते हैं A side पे block करने के लिए use कर देते हैं, and through the cave Flicker and teams are moving ahead towards side B. Let's see, backstab रोकने के लिए trap fire लगा दिए गए हैं। वेल एक एंटिसिपेटेड जगह है, यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जरूर यहाँ पर एक बैरियर होगा जहाँ पर हम एंट्री इमीडिएटली नहीं लेंगे। साइट का फोकस ए साइड पर दिया जा रहा है। क्या इजी एंट्री होगी, वेयर वन इनिशिएटर एंड वन सेंटिनल इज ऑलरेडी कवरिंग द साइट ए। साइट बी पर ज्यादा फोकस दिया जा रहा है, जहाँ पर एक ड्यूलिस्ट, एक कंट्रोलर और एक इनिशिएटर को रखा गया है। कोहली अच्छी तरीके से यहाँ पर स्मोक डालते हुए नजर आएंगे, लेकिन उससे पहले साइट एंट्री कहाँ पर जाएगी वो देखने वाली बात होगी। एक को डॉच कर दिया गया है, अबैंडन कर दिया गया है, इमीडिएटली एक अच्छी एंट्री देखने के लिए मिल रही है। देखेंगे हम ये एंट्री किस तरीके से जाएगी। आई गॉड यहाँ पर डेफिनेटली एक पिक निकालने की कोशिश करें, पेंट शेल का एक यूजेज देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो स्काई स्मोक्स थे उसे डॉच करके साइट में एंट्री आ चुके हैं। कजूया यहाँ पर वेट कर रहे थे एंड सक्सेसफुली स्मोकिया को टेक डाउन कर देंगे। बीस्ट विल टेक डाउन द अदर, टर्निंग इट टू अ 5v2 अफेयर। एंड अभी भी इनिशिएटर एज वेल एज यहाँ पर जो मोस्ट एंटिसिपेटेड प्लेस था वहां से B2 हैसल में क्योस में एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। ब्लॉक जरूर हुए थे बट वाज वेस्टेड अवे। सो नाउ डेफिनेटली टीजीएस को पता है कि ये यहाँ पर से प्लेयर्स एंट्री लेने की कैपेबिलिटी रखता है। एड शॉट को थोड़ा सा डैमेज पड़ता है थ्रू द हुक का। B2 एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये Last player standing. Flawless. क्या ये एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट रहेगा? जी नहीं। सोनिक यहाँ पर 2 पिक्स निकाल लेंगे और फर्स्ट राउंड जाएगा टीजीएस की फेवर में एज अ अटैकर ऑन द मैप ऑफ बाइंड। वेल लेट्स सी बाइस कैसी रहेंगी। क्या यहाँ पर हार्ड बाई किया जाएगा या फिर एक अच्छा खासा सेव। फ्लक्सी एक रिपीटेड ट्रैप फायर सेट करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड जो भी हो व्हाटएवर दे आर ट्राइंग टू गो अहेड विद, अगर ए साइड पर पुश भी देते हैं अल्टीमेटली दे आर टेकिंग द रोटेशन एंड हेडिंग टुवर्ड्स बी। यहाँ पर सोनिक के स्टार्स भी सेटल होते हुए नजर आएंगे। देखेंगे सोनिक के प्लेसमेंट स्टार्स के कैसे काम आएंगे। प्रीवियसली एज वेल
सोनिक वाज द वाइपर एज अ कंट्रोलर, इस बार हम उन्हें एज एस्ट्रा देख सकते हैं। ड्रोन को भेजा गया है, एक अच्छा फ्लैश फ्लिकर की ओर से एक पिक ले लिया गया है और यहाँ पर स्काई स्मोक के चलते इमीडिएट एंट्री नहीं ली जा रही है, बस शूट की जा रहा है एंड B2 यहाँ पर एक ही नहीं 2 पिक्स कर लेंगे एंड अपने आप को हील की जरूरत नहीं है, इसीलिए इमीडिएटली हील दे दिया गया है। और लेट्स सी आगे क्या रहेगा, बिकॉज अंटिल नाउ एक लेस हो चुके हैं नंबर्स में, जिसके चलते डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन फिर से एक बार दूसरी साइड पर उलझाकर इमीडिएटली स्पाइक प्लांट कर लिया गया है। पेंट शेल का यूजेज डैमेज जरूर डिलीवर हुआ है, आई गॉड ने साइट एंट्री कर ली, लेकिन सोनिक ने बेटर वे में स्पॉट कर लिया, टर्निंग इट टू 1v2 अफेयर। क्या B2 यहाँ पर डिफ्यूज कर पाएंगे एंड थ्रू द हुक इज कमिंग, डेफिनेटली बीट्स ने रियलाइज कर लिया है, लॉन्ग का प्लान किया गया है। एस्ट्रा यहाँ पर नोआ पल्स का ग्रेविटी वेल का यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, देखेंगे क्या वो काम आएगा या नहीं। सोनिक यहाँ पर अपने लिए सेकंड किल सिक्योर कर लेंगे, B2 को टेक डाउन कर देंगे एंड सेकंड कॉन्सिक्यूटिव राउंड्स गोइंग इन द हैंड्स ऑफ टीम TGS। अब ये एक हार्ड बाई राउंड क्रिएट हो सकता है, देखेंगे कि अगर FS Esports यहाँ पर कुछ चेंज नहीं करती है, डिफिकल्टी क्रिएट हो सकती है। FS Esports हार्ड बाई करते हुए नजर आएगी और एक्सेप्ट फॉर एज शॉट सबके पास डबल आर्मर फुल आर्मर रहने वाला है। TGS Esports यहाँ पर विद द स्पेक्टर एंड अ फैंटम नजर आएगी। वेल 2 consecutive round, 1 still a deficit enough to not go ahead and get the ARs required। क्या फिर से एक बार B का पुश होगा, ड्रोन भेजा गया है just to get them engaged कि भाई ए साइड पर एंट्री आ रही है, बट आई थिंक दिस टाइम इट इज नॉट जस्ट द एंगेजमेंट, यहाँ पर एक कमिटमेंट नजर आ रही है। वॉल को ब्रेक कर दिया गया है एंड ड्रोन को भी भेजा गया है। एज शॉट इज ट्राइंग टू रिवील द बाथ एरिया, इंडीड चेंजिंग द माइंड, बात रिवील करने के बदले लॉन्ग को ही रिवील किया जाएगा। फ्लिकर इज आल्सो स्टैंडिंग राइट ऑन पॉइंट, एज शॉट की नजरें बात पर रहेगी, विल ही बी एबल टू गेट द पिक। कमिट टोटली किया जरूर गया था, लेकिन हल्का सा चेंज ऑफ प्लान्स नजर आ रहा है। आई थिंक सोनिक इज टेकिंग द रोटेशन, लेकिन लिटिल डज ही नो कि वहां पर ऑलरेडी कोहली वेट कर रहे हैं। कदुया को डाउन कर दिया है B2 ने, हेडशॉट ने फ्लक्सी को डाउन कर दिया। नाउ मैन टू मैन डिसएडवांटेज या एडवांटेज किसी के पास नहीं है। इट इज एग्जैक्टली 3v3 अफेयर एंड नाउ इट इज टर्निंग इनटू अ 2v2। नाउ वी कैन क्लियरली सी 2 हीलर्स नजर आ रहे हैं फ्रॉम FS Esports ऑन द अदर साइड, 1 इनिशिएटर एज वेल एज कंट्रोलर। प्लांट नहीं किया गया है, अभी भी बहुत वक्त है प्लांट करने के लिए। देयर टोटल ऑफ 45 सेकंड्स टू वर्क आउट विद एंड एक अच्छा फ्लैंक, एक अच्छा रोटेशन और प्लांट देने का मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि स्पॉन से यहाँ पर रोटेशन लेकर आ चुके हैं FS Esports। प्लांट जरूर हो रहा है, स्पाइक हील भी कर चुके हैं प्लेयर्स, स्पाइक सक्सेसफुली प्लांटेड। 20 यहाँ पर रिकॉन डार्ट डाल रहे हैं, लेट्स सी क्या रिवील होगा, कुछ भी अनफॉर्चुनेटली नॉट अ गुड रिवलेशन। एक नेब्यूला के पैकेज की वजह से अच्छी तरीके से ब्लू को ब्लॉक किया गया है। B2 अपने आप को हील करेंगे एंड आई थिंक दिस माइट बी द फर्स्ट राउंड इनटू द फेवर्स ऑफ टीम FS Esports एंड सर्टेनली इट इज। एक अच्छा ट्राई किया गया, एक सक्सेसफुल विन राउंड दिया गया और हार्ड बाई का जो राउंड था अपने फेवर में एंड किया गया। सो नाउ इट इज टर्निंग इनटू 1-2, स्टिल लीड में जरूर है TGS, लेकिन मौके अभी भी बाकी रहने वाले हैं। FS Esports अब क्या स्ट्रैटेजीज लाएंगे? हार्ड बाई का राउंड जीतना इज इक्वल टू इंक्रीजिंग योर इकोनॉमी टू द बेटर साइड एंड आई एम वेरी श्योर ऑफ इट इज टोटली इंक्रीज। कोहली एज वेल एज आई गॉड ने अभी तक एक भी पिक नहीं निकाला है। नाउ which side are they committing on to? P को ब्लॉक किया गया है। Are they going for the side B? Let's see if they are able to or no, क्योंकि अभी के लिए हम देख पा रहे हैं कि साइड B पर स्प्लिट करने की कोशिश को डिक्लाइन किया गया है। एस्ट्रा के स्टार प्लेसमेंट्स अच्छे थे बट इट डिड नॉट वर्क, नोआ पल्स डिड नॉट वर्क एज प्लान। ट्रेल ब्लेजर का यूज किया गया है। फ्लिकर साइड में एंट्री लेते हुए पता चल चुका है कि साइड में थ्रू एंट्री लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन क्या वो मौका मिलेगा लैब्स के थ्रू एंट्री करने का? एक अच्छा फ्लैश रियलाइजिंग के बाद में भी यहाँ पर एनिमीज हैं। सोनिक को साइड कंट्रोल मिल चुका है, जिसके चलते स्पाइक इमीडिएटली 20 प्लांट करते हुए नजर आएंगे। तो एंड स्टिल लेस इन नंबर्स हैं, स्पाइक प्लांट करने में बिल्कुल भी डिले नहीं हुआ है। हाउ फर्दर मोर विल इट गो, वी आर गोइंग टू गेट टू सी। एंड यहाँ पर केज ट्रिगर राइट ऑन टाइम एज वेल, डिले करने में काम आ रहा है। एंड कोहली अपना अकाउंट ओपन करेंगे, लेकिन अल्ट रेडी हो चुका है B2 का। क्या अल्ट यूज करना चाहेंगे? यस, यहाँ पर रेजरेक्शन दे दिया गया है। B2 ने
हैं रेजरेक्शन देकर One और एक enemy पिक भी remaining. निकाला है, टर्निंग इट टू अ 3 वर्सेस 1 अफेयर. नाउ नो मोर. यहाँ पर लास्ट कॉली डज वंडर्स एंड इट इज गोइंग टू बी सेकंड राउंड इनटू द हैंड्स ऑफ टीम एफएस Esports, equalizing the score. Defenders won. अब देखेंगे आफ्टर क्रैशिंग द इकोनॉमी ऑफ टीजीएस Esports आगे किस तरीके से बढ़ना चाहेंगे. फिर से एक बार ऑन द डिफेंडर साइड हम स्प्लिट देख रहे हैं 3:2 का. साइड बी पर 3 प्लेयर्स को होल्ड कराया जा रहा है, वेयर एज ऑन द साइड ए वी कैन सी ओनली 2 प्लेयर्स. प्लांट जितनी भी बार हुआ है साइड ए पर हुआ है, स्टिल वहां पर कम प्लेयर्स को रखा जा रहा है ऑन द डिफेंडिंग साइड. लेट्स सी क्या इस बार फिर से एक इजियर एंट्री देखने को मिलेगी, क्योंकि एक स्टैक अप प्ले नजर आ रहा है. मिड को ट्रैक फायर करके आगे आते हुए हमें नजर आएंगे फ्लक्सी, और एक प्लेयर ने ऑलमोस्ट अकाउंट खोल लिया है एंड ट्रेल ब्लेजर को स्मोकिया छोड़ना चाहेंगे. अनफॉर्चुनेटली ये एक वेस्ट ऑफ यूटिलिटीज है, कुछ भी रिजल्ट नहीं आया. फ्लैश भेजा गया एंड द प्लेयर इज फ्लैश, और यहाँ पर भी स्ट्राइक अच्छी शुरुआत. यहाँ पर ऑर्बिटल स्ट्राइक किसी को डैमेज नहीं देगा, अल्ट वेस्टेज जरूर हुआ है, बट राउंड डेफिनेटली फेवर्स में आ चुका है एफएस Esports के. काफी अच्छी शुरुआत, बैक टू बैक 3 राउंड्स गोइंग इनटू द हैंड्स ऑफ एफएस Esports. 5 राउंड्स डाउन, लीड पर थे टीजीएस Esports और अब वो लीड को तोड़ दिया गया है. इंडीड लीड पर आ चुके हैं एफआई Esports एंड फिर से एक बार लॉन्गर रोटेशन को ट्रैप फायर में सेट कर दिया गया है. स्पाइक कैन बी एडजस्टेड है जस्ट इन केस इफ देयर इज एनी बैक स्टैब, एंड काफी अच्छी प्लेसमेंट पर छोड़ दिया गया है स्पाइक को. कौन सी साइड को कमिट करेंगे ये प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि हमें 2 प्लेयर्स नजर आ रहे हैं साइड ए को कमिट करते हुए एंड 3 प्लेयर्स नजर आ रहे हैं साइड बी को. स्पाइक किसी के हाथों में नहीं होने वाला है. आई गॉड इज रियलाइजिंग देयर समबडी हियर, जिसके चलते पेंट शेल डाल दिया गया है. बूम बॉट को सेव कर दिया गया. ऑन द अदर हैंड कजूया ने कोहली को टेक डाउन कर दिया है. अभी के लिए स्मोक जरूर सपोर्ट करने वाले हैं, बट साइड में एंट्री मिलेगा या नहीं वो एक क्वेश्चन होने वाला है. एंड इवन इफ दे आर मैनेजिंग टू एंटर, स्पाइक किसी के पास अभी के लिए नहीं है, एंड दिस इज अ टिपिकल स्ट्रैटेजी गोइंग ahead in the map of mine. Trailblazer का usage coming in from Smokia, getting the intel required. यहाँ पर spot कर लिया गया है opponent को, क्या डाउन भी किया जाएगा. Now realizing कि अगर एक प्लेयर शॉट पर है तो लॉन्ग पर भी हो सकता है, लेकिन फ्लैश नहीं आया. ऑन द कॉन्ट्ररी यहाँ पर हंटर्स फ्यूरी का यूज किया जा रहा है. हंटर फ्यूरी के साथ साथ सीकर्स भी छोड़े गए, बट आई गॉड यूजिंग जज इज एबल टू टेक डाउन 1, टर्निंग इट टू अ 4v2 अफेयर. एक अच्छा प्ले देखने के लिए मिल रहा है. B2 यहाँ पर एंट्री ले लेंगे एंड डेब्यूला के थ्रू कजूया और एक पिक ले लेंगे. एक शॉट को टेक डाउन कर दिया गया है. इट इज अ 1v4 अफेयर. लेट्स सी क्या एफएस Esports ये क्लच निकाल पाएंगे. B2 अकेले क्या ये सॉर्ट आउट कर पाएंगे. वॉल बैंक करने की कोशिश भी एक नेग्लिजिबल अटेम्प्ट है, बट स्टिल लेट्स सी इफ द प्लेयर इज गोइंग टू ट्राई टू सेव द वेपन और पिक अप द फाइट बाय टेकिंग 2 किल्स. अभी के लिए नेबुला एक अच्छा खासा कवर बना हुआ बैठा है, बट सोनिक हैज रियलाइज्ड कि यहीं से प्लेयर की एंट्री हो सकती है. फिर से एक बार यहाँ पर एल्बो के चलते एक रोटेशन पर फोकस दिया जा रहा है, एंड आई थिंक एक सेव की और ये गेम आगे बढ़ रही है. कजूया यहाँ से क्या अलाव करेंगे वो सेव या फिर नहीं, वो एक क्वेश्चन होने वाला. आमना सामना हो चुका है एंड डेफिनेटली B2 यहाँ पर एक पिक निकाल कर अपनी वेपन सेव कर लेंगे, एंड वैंडल इज मस्ट सेव आफ्टर लूजिंग 1 राउंड. ये एक बाइंड का मैप इतना डेडली होता जा रहा है. इट इज टर्निंग इनटू अ इक्वलाइज्ड स्कोर 3-3. B2 being the sentinel, highest fragger रह चुके हैं. सोनिक being the controller, highest fragger हैं अपनी टीम से. एंड यहाँ पर अगर हम अल्टीमेट की बात करते हैं, हंटर्स फ्यूरी रेडी है ऑन द डिफेंडिंग साइड. ऑन द अटैकर साइड हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि एस्ट्रल फॉर्म रेडी है एज वेल एज ब्लेड स्टॉर्म रेडी है. एक अच्छा पुश लेकर साइड एंट्री हम एंटिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन क्या वो मौका दिया जाएगा या नहीं वो एक क्वेश्चन होने वाला है. आई गॉड यहाँ पर हुका व्यू लेकर बैठे हुए हैं. देयर इज नोबडी एंटरिंग देयर एज वेल एज यहाँ पर मोस्टली दैट इज व्हाट आई ट्राई टू प्रेडिक्ट एज ए साइड को कमिट नहीं किया जाएगा. बात पर हम डेफिनेटली एक प्लेयर को देख पा रहे हैं. 20 यहाँ पर एंगेज करके रख रहे हैं बाय सेंडिंग द शॉक डार्ट, लेकिन इट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी अगेंस्ट टीम एफएस Esports. बात का वॉल बना लिया गया है. स्काई स्मोक्स आए हैं एंड यहाँ पर अल्ट ऑफ भी पिक हो चुका है. सीकर्स रेडी हो चुके हैं स्मोकिया के. वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड इनिशिएशन, अ गुड हंटिंग, एंड लेट्स सी क्या सीकर्स अपना कमाल दिखाएंगे. फ्लैश आता है, नोबडी गेट्स फ्लैश्ड फॉर नाउ. कजूया यहाँ पर अल्ट ऑफ पिक करने की कोशिश करके डीले कर रहे हैं. कॉली स्टिल वेटिंग ऑन द बी लॉन्ग साइड. पिंक शेल आएगा, डैमेज बिल्कुल भी नहीं देगा. यहाँ पर वॉल ऑटोमेटिक डैमेज हो गई है, जिसको रियलाइज करके शॉक डार्ट डाले जाने टू डिले द साइड एंट्री. क्या B2 यहाँ पर
कैंप करके होल्ड करके प्रॉपर डिले करवा सकेंगे एंट्री में. स्मोकिया कम्स इन एंड कोहली की मॉली इज इनफ टू टेक द फर्स्ट डाउन, फर्स्ट पिक फॉर द टीम, टर्निंग इट टू अ 5v1. लेकिन ज्यादा देर तक नहीं. सोनिक यहाँ पर ड्यूलिस्ट आई गॉट को टेक डाउन कर देंगे. नाउ इट इज एग्जैक्टली 4 वर्सेस 4. सोनिक विल टेक डाउन नॉट ओनली 1 बट 2 एज वेल. फ्लक्सी भी अच्छा खासा टीम सपोर्ट दिखा रहे हैं एंड यहाँ पर टर्निंग इट टू अ 3v3 लेस नंबर्स एंड पोस्ट प्लांट खेलने की तैयारी से हेडशॉट रेडी थे. थोड़ा सा जल्दी यूज कर दिया गया है. ऑल दे वांट टू डू इज मेक श्योर कि प्लांट ही ना हो एंड आई 10 थिंक seconds प्लांट left. जरूर हो जाएगा. अर्ली यूजेज ऑफ हंटर्स Spike फ्यूरी. planted. Two versus 4 still continues. Beast trying to hold into the container right now. कितनी ज्यादा देर तक यहाँ पर बैठना अलाव होगा. Beast यहाँ पर हाइट का अच्छा एडवांटेज लेने की कोशिश है. शॉट a little early trial of delaying the plant did not end up into a good one. Does B2 फिर से एक बार last man standing for the team and I don't think it is going to be enough. फिर से एक बार एक पिक लेकर शायद वैंडल को सेव करने की कोशिश की जाएगी and Sonic हर बार ये मौका नहीं देंगे. Well, this round definitely goes into the hands of Sonic being the MVP for this particular round क्योंकि 3 पिक्स निकालने में सक्सेसफुल रहे थे और जो लीड चली गई थी TGS Esports की वो फिर से एक बार आ चुकी है. मैप फाइंड बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होते जा रहा है द वे दे आर प्लेइंग. 3 and 4 going ahead. What will happen is going to be a question for sure. Let's see what happens because highest trigger अभी भी FS Esports के B2 रहने वाले हैं and वो हॉल को यूज करके स्मोकिया वॉल के बाहर है. विल ड्रोन अलाउ. ड्रोन बिल्कुल भी यहाँ पर फोकस नहीं दे रहा. यहाँ पर एक इजी पिक निकालने की कोशिश. ट्रिगर डिसिप्लिन नजर आ रहा है. 2 प्लेयर्स यहाँ पर जा चुके हैं. स्मोकिया अपने आप को होल्ड कर रहे हैं. वेल दिस इज हेल ऑफ अ प्ले सीन एंड ब्यूटीफुल स्मोकिया क्लचिंग इट. प्ले ऑफ पेशेंस देखने को मिला. ट्रिगर डिसिप्लिन देखने को मिला स्मोकिया की ओर से and this is what exactly you would want to equalize the score to 4 and 4. Sonic ने यहाँ पर एक नहीं 2 पिक्स ले लिया. Shot has been taken down. So is Smokia down to 1v2 and third was taken down as well. But then it was a thrifty round won by FS Esports and turning the score to 4 and 4. Should I play some stars in this reality? Yes, that's definitely true, Tanya. And yes, Elika is back. Sorry for the little delay. And looks like the score has already come down to 4-4. And the competition is going really well between Axe Esports and FS Esports. Compared to Icebox, I think the competition is getting more interesting here. The fun fact that, Axe is starting on the attacking side and they already have 4 rounds in their hands, Tanya. That means like the minimal amount of rounds which was needed have already been picked off, and that was a crazy entry from Sonic over towards Collie with an immediate trade coming in from B2. Smokey is trying to get the rotations cut down and Flicker, Sky versus Sky, and there comes the resurrection. Flicker goes down with the flash and not the flash. There you go. Collie does not, it doesn't matter for Collie, is gonna get that shot through the flash, takes down Flicker, left in a 5v3 situation. Defenders have a huge advantage right now. They have two-man advantage. They can get the post plan done very easily. They can get the retake very easily unless Fluxy has some plans, but yeah, there you go. Fluxy goes down in the flames as Sonic gets 1. And I got goes down because you're going in for an immediate trade. And there comes the showstopper. Landed in the wrong place. Kazuya tagged down to very low HP, standing very close. I will put the last nail in the coffin and make it 5th round on board for us. And again, the tough competition gets tougher here. Lead जो team TJS बनाकर बैठी थी वो अब आ चुके हैं into the hands of FS Esports. B2 still being the highest tracker on the other side. I appreciate all the play coming in from Sonic. The way every single round Sonic is able to use the ult, and then again ult will be ready real soon as well. Kazuya का Blade Storm हमें नजर आ रहा है, ready हो चुका है. Smokia की Seekers नजर आएंगी. Well, Smokia ने शुरुआत काफी अच्छी करी है, at least after the 3rd round. Let's hope this शुरुआत
वर्क्स until the end as well. यहाँ पर साइड बी को कमिट करने की कोशिश की जा रही है. एक अच्छा प्लेसमेंट है स्पाई कैंप का और ट्रेल ब्लेजर आ चुका है to get the exact intel required and waste out कर दिया गया है. Let's see what comes next. Well, what comes next is I got the first pick. Yes, I got का first pick तो आ चुका है, but Kazuya ने immediately trade कर लिया है. Kazuya gets flashed and now he's getting haunted and the blades won't come into the hand. It's Smokia against him. Smokia will take that frag down with Sonic going as a beast with the sheriff. Gets one. And now Smokia is in trouble. It's down to 5 HP. Barely surviving. Flicker has a flash and the wolf as well. Sonic is trying to go for a backstab. He's slowly trying to approach for Kohli. If he manages to pushes the smoke, then Sonic can get a huge turnover of the game here. A 3v2 situation. It's all in the hands of Sonic right now. Kohli, is he going for the peak is the question. And I have a really good feeling that Kohli might get taken down. He gave away his position and there comes the recall. Oh my god. I have a very good feeling that Kohli will take both of them or will go down. Yep, there you go. He goes down in the flames and so will Smokia. It's down to a 1v2 situation right now. Headshot is going to be the man. A 1v1 right now. And there you go. Headshot is not going to let that 1v2 go into the favor of Axe. He's going to take both of the players down. तानिया यहाँ पे बहुत ही बड़ी गलती हुआ था. दोनों एक टाइम पे पीक लेते तो काश वो राउंड जीत पाते. तानिया ये एक गलती हो गई. अल्टीमेट का भी यूज कर लिया गया. सीकर्स वर आल्सो यूज्ड एंड टू प्लेयर्स बीइंग अलाइव एंड एक एडवांटेज था जिसको जानबूझ के डिसएडवांटेज में कन्वर्ट करके करा दिया गया. गोइंग 1 by 1 डिड नॉट एंड अप इनटू द फेवर एंड इसको प्रॉपर्ली अच्छी तरीके से यूज कर लिया एंड एज शॉट टेकिंग अवे द राउंड एंड क्रिएटिंग द लीड ऑफ 1-2 6 स्कोर अभी भी एफएस ई-स्पोर्ट्स का है. ट्रेल ब्लेजर को डिस्ट्रॉय कर दिया. Kazuya ने इमीडिएट बाथ रश नजर आ रहा है जो अभी तक स्टेप नहीं लिया गया. ultimately लिया जा रहा है. He is able to take down one, but then dodging the second. काफी अच्छा blind आया हुआ है. Holding into the cloud burst for now. Going fall back and flicker का trailblazer आया हुआ है. Damage जरूर deliver दिया लेकिन on the other hand Kohli यहाँ पर Kazuya को take down कर देंगे. Turning into a 3 versus 3 affair. I got this one. yes, it's a 3 versus 3 situation, but definitely doesn't look like it's in the favor of Axe right now. Kohli gets one, Flicker gets immediately traded, but Smokey on the other hand gets that kill, which means it's the last person standing down for Team X, and that is Astra. Well, Sonic definitely did take a teleport, and he will go down immediately by iGod. Interesting that iGod has actually picked up Raze in the map of Bind. And look at the agent picks. There is a double initiator setup from both of the teams. Absolutely double initiator scene and यहाँ पर I think के controllers पर भी focus काफी अच्छी तरीके से दिया गया है. They are happy and content with one duelist each. Kazuya is par comparatively from previous time. This time he is definitely being very good for his team. But talking about Smokia, well, he is definitely trying to be a very good support. फिर से एक बार Kazuya का एक repetitive strategy नजर आ रहा है. Entering through the baths, क्या यहाँ पर एक easier entry मिलेगा? And now committing towards A side is definitely undeniable. लेकिन Sonic has got different plans. यहाँ पर एक pick ले लिया गया. With that one pick also gets the off and was dealt. Sonic did tank a lot of damage. What's next? Well, go back foot. आपके पास तो off आ चुका है. And Smokia got this free kill. Sonic was just having a blast after getting the op in the hands and what a play. एक अच्छा I don't know एक अच्छी शुरुआत Smokia की थी and I don't know what made him dance. Yeah. I mean, कभी कभार players अपने दिमाग से बाहर हो जाते हैं and I guess that's what happened. And look at Kazuya playing so aggressively. Gets one, gets double. That's just crisp headshots all over the place. And Smokia is making his way over towards the U-Hauls, which is the biggest mistake because Kazuya is standing over there with the Vandal in his hand. And he never lets anyone pass out of his sight. And there we are, the first half going into the favor of FS Esports. 7 rounds for them and the defenders, where Axe completely destroyed them in the attacking with 5 rounds. 5 rounds is actually a good note to start with, Tanya, in the attacking side, especially in a map like Bind.
They have got a good lead to work out with. Sonic certainly could have saved it, could have changed the scenario, got the first pick for the team. Unfortunately, not being able to continue, having a gala time. This is the exact prize that 1 point is going to. This was a totally snatched round by FSE Sports still. Now, as the defenders, we did see how FSE Sports went ahead. Now, entering the site is also going to be difficult, as equal to as it was for Team X. Let's see how they are going to enter. Well, immediately commitment coming in for the side B. No lurking, no confusion, and sky smokes also being placed right here. Astra smokes are also coming on the court. How will it work? Initiator doing its work. Beast will send the recon. What will the intel will be? That is going to be a question, and Kohli still waiting for the players to join in to party. Yes. Well, looks like it's going to be a fun party unless Axe loses this round. Maybe it's getting quite close right now. Headshot gets one, Smokia gets one. It's a 3v2 situation right now. Well, Sova is quite tagged down to very low HP. Headshot and Smokia are gonna put both of them to an end. And there we are, FS Esports getting the first round in the second half. 8th round for them. And Axe, I don't know how they lost that one. They had the control over the map of B-bomb side, but somewhere they lagged. I think pushing back towards the CT and not having control over towards hookah and especially the elbow created a huge impact. Or maybe realizing that the push is coming for the side B, they need to make sure to send 3 players for the defender side on side B. Let's see what is Beast up to. Well, Beast will send the recall, realizing there's a lot of danger, and paint shell being sent by iGod. Will he be able to take down Kazuya? Yes, he will be taken out. Duelist of the team is already down, and iGod is giving a strong push. Let's see if the spike planting is going to be an easier affair. Immediately, we can see wall barrier being created. iGod doesn't even know that he has to face not only one but total of 2 players just through that spawn island, and Fluxy waiting with the spike cam, realizing there's nobody, and this was easiest plant available here. Yes. Well, looks like it's a good beginning after all for FSE Sports, but they still have lost a player. If the Spectre can be revived by someone, it can be an easy factor maybe. But Axis Sports, they still have 3 players to go. iGod gets one, Kohli gets one. It's all in the hands of poor Sova. Oh my god, he's not gonna stop pressing that W. Oh my god. Just went onto the face of Sova. Gets that kill. Now it's a bonus round for FSE Sports. 9 rounds in their favor. And Axe, they are sitting on the throne. They're sitting on the defender's side in the map of Bind. 1 round, like this is their chance to get the round into their favor. It's their full buy round. If they play it and execute it properly, Tanya, they can make the comeback happen. They can definitely, because on defender's side, we are seeing Kazuya doing the sniper work. Let's see, he is able to pick, and he has got a very good position as well on site B. Got a complete control this time. They have changed the strategy, just that I mentioned. 3 players are on site B. Drone will be destroyed, but it did get enough intel to work out. Switch shock darts will be exchanged. Nobody was exactly delivered with the damage. Hookah entry coming in very close. Kazuya is already ready, and this is the exact round that is required. Let's see if Kazuya is able to get the first pick for his team. Well, first pick is already being drawn. Is he going to get? And a push from Sonic. Now this is a little risky. Yes, it looks like it's going to be a very, very merciless fight coming in from Axe Esports. Well, although FS Esports is down to last 3 players over towards the long, I think a good op can make a lot of changes. Kazuya is putting down the op over towards the long. He gets a kill or he loses. And I think it's down to 12 HP. Absolutely, there's no way that he can survive any spray. B2 gets spotted out over there. He's receiving a lot of shots through the generator. 2 of the players tagged down to very low HP from Axe Sports. There is a chance that FSE Sports can do this round. Oh, there you go. Beast and spray takes the most important player, the iconic player Smokia down, and B2 all by himself will also go down. And it's all in the hands of Kohli in a 1v2 situation. Well, interestingly, both of the players were down to low HP, but Beast gets the last kill, and that is a very necessary round for Axe Sports. 6th round for Axe Sports, and that's the first round in the second half they have.
Finally, we get to see some momentum getting on by Team TGSX Esports. Let's see what comes next here. The score is 1-0, ladies and gentlemen, and this is the second map for the day, and it is going to be bind, as you can clearly see. Lead of 3 points is into the hands of Team FS Esports. Are they going to sustain? Are they going to maintain this lead? Or if the way Team TGSX is trying to push in, side B totally conquered once again by the sniper of their team, and this is exactly that was missing, and now they have realized that what is missing need to get a full stop. Successfully putting a full stop. Side A this time is having 3 players, but still Team FS Esports is committing to side B, and they have realized that there is one player coming in. Trailblazer will be sent. Not much of an intel as of now. Sky Smoke sent as well. Flash has proven that Hookah does have the opponents here, and iGod will take the first pick for the team. Let's see 4 versus 4 exactly it is. Is it going to be an immediate entry? And Edge Shot will be able to take second, and also on the elbow he will be sending Edge Shot. He will be sending shock dart to delay the entry towards the site, and Spike is planted. Spike planted. Yes. Well, looks like not really quite an expected beginning for Axe Sports, but I think the retake should be easy for them, and Flick is already getting an aggressive entry over towards iGod. Now that the recon has given away a lot of positions, Flicker is moving down towards elbow. He's looking at the long, a 3v3 situation. As the orbital strike comes in, Kohli takes one player down. Smokey is starting outside the hookah, but little does he know that there's a player pushing. Fluxy will go down. There's an operator coming through the hands of Kazuya in a 1v3. There comes Kohli through the long, pushes Kazuya, takes the kill, and that is FSC Sports picking up another round into the favor. That is 10th round into their hands. Now just 2 steps away towards the match point as well as the slot that is required for the grand finals. Smokia once again taking the lead, being the highest fragger for the team. Kohli just being the exact supportive player required. B2 is also sharing the equal score as of Kohli. So I must appreciate, indeed we must appreciate, there is a perfect kill split coming in from Team FSC Sports. But if you look at Team TGS, bottom 3 team players like Beast and other 2 needs to make sure that they buckle up, or they might lose 2 more rounds, and match point as well as the opportunity to come on the grand finals will be taken down. Flicker will send a flash and go backward with the judge. iGod is giving a good rush, takes down 2 altogether, total of 3 frags, and is it going to be an ace? Is it ace coming in? 4 picks already. What an immediate round, and it was not an ace. Smokia takes the 5th frag for his team. With that, a round into the hands of FSC Sports and score of 11. Yes. That was quite a round and an ace coming in from FSC Sports. Totally unexpected, but Axe Sports, Tanya, they had such a great beginning in the first half. And what happened to them all of a sudden? I really don't know. They are again changing the strategies of split. When they started putting 3 players on site B, I think it was working into their favors. Having 3 players on site A is not working. Still they are continuing to do so. I think that is what is the problem. Sonic using the Nebula here to block the view, and once again it is going to be the commitment towards side B. Kazuya has realized the danger. That is why he's taking the rotation. Hunter Fury being used. I really don't know how far will it block, how many knocks or confirmations will it come in. F-God once again with the judge pushing through the sky smoke. Will he get the 2 frags that he got in the previous round? He is going to get 1. No, showstopper being used. Not with the judge, but with the showstopper. Once again, iGod is doing wonders for his team. Yes, Kazuya, the man of anger, gets himself a double kill. Almost made it to the 3rd one, but unfortunately not really the right time to do it. And there's the last person standing from Axe Sports. That is the Flicker. I don't know if Flicker can go ahead and do the clutch stun. And I don't know if he already got spotted out. His position has been revealed away. But Smokia's HP is very low. He still might have a chance of making this 1v2 clutch happen. He jumps out. He knows where one person is standing, but he ignores him. And Kohli, on the other hand, caught him from the long, takes him down. And that's the match point for FSC Sports. With the exact man-to-man advantage, the Team FSC Sports have come to the score of 12 points, and this is going to be the match point. Alongside match point, it is going to be the slot towards the grand finals. Is it
done from Team TGS X Esports? Are they not coming back? Are they not making sure of that they give one more 200% efforts, because lead is way too much? One mistake and it's all gone. Right now, once again, we can see three players on the side. He committed totally on the hookah. Will it work, Kazuya? Waiting for the players to pop in, and what a right timing of using the Astro Stars as well, Kazuya. Being taken down just by the paint shell, and God is on fire. I got taking second. Hunter's Fury coming in. This is the exact time where the vulnerability will take its place, and will the kill be confirmed? And what a end! Attackers win. That was totally a massive shutdown coming in from FSC Sports, and as we expected, like as I said, it's the semi-finale and the competition was supposed to be bigger, but both of the semi-finales went down in the very short form, like a one-sided domination. And FSC Sports, what were they even doing? I mean, Smokey, he was just all over the map. He was literally all over the map. I don't know, like he had so many sneaky positions. He got so many multiple kills at times, and I was like, where is this guy even coming from? Does he have like a teleporter within himself? Well, we must appreciate whatever Smokia did was very, very good. And coming back towards the race play, showstoppers, paint shells, three picks in a round. I think this was also working very much into their favors. Changing the duelist worked very good. And certainly, we do have the next grand finalist for the day. It is going to be Weird Esports versus FS Esports. But that grand finals is tomorrow. Coming back to today, well, it was a quick, snappy day towards the grand finalist list for both the teams. Weird Esports clean swiping, Nasha of Esports, and FS Esports clean swiping TGSX team with the score 2-0, 2-0 each. This is not what semi final was all about, but these are the players that made it easier for themselves and getting an easier immediate slot for the grand finals. Yes, immediate spot for the grand finals. That means tomorrow we're gonna be witnessing Weird Esports versus FSC Sports. And ladies and gentlemen, if you don't want to miss out the grand finale, then make sure you subscribe to our YouTube channel Asus ROG and follow us on our Facebook Asus ROG, as well as on our Instagram Asus ROG, because you don't want to miss the grand finale tomorrow. These sport teams will be fighting in for the prize pool of 75,000 rupees. And the winning team is going to take away 50k INR, and the runners up are going to take away 25k INR, which is a good amount to win. And now for these two teams, one or the other is going to get some prize pool for sure. They have earned this definite spot for themselves. But coming back for tomorrow, it is going to be a grand one, because two dominating teams battling against each other. I am very sure of Tanvi, it is never going to be a one-sided affair. And talking about the scorecard, who do you think will be the MVP for this particular round? Because Godshot definitely went Definitely overboard. Smokia. Smokia, it has to be. Yes. Smokia, and maybe if there's a chance, I would say I got Smokia and I got both of them played really well. Even I would have personally appreciate the last three rounds for iGod were on fire, and he was an unstoppable power for the team. And this was the exact time that was required, by avoiding any probabilities or any permutations combinations as well, to show a comeback where he made sure of to go as aggressive as possible. And we very well know, if you are raised, you've got the best of the opportunity to just push in and get some picks. And every single time he was able to create that required advantage for the team FS Esports. So certainly I got not throughout the day for sure, but in the end, he really went with the godly play. Yes. Well, I guess I got definitely as the reason why he was named after I God. He considers himself as a god. I God. Well, a very intelligent way, a very smart way to use a pronoun, I would say. But that was a very, very unexpected match for me, because I was expecting Axie Sports to play a little more aggressively, a little more. I thought we might bring it down to a deciders map, especially in the first half of Bind. We saw it's such a close competition, 5 rounds for Axie Sports and 7 for FS Sports. I totally lost hope. I thought that it's easy for them to make a comeback, or maybe an overtime. That's the least we could have gone for. But at the end of the day, FS Sports, they are not really that kind of a team who would give away the opportunities to their opponents.
And the aggression was seen even as an initiator or just maybe as a controller. We could clearly see that Smokia was very sure of to not allow any other opponents to even attempt to deliver was also nullified by Smokia. And I think whether the map of Icebox or the map of Mine, Smokia literally crossed all the boundaries required for his team, turning themselves into the grand final. So ladies and gentlemen, without any delays, let's head towards the map wise scoreboard. Well, we can clearly see Smokia being the initiator and the top fragger for the team with total of 20 kills. Well, as expected, followed by Smokia comes I God with 19 kills, 13 deaths, and 4 assists. Well, both of them had a really close score. It was just a difference of 1 kill. And look at the number of assists that Smokia has given, 7. But look at Kohli. What was he planning to do with the number of assists? 16 assists. Tanya, that's the highest I've ever seen in my entire life. Definitely, man. 16 assists. That's too much that Kohli has delivered for the team. So, certainly, Kohli also gave a very good support, team support. Maybe not turning into a highest fragger, always a controller. Into the map of Icebox, we saw him as a Viper. Now we saw him as a Brim. Every single time, he is giving a lot of assists for the team. But talking about B2, well, B2 outplayed in the map of Icebox, could not continue in the map of Mine, where definitely I God had to turn the table and get the victory, and he turned it every single thing possible. But coming back to the team TGSX, if we look at Sonic, well, Sonic was able to get the early picks quite too early on, total of 4 times where he got 4 first bloods consecutively. So does for Kazuya being the duelist, this is what we expect. But talking about Sonic, he was able to delay the entry various times, use the astral forms as well, and with that astral forms he also nullified Kohli's orbital strike twice in the map of Mine towards the entry towards the Bath area. I think it was a very good play coming in from Smokey, but there was a lesser of team support from Fluxy, maybe as well as Flicker. They could have picked up some extra early kills. Being the initiator, Flicker can be a part to be blamed out for to not getting an early pick for the team. Yeah. Well, that was quite an interesting map or scorecard. I'm just waiting for the player to player that comes Sonic versus Smokia. Sonic has 2 kills more than Smokia, but Smokia, I think, has already been the MVP for the 2 times. Even in the first map, he was the MVP, and coming down even the second. So, total overall match player versus player might differ from the map wise player versus player. So, I'm looking if Smokey is still the MVP, or else is it going to be Sonic? Well, according to the map wise, I am pretty sure that it's going to be Sonic. He has 22 kills. There we go. With 20 kills comes Smokia. But look at the kill death ratio. Smokia still stands on the brighter side compared to Sonic, 2 KDR. And for Sonic, it is 1.47. What a perfect match. Still, it is going to be Smokia taking away a total of 2 picks in every single round. If you look at Sonic, well, has the highest frag, undeniable fact, but he also gave total of 15 deaths, and that was not what was required. So yeah, and we can compare these two players very well. Even after Sonic having better frags compared to what Smokia has, we must say I that Smokia did definitely did wonders for his team. He went overboard in terms of being the controller and getting every single time doing something strange and winning the round, maybe the longer rotation, maybe going for the like, even if you don't give too much of efforts, it was an effortless victory coming in from Smokia in terms of KJ as well as Sky. Yeah, the backstabs, every decision he took, he made sure that it benefits the team in a way or two. He made Hmm. sure that the team wins, not him. He was not at all Yeah. concentrating on the kills. He made sure the round, the mission was accomplished. The diffusing the spike or getting the plan down, clearing out the site or having the map control. Everything was too accurate for him. And with the right mindset, becomes the right player. And I would say, Smokia, well played, my man. And there comes the MVP for this map, that is Sonic. 22 kills, 15 deaths, 5 assists, 1.47 KD. Although Axe lost to FSC Sports, but huge hands up to Sonic, man. He did try his level best.
as a Astra, he did more than what could have he done. And Sonic, definitely, you did wonders for your team. Not this time, but there's always a next time. Sonic is the man who did not win the finalist slot, but definitely I am very sure of he has won hearts of many by this sort of a play from him, with total of 22 kills and almost one and a half frags each round coming in, with also five assists. All that was lagging particularly for team TGSX was Tanvi, that there was no team support that was exactly required was provided to Sonic every single time, getting a pick, trying to get the control over the site, but then neglecting the team support. No team support was every time enrolling, as it is always demanding when you want to even if you have to, leaving it completely abandoned even if you have to. That was a delayed rotation and a little lesser of a team support scene, due to which, after all the MVP efforts coming in from Sonic, not getting the slot for the grand finals. But it's okay. It's just not one tournament. Asus RG is still gonna come up with a lot of tournaments ahead in the future. So you might have an opportunity to participate and maybe win this time. So make sure you are updated with all of the Asus RG Showdown series news. To be updated, you have to go ahead and follow us on Instagram. All the links are in the description: Facebook, YouTube, and Instagram. And for us casters, if you have any feedback to give or if you would like to help us in any way, you can follow Tanya at the rate Tanya Gaming YT, and I guess you can follow me on at the rate Tanvi Jasmine FTW. I hope I said your Instagram username right. Absolutely, it is just correct. Make sure to get updated with the next tournaments as well. But before that, you're going to catch me as well as Tanvi tomorrow at the same time, same place on the same YouTube channel as well as Facebook, because we go live on two different exact segments. Let's hope we meet up soon tomorrow. Take care and have a nice day ahead. And before that, let's discuss overall scoreboard. Yes, of course, the overall scoreboard. Who has hit a century? Well, Smokey was too close to hit a century, but not accurate enough, I would say. 46 kills for Smokia with 18 deaths, 8 assists, and 1.18 KPR. That's the highest compared to both of the teams. And speaking about Beast, he's going to be the MVP from his team: 29 kills, 30 deaths, 9 assists, 0.74 KD. And look at Kohli, 26 assists. 26 kills, 26 assists, and 28 deaths. He is maintaining such a good, such a good numerical value over there, Tanya. And this balance was required to get the team towards the grand finalists, because when Kohli was delivering so much of team support by assisting, by delivering a damage, and we did see Kohli delivering a confirmations of elimination of the opponents with just the molly that he used. So I think for the team that was Yes. required, and we could not expect any further more from Kohli. Being the controller, getting 26 frags for within 2 matches, it was just enough. Previously as well, we did see the MVP from the previous rounds. That was the first semi-finals. The highest fragger was total of 46. So nobody today crosses the 50 marker. Nobody today crosses the half century. 4 kills still remain taken down. Yes. Well, I guess the overall standing definitely speaks that Smokey has been one hell of a unique player. And speaking about the rest of the players from his team, everybody put out their best: 33 from B2, 31 from iGod. But as he was playing the duelist role, he just sitting down there with 31 kills. On the other hand, Smokey initiators and sentinels, he still managed to bring the most of he could. I mean, initiator and sentinels, now that's very unique, Tanya. Absolutely. Today, the day has been a little different to what it usually does. It was all about initiators, rather duelist going ahead and being the top fragger. What a day.
A lot of roller coaster scene, and every single time sentinels and controllers made the day, paved their way for themselves, turning it into the day favoring sentinels more compared to what the duelist does. Every single time it was sentinels trying to draw all the attention, and they were successfully able to. So now we can clearly see it is not always about duelists, it is always about the combination of the best of the plays coming in. Yes, that is definitely true. So before we jump to tomorrow, that is the grand finale of Asus ROG Showdown series, which will tell us who's going to be walking away with 50,000 rupees and who's going to be walking away as the runner-ups with 25,000 rupees. We have to wait till tomorrow. And tomorrow, there's time, guys. All the teams and players are going to sit down today. They're going to go down to the drawing board. They have to look at each and every mistake they made, each and every round that they let go, especially in semi-finale. Well, it should. I wouldn't be surprised if tomorrow's match goes on a full deciders map and an overtime, because both of the teams gave a one-sided performance in the semi-finales today, which means both of the teams are strong enough to face off each other in a very competitive way. I think both of them have a very good mindset, the winner's mindset, I would say. So yeah, all the best to both of the teams. FS Esports, I'm really looking forward for them tomorrow. And before we shut down the show for the today, I want to give a huge shout out to the sponsors, Intel, Asus ROG, and for the team and the viewers. Thank you, viewers, for joining by the stream. And make sure you also drop and follow us on our social and support your favorite team every day. Of course, that is the main part over here. And if you're a huge fan of Asus or Asus motherboards and everything, you can go ahead and check our store. The link is in description. You might find the perfect peripheral to become the right gamer or maybe a professional gamer as well. And there is finals tomorrow, so don't go anywhere. Me and Tanya are gonna sign off for today, but you do have highlights to watch. So if you miss the first semifinale or the second semifinale, don't worry, we got you covered. We have the highlights coming up after this. So me and Tanya are gonna take leave from you guys for today, and we'll meet you right tomorrow. Good night, guys. Got him. Let's go.
कॉली यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सोनिक की ओर से काफी अच्छा पिस्टल कर ही जाएंगे। 2 किल्स ऑलरेडी सिक्योर हो चुके हैं। इन वेरी सेकंड राउंड वी आर गोइंग टू गेट टू सी अ वेरी गुड प्ले ऑन फ्लक्सी का स्वॉर्म ग्रेनेड काफी अच्छी तरीके से यूज किया गया। राउंड करवाकर अच्छे में स्टॉप द ओपोनेंट्स फ्रॉम जॉइनिंग इन द पार्टी एट बी साइड। 9 HP by the way. Blind spray through the walls might not have effect. यहाँ पर काफी अच्छी प्लेसमेंट थी स्वॉर्म ग्रेनेड की, जिसकी वजह से प्लांट planted. नहीं लेने दिया गया, बट विदाउट एनी डिले वाइपर मेड श्योर कि वो प्लांट कर दे। कॉली को भी टेक डाउन कर दिया गया है। Is already getting an with the op is going crazy. He got it. They can coordinate with one and the other. Unfortunately, Sonic is tagged down and in smoke. Using his nanosum grenades at his best, gets another kill. B2 gets one. टर्न फॉर नाउ एक पुश देखने को मिल रहा है साइड बी की ओर से, जहां पर सिर्फ एक ही प्लेयर होने वाले हैं, व्हिच इज गोइंग टू बी स्मोकिया। Spike भी already plant हो चुका है almost, and look at Smokia being so sneaky, camping spree. He got a 4K. All he needs is just one more kill to get the ace. हो चुकी है साइड ए में, लेकिन अभी तक कोई भी पिक नहीं निकाला गया है। अच्छा टास्क एंड पिक निकालने के साथ खुद एलिमिनेट हो चुके हैं इंफिलेशन, लेकिन सोनिक को कॉली दैट इज डाउन कर देंगे, टर्निंग इट टू द एडवांटेज ऑफ प्लेयर्स। अब अकेले प्लेयर क्या करेंगे वो देखने वाली बात होगी। परफॉर्मेंस एफएससी स्पोर्ट्स की ओर से, एंड यहाँ पर हम देख रहे थे ट्यूब एंट्री लेने की कोशिश की गई थी, लेकिन परफॉर्म किया जा रहा है टुवर्ड्स साइड बी। Look at Smokia playing at such close note. He gets himself a kill, a double, and almost a triple was coming on. It's been picked up by Kazuya, and looks like they're gonna be making their way towards the Spike now has sufficiently wall to avoid any backstab, but it's going to be an immediate front action coming in, and Fluxery has got his crosses straight on Sage, and there you go. कोशिश करेंगे निकालने की without picking any kills. This round goes into the hands of it. There's only 4 players left. It's a man advantage for FSC Sports either way. Ooh, things have stuck. Turning it to a 3 versus 3 affair. It is the entry of Smokia here, and Smokia will be able to take one more. Zip lines are being used, and Igor has got a very good positioning. He might take the first pick very easily, and immediately let's see, will it evacuate the opponents or will lockdown be destroyed? Unfortunately, I don't think it is Of the player, he knows exactly where Fluxy is standing, and Fluxy might be getting that kill, and he does. to change the site where already one player from the defender side has reached here, and Headshot is trying to. Oh my God! What a perfection! They head towards the site A. Let's see if is he going to get the entry, and yes, Sonic will take down the Headshot. And The dream come true. I have a feeling, yes, it will. And there you go. the Viper as a controller, इस बार हम उन्हें as a Astra देख सकते हैं। ड्रोन को भेजा गया है, रील होगा कुछ भी। Unfortunately, not a good revelation. एक नेब्यूला के पैकेज की वजह से आज Sonic हो गया है। B2 अपने आप को हील करेंगे, and I think this might be the first one going into the favors of to see, and यहाँ पर cage trigger right on time as well. Delay करने में काम आ रहा है। किया गया है B2 ने resurrection देकर और एक पिक भी निकाला है। Turning it to 3 versus 1 with the utilities है, कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। फ्लैश भेजा गया, एंड द प्लेयर इज फ्लैश। ऑन द कॉन्ट्ररी यहाँ पर हंटर्स फ्यूरी का यूज किया जा रहा है। हंटर्स फ्यूरी के अफेयर एक अच्छा प्ले देखने के लिए मिल रहा है। B2 यहाँ पर एंट्री ले लेंगे। एंट्री क्या B2 यहाँ पर कैंप करके होल्ड करके प्रॉपर डिले करवा सकेंगे। We did not end up into a good wonders. B2 फिर से एक बार लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर द टीम, एंड आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू बी इन। फिर से एक बार एक पिक लेकर शायद वैंडल को सेव करने की कोशिश की जाएगी। 2 प्लेयर्स यहाँ पर जा चुके हैं। स्मोकिया अपने आप को होल्ड कर रहे हैं। वेल, दिस इज हेल्प ऑफ अ प्ले सीन एंड ब्यूटीफुल स्मोकिया। ट्रिगर्ड डिसिप्लिन देखने को मिला स्मोकिया की ओर से, एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यू वुड वांट टू इक्वलाइज द स्कोर टू 4 and 4. सोनिक ने यहाँ पर एक नहीं 2 पिक्स ले लिए। शॉट हैज बीन टेकन डाउन, सो इज स्मोकिया टर्न इट 1v2 And Flicker, Sky versus Sky, and there comes the resurrection. Flicker goes down with the flash, and not the flash. There you go. Topper landed in the wrong place. Kazuya attacked down to very low HP, standing very close. Get the exact intel required and waste out कर दिया गया है. Let's see what comes next. Well, right now, Headshot is going to be the man. A 1v1 right now, and there you go. Trailblazer को destroy कर दिया Kazuya ने. Immediate bath rush नजर आ रहा है जो अभी तक step नहीं लिया गया. Ultimately लिया जा रहा है. He is able to take down one, but then situation, but definitely does not look like it's in the favor of our Aches right now.
Kohli gets weight. Entering through the bats. क्या यहाँ पर एक easier entry मिलेगा? And now committing towards A side is definitely undeniable. लेकिन Sonic has got it. What's next? Well, go back foot. आपके पास drop आ चुका है. And smoke किया. Yeah. I mean, कभी कभार players अपने दिमाग से बाहर हो जाते हैं, and I guess that's what happened. And look at Kazuya playing so aggressively. Gets double. It's a 3v2 situation right now. Well, Sova is quite tagged down to very low HP headshot, and Smokia are gonna put both of them A lot of danger, and paint shell being sent by iGod. Will he be able to take down? Oh, iGod gets one, Kohli gets one. It's all in the hands of course Sova. Oh, iGod. Is he going to get and a push from Sonic? Now this is a little risky. Yes. Looks like it's going. There is a chance that FSC Sports can do this round. If there you play. As well. Flash has proven that Hookah does have the opponents here, and I got the pick for the team. Let's see 4 versus 4 exactly. It is it going to be an immediate entry, and to come on the grand finals will be taken down. Flicker will send a flash and go back foot with the judge. I got it giving a good rush. Takes down 2 altogether. Total of 3 frags, and is it going to be an ace? Is it ace coming in? 4 picks already. What an immediate round, and will he get the 2 frags that he got in the previous round? He is going to get one. No showstopper being used. Not with the judge, but with the showstopper. Once again, iGod is doing wonders for his team.